हाय गाइस, एक सेकंड। हेलो एवरीवन, कैसे हो? देखते हैं आज इम्प्रॉम्प्टू स्ट्रीम का क्या नतीजा होता है और कितने लोग आते हैं। कैसे हो तुम लोग? आई कैन सी कि स्टडी सिंह इज हियर, यूए इज हियर। आई होप यू कैन सी मी। हाय। आई एम स्टिल वेटिंग। यहाँ पे चैट लोड नहीं हुआ है, सो आई कैन नॉट। एक मिनट, गर्मी हो रही है, फैन ऑन करते हैं। I know that I should have scheduled the stream earlier and all, but मुझे चांस नहीं मिला क्योंकि मैं इतनी बिजी थी। एज यू ऑल नो कि फेयरवेल पार्टीज चल रही। बाय द वे, आई कलर्ड माय हेयर, सो इट्स रेडिश लाइक ऑन फायर ऑफ सॉर्ट्स। वो भी मैं, हाय सीए, हाउ आर यू? हाँ, नाउ आई कैन सी यू आर लाइव इन आवर हार्ट्स। हाउ स्वीट, थैंक यू। सो वीकेंड भी बहुत बिजी रहा, and we had a lot of farewell parties that we are attending, and finally we have sort of decided to move like the first week of August, and hopefully it all goes well at the moment. And we had this like really nice party at on क्या था, सैटरडे को बहुत अच्छी में हमारे काफी फ्रेंड्स लोग ने साथ में मिलके, एक तो मैंने किया था फेयरवेल पार्टी, और फिर अभी हमारे फ्रेंड्स ने सब लोगों ने मिलके यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड का रेस्टोरेंट है गणेशा करके, तो वहां पे किया था। इट वाज सो ब्यूटीफुल। देयर वाज अ डीजे और सब लोग इतने स्वीट थे, इतना खाना वाज अमेजिंग, एंड ऑफ कोर्स ऑल क्लोज फ्रेंड्स। सो बहुत मजा किया, बहुत डांस किया। I think I slept at, we came back home I think 2:33, बट मुझे ना नींद नहीं आती अगर से मैं इतना ज्यादा ओवर द टॉप पार्टी करके आऊँ, तो मुझे उस रात नींद ही नहीं आ रही थी। आई थिंक आई स्लेप्ट एट अराउंड 5 or something. Yeah. Hi Divyanshu. No, I'm not moving back to India. I'm moving to I've already been away from India. I think it's been almost 30 years. Yeah, a little over 30 years. So I'm not moving to India. I'm moving to this, क्या बोलते हैं, एक मिनट, let me pin my chat before I, okay. So, and oh, I didn't set up any security features. Wait, screen बंद करो। क्या, start video, whiteboard switch off. So yeah, so I'm moving to Dubai. CA, isn't that who asked me the question? Hi, Divyanshu. Hi, Yuvraj. Hi, Manjeet. No, hi, Gaurav. Hello, Queen. Hi, Shubhankar. How are you? So I think I replied to your message today. I think I could be wrong because I'm like so busy. I try to remember names, but कभी-कभी नहीं, वो कोई और था. Sorry, तुम्हारा मैं YouTube की बात कर रही हूँ, not Insta. So yeah, so we had this farewell and it was very interesting. By the way, तुम लोग, I'm waiting. कैसा लगा hair color? So it's something really different. Normally I do either brown or पूरा ऐसे reddish highlights इतने नहीं कराए हैं. I don't know, मुझे तो अच्छा लगा, पर पता नहीं तुम लोगों को कैसे लगेगा. But I hope you like it. So yeah, that was my weekend. And hi Manjeet, how are you? There are long time. I've been like super. See, long time कैसे? Last podcast कब हुआ था? एक हफ्ता हुआ, right? और एक podcast है on Sunday को, way for fitness. So please, जिन को fitness queries है, ready रखो. फिर बोलना मत मैम ये आंसर नहीं हुआ, वो आंसर नहीं हुआ. And I hope he will be able to answer your questions. Yes, Dubai is much closer, no doubt. But it's also one of the reasons that we chose, because my daughter goes to Canada, right, for college. So it's literally halfway. Because Dubai to Jakarta is almost like 8 to 9 hours flight. Plus count that 2 hours जब तुम airport पे जाते हो, 2 hours after that. So it's like almost like 12 hours. तो तुम्हारे कहीं नहीं गए वहाँ जाते यहाँ आते आते. So we thought it will be one flight to Toronto for my daughter. So that was one of the main reasons. Because वो stress खाया जाता है कि कभी तुम्हारा बच्चा तुम्हें
you want to go to meet them just, and then you have to like worry so much, flight connections, the distance and all of it. So yeah, so we decided to do that. And oh yeah, I watched Thor yesterday, and I watched the Minions. Please do not watch the Minions. And I do not understand that stupid TikTok trend. मैंने पूरी मूवी में ढूंढने की कोशिश की कि how did it even start? कि why would you wear your suit and all and go for this movie? Didn't even make sense. Like it was so fucking stupid. तो movie dumb thing. Sorry, but मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. Thor was better than Doctor Strange. Sorry, I'm sweating a lot. And Thor was better than Doctor Strange. That's all I can say. Unless you people have not watched it, so I don't want to like diss it too much. And yeah, so it was fine. Okay. So Kamu Tarliya Chandik. Thank you. So Gaurav ne likha hai, he translated the English thing into Hindi. No, I'm not. Actually, I'm little tired. Why? I'll tell you all. We have been, but I went to Bali. I fell sick there. Then I did that podcast. That whole week we were still entertaining, and we were every day we are sleeping at around 3-4 o'clock in the morning. Even yesterday I came back home, I think 2 something. Oh, I can't tell you. और फिर सुबह में उठ के काम करो. और आज मैंने gym start किया, so that's one of the reasons कि I am like after a month's break I've gone back to gymming. So आज जब ट्रेनर करा रहा था, लिटरली आफ्टर, जब तुमको आदत है, एक टाइम पे मैं इतनी स्ट्रांग थी, आई मीन इतनी मतलब नॉट लाइक स्ट्रांग लाइक अदर पीपल, बट फॉर माई थिंग आई एम प्रीटी स्ट्रांग. आई फेल्ट स्ट्रांग आफ्टर कंटिन्यूअस ये. एंड देन टुडे व्हेन आई वेंट, आई कुड बेयरली इवन पिक अप 2 kilos, लाइक वो जो डंबल्स होते हैं. like ये बहुत हैवी है. तो ही इज लाइक, ओ माय गॉड, आई हैड made you so fit, and you're like, sorry, मुझे थोड़ा स्लीव ऊपर करना पड़ेगा, मुझे गर्मी हो रही है. So tired से ज्यादा मुझे गर्मी हो रही है, क्योंकि my son forgot to switch on the AC and I worn a bloody long. मुझे लगा, जनरली मुझे ठंडी लगती है क्योंकि AC ज्यादा होता है, तो मैंने आज डिसाइड किया चलो लॉन्ग स्लीव्स पहन रहे, और AC ऑन नहीं किया था. That's why I'm perspiring so much. प्लस जिस दिन तुमने जिम किया होता है, वैसे भी तुम्हारा बाद में बॉडी थोड़ा ज्यादा स्वेट करता है, and you're still on that mode. So I mean, give me some days, hopefully I'll become little more fit. I've been like क्या no simping, but every time we see you look more and more beautiful, ma'am. Nice hair color. Thank you Manjeet, that's so sweet. नहीं, I don't believe in all this simping shit, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हो गया कि कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकता, हर चीज नेगेटिवली लेते. करो कॉम्प्लीमेंट करो. और and I think कि better than dissing someone and saying bad things, it's so nice to say good things about people. I mean, there's already so much shit going around on the net and in real world, right? So let's all be nice to each other. Red or burgundy? It's red. It looks purplish here, but it was actually a red highlight, but the base of this color was burgundy. Like, so what my entire hair color they changed. I didn't want brown पे red. वो बहुत ज्यादा लाइक डर्टी लुक आता है, लाइक मिट्टी वाला फीलिंग आ रही थी. तो हमने पूरा बेसिक चेंज कर दिया, और ताकि वो रेड हाइलाइट्स नोटिसेबल हो. सो ऑल माय फ्रेंड्स रियली लाइक्ड इट, एंड आई डिड इट फॉर द पार्टी ऑन द वीकेंड. सो एवरीबडी वाज लाइक वाओ. सो दैट वाज गुड, एंड आई वोर समथिंग वेरी ग्लैम व्हिच आई जनरली डू. सो अच्छा, तुमको एक पार्टी का बताती हूँ. तो फ्राइडे को भी एक पार्टी थी, मेरी नहीं थी, किसी की 60th थी. सो किसी ने इनवाइट किया था, तो वो ड्रेस कोड था डेनिम. अभी आज मैंने डेनिम पहना है, पर मैं जनरली डेनिम नहीं पहनती, मैं जीन्स वीन्स पहनना. मैं बाली में हम लोग थे तब से जीन्स पहनना छोड़ दिया, बहुत गर्मी होती थी, तो वहां पे ड्रेसेस ही होते थे. अब मैं सोचूं कि लाइक यार जीन्स कौन पहनता है यार पार्टी में, मुझे नहीं पहनना था. तो क्योंकि तैयार होने का चांस मिलता है, मैं क्यों जीन्स पहनूं, राइट? तो मुझे फिर याद है, अरे मैंने तो एक आउटफिट खरीदी थी जो डेनिम से बनाई गई है, but it's like this long skirt with a top, and it's got a drape and all that. Look, it's like a skirt sari of sorts. So वो मैं पहन के गई, ठीक है. तो people are like, पहले तो डेनिम का है, और दूसरा कैजुअल था थीम. मतलब ये मेरा कैजुअल है. तो सो नेक्स्ट दिन जब मैं एक्चुअली बाल कलर चेंज करके गई, और I was wearing a party outfit, and people were like saying,
कि we don't expect any less from you. So मेरा casual is always overdressed, I think. But I prefer being overdressed than underdressed, to be very honest. और तुम लोगों ने देखा होगा कि I'm always put together. I think I take it from my father, and I very proudly own it. I don't feel like कि क्यों करूं क्यों नहीं करूं. उल्टा I think I've inspired a lot of people in my group also to kind of take care of सिर्फ अपना insides, personality और अपना जो तुम खाते हो पीते हो हेल्थ उसका देख सकते हो तो बाहर का क्यों नहीं कर सकते. So overall development is very important. Hi Nisha, good evening, good to see you here. Just need that blue bracelet though. I swear. हाँ सलू का है. See, अब I might not like some of the things that he does, but I do like some of the t-shirts and shirts that they have. Why? Because I actually I like that part because I've been talking about अभी तो तुम लोग के साथ talking about it, but generally I always want to be. I have to keep reminding people that we are all human beings. We are not हमेशा caste or religion और ये सब चीजों में ना पड़ो. So I at that time I had bought it. ये तो काफी साल पहले का शर्ट है और छोड़ अभी तक फिट हो रहा है तो अच्छी बात है. पूरी तरह से फिट नहीं हो रहा है. Let me just tell you. तो ये I think I must have bought it at least 5 years back. Why? Because 3 साल तो कोरोना हो गया, इंडिया गई नहीं हूँ. 2022 नहीं 2019 के एंड में गई थी और फिर 2020 में किसी की बेटी की शादी थी तो मैं बॉम्बे नहीं गई थी, दिल्ली और जैसलमेर गए थे. तो आई डिडंट शॉप एट दैट टाइम. आई नो. सो ये बहुत अभी मैं सारे कबर्ड्स क्लीन कर रही थी तो मुझे नजर आया और मैंने इतनी सारी बीइंग ह्यूमन शर्ट्स खरीदी थी, टी शर्ट्स एंड शर्ट्स. मुझे इतनी अच्छी लगी थी डिजाइन. फिर अभी थोड़े सालों के बाद वो होता है ना कि व्हाट द फक वर यू थिंकिंग वाला, जब तुम क्लोजेट क्लीन करते हो कि अरे ये क्यों खरीदा, ये कैसे सूट कर सकता है तुम्हें, और ये क्या ये या तो आउट ऑफ फैशन लग रहा है या तो तुम्हें फिट नहीं हो रहा. सो आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज ऑफ decluttering my wardrobe and I found this. Then I said okay, nahi, I like this, I'm not giving it to anybody. So yeah, and as much as I'm sometimes I find him very arrogant and I think बहुत ज्यादा बुली करता है कभी कभी. अच्छा इंसान भी है वही ना, किसी किसी में वो सुना है कि वो चैरिटी वैरिटी भी करते हैं. सो दैट्स अ गुड थिंग. बट या आई हर्ड इवन आई मीन सच कितना है अपने को भी नहीं मालूम, तो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट दैट. ठीक है. एंड अच्छा मैंने कुछ मिस कर दिया, एक मिनट पहले ऊपर जाने दो. आई हैव नॉट वॉच्ड अ सिंगल मार्वल मूवी. रियली यार, मुझे तो उन लोग पोस्ट क्रेडिट पे भी बिठा के रखते हैं बच्चे. कल 2 पोस्ट क्रेडिट थे. ये क्या मुसीबत है. और ऐसा भी नहीं करके कुछ, मुझे एक ही बार एक पोस्ट क्रेडिट अच्छा लगा था. मुझे मूवी याद नहीं, मेरे बेटे को पूछना पड़ेगा, जिसमें आई थिंक वो कौन है, विन डीजल जैसा दिखता है पर विन डीजल नहीं, जो टकला है, उसका नाम क्या है. और फिर वो लास्ट का एक सीन होता है जिसमें पंचिंग बैग को पंच करता रहता है. कौन सी मूवी थी वो. बट एनीवे वो वाला मुझे सबसे ज्यादा पोस्ट क्रेडिट सीन अच्छा लगा. अभी तक मुझे कोई पोस्ट क्रेडिट सीन इतना अच्छा नहीं लगा. हुडू दबंग बैकग्राउंड या भाई शुड बी पुश ओनली ना. भाई क्यों बुलाते पता नहीं. क्या हाल सौरभ. हाय, आई एम वेल, हाउ आर यू. यार वो केस तो मुझे समझ में ही नहीं आया यार, क्या हो रहा. मैम मैंने आपको कभी एक आउटफिट रिपीट करते हुए नहीं देखा. मेरे 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 फ्रेंड्स भी वही बोलते हैं, बट घर वाले कपड़े जो होते हैं ना वो मैं रिपीट करती हूँ. ठीक है. मे बी नॉट फॉर्मल वाले आउटफिट्स लाइक जो पार्टीज, स्पेशली पार्टी आउटफिट्स, वो मैं 2 साल के बाद रिपीट करती हूँ. सो आई हैव दिस थिंग राइट वेयर आई हैव माय क्लोजेट, देन आई हैव सम बैग्स एज इन जो सूटकेस या ब्रीफ केस नहीं, सूटकेस जो बड़े वाले होते हैं, तो जो मैं पहन लेती हूँ ना मैं उसमें डालती हूँ. फिर वो रिसाइकल होता है. या तो अगर से बाय द टाइम में उसका टर्न फिर से आता है 2 साल में, तो मैं रियलाइज करती हूँ ये मैंने क्यों खरीदा वाला, वो वाली फीलिंग आती है, तो मैं दे देती हूँ. और जनरली मेरे कपड़े बहुत महंगे होते हैं, तो थैंकफुली कुछ अभी मेरी बेटी का टेस्ट थोड़ा बेटर हो गया है कपड़ों में. सो वो बहुत बार बोलती है आई वांट दिस, आई वांट दैट. आई सेड I've just worn it once or I've never worn it, so then I am like no you're not taking it. So हम लोग उस पे अभी तो it's very interesting. एक टाइम जब तुम्हारा बच्चा छोटा होता है तुम कुछ शेयर नहीं करते, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं ना literally we are fighting over bags. I'm like where the fuck is this color of my bag, and I'm like मेरे डैड का
ये मेरे में इतना है, ये पर्सनालिटी का थिंग. My shoes have to match my bag and all of that, right? My earrings have to match. आज so many rings भी नहीं पहने. So this is like this thing which I have taken from my dad. So she is also taken after me now, like as if one person in the family was not enough, who was like so finicky. Now we have one more person. So I don't give branded bags to my daughter. She is allowed to use my other bags because I don't want them to get so spoiled कि सब कुछ तुमको easily मिलता है और फिर घुमा देंगे या something. So value of money सिखाना जरूरी है. So that's what, yeah, generally I don't repeat my outfits. हाँ, YouTube वाले फिर भी मैं कर लूंगी, क्योंकि क्या पहनोगे यार YouTube पे, थोड़ी तुम पार्टी आउट ऐसा नहीं करके तुम एक बार आते हो, इतने बार आते हो तो कैसे नहीं रिपीट होगा, कभी ना कभी तो होगा. और फिर तुम लोग उस दिन मुझे बता देना जैसे रिपीट हुआ है. ठीक है. ओके. ओके, लेट्स सी व्हाट्स. हाँ, क्या विन डीजल लुक्स वेरी सिमिलर. नहीं यार, हाँ, विन डीजल इज, या इज ओके. आई बिलीव ऑल सेलिब्रिटीज आर soulless beings. I don't agree with you. I think that's a very extreme mindset. No, I don't agree with you. Acha, what's the funniest DM that I have got? I won't funniest, so after I won't say it is funny. You can say there are irritating DMs and there are like super like especially जो अभी recently मुझे डालना था. मुझे तुम लोगों से पूछना है, is it like rude if I post certain things and I'm like being very अभी मैं तुम्हें बताती हूँ what I'm talking about. So there's this person who asked me for Abhishek Kar's number, right? And this is how it's actually like this. I can even post it. I was thinking, should I? Because I think I need to teach etiquette to people. So this is how he writes to me. Okay, ma'am, do you have Abhishek's number? Abhishek sir's number, if I'm not mistaken. Yeah. And I lost my temper. I'm like, पहले तो मैंने लिखा wow, post भी करूँगी. Wow. I said, no hi, no hello. How are you doing, ma'am? Nothing. Okay. And I said, तुमको क्या लगता है मुझे किसी ने नंबर ट्रस्ट करके दिया है, मैं दे दूंगी तुम लोगों को, तुम लोगों ने मांगा तो मैं दे दूंगी. एक तो जो शेयर करता है वो गलत है, जो मांगता है वो भी गलत है, ऊपर से नो एटिकेट, नो प्लीज, नो थैंक यू. आई वाज लिविड. सो आई वोंट, आई मीन, yeah, you might guys might find it funny, but I don't find it funny at all. So I find it very annoying. And I feel ki where is the etiquette of today's generation? I'm not saying everybody is like that. I'm just saying कि बहुत आते हैं ऐसे. तो कभी श्वेताब का नंबर मांगते हैं, कभी. हाँ, फनी तो ये भी होता है कि श्वेताब को भेजा वाला डीएम डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि हेलो मैम या समथिंग, हेलो भैया, ओके भैया प्लीज रिप्लाई. I'm like, then I gave it back also. I said, I don't mind helping you. I said, but don't use me just because you not got a message. इतना है तो उसको भेजो, वेट करते रहो. ठीक है, मुझे कोई ऐसा नहीं है करके मेरे को उसको क्यों पूछा, मुझे नहीं पूछा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑफ कोर्स वो तुमको अलग तरह से मदद करेगा, मेरा स्टाइल अलग है, बट एटलीस्ट एटिकेट तो दिखाओ यार. कट पेस्ट कर रहे हो उतना तो निकाल दो, और हेलो मैम बोल दो, थैंक यू बोलो, प्लीज बोलो. फिर उनको बोलना पड़ता है. आई सेड, आई विल स्टिल हेल्प यू. I will not say कि I'm annoyed to a limit कि मैं reply नहीं करूँगी. तो it's funny in a way that I don't know why people don't think this much कि how can you just write to some stranger, okay, ask them to help you, but you don't have etiquette to say please, thank you, hello ma'am, hello Rachna ji. Even the so-called the people who have come on my podcast treat me with so much respect, you know. And तुम बच्चे हो, तुम लोग हमसे इतने यंग हो, तुम लोग को बेसिक एटिकेट कैसे नहीं आती है. So that is very sad. I find that like really. So those are some. हाँ, किसी ने उस दिन लिखा था can I be your friend, टक डिलीट. फिर किसी ने उस दिन लिखा, क्या लिखा, कुछ तो भी लिखा था. ओ हाँ 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 हाँ. So somebody was like besotted with me, right? So it was cute. First it started with like nice compliments, which was like, okay, thank you so much, blah blah. So
Then the person said, what if someone wants to marry you? What would the qualities that you would be looking for if you want to marry? So I'm like, excuse me, I'm married 30 years. Are you asking for me? He says, yeah, you and otherwise also. So I said, I'm married for 30 years. I have to. नहीं, आप तो ऐसे नहीं लगते. Proof दिखाओ, बच्चों के photos दिखाओ. And I said, मैंने बोला, sorry, I don't chat with anybody. आपको देखना है vlog जाके देख लो. मेरी family है. That's it. So these are some like really funny ones, you know. So yeah. एक सेकंड ना. अच्छा तो क्या गौरव ने क्या लिखा था? मैं तो 3 शर्ट ही पूरे वीक रिपीट कर. हाँ, some people like I have friends who don't buy any, especially men, they like to not use their brain too much, and they were like, even I think who does this, Bill Gates, who does that कि same t-shirt पहनते रहते. तो yeah. So श्वेता भाई से याद आया, वेयर इज आपके संपर्क में है क्या? आप वापस करेंगे आफ्टर ही इज नॉट इन? क्या आप वापसी करेंगे? मैं क्या लिखा है यार? श्वेता भाई से याद आया, वेयर इज ही आपके संपर्क में है क्या? कब आपने? आई विल नॉट टॉक अबाउट श्वेता. हे ऑल, आई नीड योर हेल्प. यस यू टेल मी इन व्हाट वे वुड यू लाइक हेल्प. डोंट टॉक अबाउट कंट्रोवर्सी. मैम मुझे मार्वल का विलन का रोल मिला है. अच्छा सुन, वेरी दैट्स वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस. मार्क जकरबर्ग. ओके ओके, हाँ राइट. आई फॉरगॉट हु इट वाज. एनी आईआईटी चांसेस? अरे यार छोड़ो यार, लेट्स नॉट टॉक अबाउट कंट्रोवर्शियल थिंग्स. किसने किसको मारा? मैम आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 11,200 in my engineering exam. Congratulations. I'm guessing that's a good thing, right? 11,000 in such a huge population. So defying world, congratulations. I'm proud of you. And हाँ, तो यार श्वेता, ये प्रखर, संदीप महेश्वरी, ये सब के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है? हमको कंट्रोवर्सी से जितना दूर रहेंगे हम लोग जिंदगी में खुश रहेंगे. ये सब will blow over. Focus on your life, focus on whatever is going on. So yeah, so who asked me this? Manjit asked me, right, about my DMs. So by the way, should I post such DMs? Because I'm not posting the person's name, okay? I'm just posting the snapshot so that people learn from all this. RRR कब की देखी यार? I liked RRR, so I didn't like कौन थी वो यश वाली कौन सी थी? KGF. I didn't like KGF 1. I didn't like KGF 2. I don't know. I liked Pushpa and I liked RRR. I just felt KGF was like, well, first KGF, it was annoying as hell. Sara time they were switching between languages and kabhi tum subtitles pad rahe ho, kabhi tum. So yeah, RRR was really Vikram nahi dekhi. Vikram koi movie hai? I don't remember. Vikram nahi, I don't know. मैं वो देख रही हूँ आजकल, पता नहीं कौन सी नेटफ्लिक्स पे सीरीज चल रही है, बट इट इज रिटन हाई थियोरेटिकल हब. Any tips for not feeling motivated to work out or something? See, sometime Vibhor Tayal, this answer is for you, okay? Okay, so this is an answer for you. Now, it is very, very, very normal to not feel like gymming every single day. Instead, it is not good also because your body has to rest. You have to feel like तुम्हारे muscles को enough relaxation मिलना चाहिए. But having said that, अभी, by the way, there was a new research. Let's see if I can post it right now. I want you all to read this. So the new research says कि अगर से आपको वक्त ना मिले पूरा हफ्ता एक्सरसाइज करने के लिए, I'm looking for the article, just give me 1 minute. Yeah, so I'm just posting it. अभी इधर YouTube पे डालती हूँ तो easier पड़ेगा. So the article basically said this, कि the ones who do not exercise full week, you can अभी इसको एंटर करने ला, most probably कोई भला ही होगा कुछ, ठीक है? तो let me tell you कि अगर से आप, एक मिनट मुझे वॉल्यूम कम करने दो. Okay, I'm posting this link. What this study said, that if you are not getting your, पूरा link नहीं post होता, because it's saying only -58, मतलब उतना numbers नहीं होते.
So I cannot. Maybe afterwards I'll post this link. So I'll tell you the general this thing. I'll summarize for you. What it said was that you have to, if you do not exercise in the entire week, suppose you can still in that weekend, but then you have to make up उतना exercise minimum तो करना ही होता है. तो जब आपको मूड नहीं करता, मेरा बेस्ट तरीका यही है. There are many times I don't feel like exercising. Okay, so what I do is I just get ready. I don't talk too much. I just take out the gym के कपड़े निकाले, socks पहन लिया, bottle बोल दिया तैयार करने को, और that's it. I just head out. That is the only way. जिस दिन मन नहीं कर रहा, just वो 5 मिनट में तैयार होके निकल जाओ. एक बार जिम जाने के बाद ना, जब तुम म्यूजिक सुनते हो और तुम एक्सरसाइज करते हो, सब कुछ ठीक हो जाता है. एंड अनदर वे इज वॉट एवर यू योर आइडियल पॉइंट ऑफ लूजिंग वेट है, या तुमको कोई एक पर्टिकुलर कपड़े में फिट आना है, वो तुम्हारे सामने रखो, या यू आइडियलाइज सम पर्टिकुलर जिम गाय, उसका अपने फोन पे तुम स्क्रीन सेवर रख सकते हो. Those are the things that you can do to basically get into shape. And it's okay if you don't do once in a while, but remember, एक बार छूट जाता है ना तो बहुत मुश्किल होता है to come back to it. ठीक है? So make sure कि आप वो करना. No, I don't like dark comedy. Instead, that day something my son also wrote and I was quite upset because I'm not very अगर से किसी का बहुत ज्यादा इंसल्ट हो, किसी को बुरा भला कहो, या डार्क कॉमेडी के आड़ में तुम किसी की इंसल्ट कर रहे हो, या लाइक कभी कभी ऑर्फन्स पे आता है जोक, एंड आई डोंट लाइक इट बिकॉज आई थिंक आई एम अ बिट टू सेंसिटिव फॉर दैट. सो हर चीज की लिमिट होनी चाहिए, जोक्स की भी. सो नो, आई डोंट लाइक इट. सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. Where was it? एक तो कहाँ गया यार? हाँ, Vibhur, I hope you got the answer. Sometimes you don't go, that's completely okay, but it's so important to exercise and stay fit. It's good for your mental health besides your physical health. Should I take a second drop? I didn't get a desired rank in JEE after already taking a drop. Wow. So then after taking a drop and you didn't cut it, are you sure the second drop you will get it? If you think that you can and that's what you want to do, try it. Why not? I mean, देखो, many reasons से लोग नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या फाइनेंशियली इतने ड्रॉप्स अफोर्ड कर सकते हैं, और are you being able to be, see, don't fucking think about the world when you take a drop. Don't think कि दुनिया क्या सोचने वाली है आपके बारे में, कि आपको क्या, आप will you be ridiculed or all of that. That shit doesn't matter. Why? Because ये तुमको नहीं संभालने वाले, right? इनका बोलना तो, and you should be strong enough to stay with the decision that you have taken. So leave that part aside. क्या world कहेगी? This is your life, you decide. But having said that, I want you to ask yourself कि क्या तुम ये drop लेने के बाद will you get into it? 1, how many marks less? 2, can you financially afford this one more year? 3, are you really serious about what you're doing? Because many a times I have seen a lot of children fool themselves. JEE, NEET करते हुए, they actually are not cut out for that stream, but pressure from the family, pressure from your own self also, कि नहीं शायद मेरे से. So are you sure you're cut out for that? If you're really sure, you have to sit down and see what did you do wrong that you didn't cut out this time. Is it that you didn't study enough? Is it that you were too lazy? Was it that certain topics were too tough? Do you need additional help or tuitions? Can you afford those coaching classes? So these are the things, and how much more can you study? And let's assume that you take the drop. 1 year here or there, what difference does it make? I mean, it should not. So if you think that आपको लगता है कि मुझे ये सच में करना है, and I think this 1 more year is going to make a world of difference, then do it. No, then only देखो,
तुम करोगे नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि the thing is we have to try out things in our life and then only we find out whether it is we are really cut out for something or not. So give it a shot. There's so many people who do it. Or if you're not part of our Discord, come and sit and study there. Become more high DR. Hello, namaste. मैं नाम नहीं लिया तुम्हारा बिकॉज मुझे नहीं पता, नाम चेंज करो अगर से आप लोगों को नाम नहीं बताना है तो. मैं बाय द वे जूम वाले से बात कर रही हूँ. ओके मेगा. ओके थैंक्स मेगा, आई जस्ट कलर्ड माय हेयर. थैंक यू. That's true, ma'am. I have a performance anxiety before giving exam, no matter how much I prepared. It's very common, actually, Mohit. Even when we come on a podcast or when we start talking to, like anybody invites me. The other day, I had an invite for some. Okay, Dharmendra. Although it's a long name to take. So sorry, मैं ऐसे switch हो जाती हूँ Zoom chat और इसमें. So it's very normal to be nervous. It's normal to be afraid because we are living somewhere in the future, right? कि एग्जाम कैसे जाएगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे कि नहीं, पेरेंट्स क्या कहेंगे, हम अपने आप को कितना harshly treat करेंगे. So it's a normal common thing. But having said that, you need to also learn on how to cope with the stress. You have to पहले से फिटनेस में रहो, मेडिटेशन करो. मेरा ओवर थिंकिंग और एग्जाइटी वाला तो पूरा सेशन इज बेस्ड ऑन दैट. सो बिफोर योर एग्जाम्स यू कैन डू दैट 7 या 8 मिनट वाला एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर एंड पास्ट वाला जो मैंने ऑडियो बनाया है वो सुनो. पल्स टेक्निक ट्राई करो एंड आप स्क्वायर ब्रीदिंग टेक्निक ट्राई कर सकते हो विद स्माइल टेक्निक. whoever are my clients, I think you know that I've integrated 2 different techniques जो normally नहीं करते लोग, but मैंने खुद बनाया है क्योंकि I felt both are powerful in different ways, and when they're put together it works wonders. Try that. Learn to not put so much pressure on yourself. Keep telling yourself सब ठीक हो जाएगा. I have prepared enough. देखो तुम nervous इसलिए भी हो सकते हो कि तुम prepared ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. So be careful with that and make sure कि make sure that you study well. Okay. And पहले से scheduling करो. If you meet your target, generally इतनी anxiety नहीं होगी आपको, unless you have set really unrealistic expectations for yourself. It's like me telling that I'll be a 90% student. दूर दूर तक ऐसा दिन नहीं आना है. ठीक है. तो अगर से मैं ऐसे expect कर रही हूँ तो it would be really stupid of me. So don't do that. We should all know हमारी limitation कहाँ तक है, कब तक है, हम कितना कर सकते हैं. हाँ, hard work कर सकते हैं, but certain things we are just not cut out for. It's like me trying to say sing like Lata Mangeshkar. मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, it can never happen, right? मैं ऐसे unrealistic चीजें थोड़ी सोच सकती हूँ. अच्छा अभी Zoom में okay, I'm fine. धर्मेंद्र राजपूत. I'm not in Dubai yet. I'm going next month. I'm leaving next month around 8th of August or something like that. थोड़ा डिले हो गया हमारा, कुछ थोड़ा इशू चल रहा है यहाँ पे. Okay, so Mohit, I've replied. Thanks, Mega. I already said thank you. Sidhu Musada, enough for gym motivation. Is it? Okay. Okay. Acha, DT, I'll let you in. Whenever I feel down, I watch your live stream and lightens my mood. Thank you, Anushka. That's very sweet. I think one should exercise 5 days a week. Yes, if you can 3 to 5 times, that's what the research says. You should, yeah. Manjeet, I'll watch Vikram. I didn't know this movie. I will. That day I saw Kapil Sharma was on शो पे कमल हसन थे, बट आई डोंट नो कि कौन से मूवी के लिए थे. क्या डज दुबई हैव year round sunny weather? I had severe seasonal depression in Maharashtra. It is cold and raining 8 months. I think moving there would be better. Okay. Now first I'll answer the Dubai question. So yes, 1 second, I will answer. Dharmendra, 1 second. So first and foremost, Dubai has different weathers. It does have winter, but their summers are like, I have heard it goes to 50. Okay, 50. तो भगवान मुझे बचाए. एक वो रही बात seasonal depression की, पुणे महाराष्ट्र. I am born and brought up in Lonavala. So let's not even talk about weather. Okay, हमने ठंडी देखी है, बरसात, और हम एक 1 bedroom kitchen में रहते थे. हमने क्या नहीं झेला, ठीक है, लाइफ में. तो ये seasonal depression and all, I know it exists. People say that cold weather makes you feel. जैसे मेरी बेटी कनाडा में पढ़ती है, वहां पे हमेशा
कोल्ड इतना होता है, बट देव लर्न टू डील विद इट. सो लर्न टू डील विद इट, लर्न टू कोप विद. ऐसे करोगे तो फिर कहीं और जाके किसी और कंट्री में बोलेगा, अभी जैसे जकार्ता में देयर आर नो विंटर्स, गर्मी में मर रहे हो तुम, बारिश सारा टाइम गर्मी और बारिश और गर्मी, या तो गर्मी एंड बारिश टुगेदर. दैट्स ऑल आई हैव हैड फॉर 25 years. ओके, एंड इट रेन्स सो मच, एंड समटाइम्स द थंडर एंड लाइटनिंग, तुम्हारी बिल्डिंग शेक होती है, यहाँ पे अर्थक्वेक्स होते हैं. तो ऐसा अगर से हम लोग सारा टाइम भागते फिरेंगे इस कंट्री से उस कंट्री, ऐसा थोड़ी लाइफ होता है. हर कंट्री में कुछ अच्छा, हर सिटी में कुछ अच्छा और बुरा होगा. Yes, if you want to move there, you can later on, but having this mindset कि this depresses me, that depresses me, बाकी सब लोग कैसे डील कर रहे हैं? हम भी उधर से ही आए थे ना, तो हमने कैसे डील किया? Yes, धर्मेंद्र, ask. So पूछो. Is your house in? Yeah, right, sure. My house is in Burj Khalifa. वो बच गया. इतने पैसे नहीं है. तुमने हैंड रेज किया, तुमको अनम्यूट करने को मैंने आस्क टू अनम्यूट. अनम्यूट करो बाबा. बात करनी है कि टेक्स्ट से पूछना. अरे गौरव, सिंगल चाइल्ड पे वीडियो तब आएगी जब मुझे टाइम मिलेगा. हाँ तो टेक्स्ट करो ना, लिखो, तुम लिखते जाओ, मैं यहाँ दोनों जगह आई ट्राई टू रिप्लाई. राइट योर क्वेश्चन. महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र also gets quite cold. Do you know Lonavala was so fucking cold once. अभी भी ठंडी होती है, like बॉम्बे में नहीं होती, but Lonavala and Khandala, as it is, it's a hill station, right? So it does get cold over there. And कहाँ थे हम लोग? Ma'am, can I speak? Yes, sure, of course. Yeah. Ma'am, actually, I have a made-up name here. No Ma'am, I wanted to ask a question. sure. Ma'am, the thing is that, ma'am, I have a friend, and I have actually never talked to her in person, but she's my like I talk to her in Instagram. Okay. And ma'am, the thing is that sometimes like even if she's online, she doesn't reply. And I have also done the same sometimes to her, ma'am. So ma'am, like my thing is that, ma'am, I have like in starting I had like attached some feelings to her, but later on when I talk to her, I'm slowly getting, I don't know, ma'am, I would say disappointed, or I don't know the correct word to it. So ma'am, the thing is that how should I deal with it? Like, ma'am, I don't have like the feelings that I had of crush and that I had in the starting when I had never talked to her. So now when I'm like talking and having conversation, that feelings are really starting to fade away. So ma'am, like, is it? So ma'am, what shall be done? Did you watch my new video on science? No, ma'am. अच्छा, जाके पहले तो वो देख लेना, ठीक है? क्योंकि एक लड़की से एक साइन नहीं देती. I know somebody, by the way, I wanted to reply to this RTK, whoever wrote that, कि नहीं ऐसे साइंस नहीं होते. I beg to differ. तो एक, I'm not going to compare human beings to animals, but I'll just say कि हम एक कुत्ता भी लेकर आते हैं, या रास्ते पे भी कोई कुत्ता होता है, अगर से वो हम उसको रोटी खिलाते हैं या उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो वैग करता है अपना टेल, अपना इमोशन दिखाता है. तो if you are saying that this person has, if someone is interested, we're not talking about arranged marriages, mind you, we're talking about colleges and stuff like that, जहाँ आप लोग young लोग होते हैं. Almost everybody has this kind of reaction. Yes, it will be different reactions, it will not be the same signs for everyone, but basic signs तो होते हैं, ठीक है? So पहले तो House of Cards वो जाके देखना. Ma'am, can I say something? No, you cannot. When I'm talking, no, you cannot. Please wait. Okay. And because मेरा पूरा flow of thought निकल जाता है. I saw your hand raised. I'll just give you. After I'm done, you can counter argue or you can give me your point of view. So point number 1. पहले वो वीडियो जाके देखो. Second, जब हम किसी पे क्रश करते हैं ना, वो बिना एक बेस के होता है. वो मोस्टली उनको दूर से देखने से कभी-कभी what glitters is not gold. Okay, so when we have a crush on someone, let's say even Hrithik Roshan for that matter, okay, a lot of girls crush on him, but he doesn't date everyone and everybody wouldn't want to date him. Why? Because जब तुम किसी को जानने लग जाते हो, उनके बारे में आपको बहुत कुछ पता चलने लग जाता है, correct? So this must be it. One, that you're getting to know and you're like, okay, she doesn't have all the qualities that I was hoping. Because in your mind, you have fantasized another person.
and this is the real her, and it is completely okay to get over a crush, and it's very normal at your age कि एक बार इस पे crush है फिर उस पे crush है. So, and third is your texting thing, that she's online and she's not texting. Now I'll tell you a case where this person came to me and he was saying he initially, and they are in a, they started dating. So initially the first month they used to text each other very frequently. Then it reduced. She would be online and not text. So he started thinking, यार 1 minute हो गया, 1.5 minute हो गया, 5 minute हो गया, इस इंसान ने मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं किया. तो दो जगह यहाँ गलत है. एक तो ये अज्यूम करना कि वो इंसान इतना वेला बैठा है कि तुमने टेक्स्ट किया और फटाफट तुम्हें रिप्लाई है. ठीक है. स्पेशली धर्मेंद्र साहब रुको, मुझे बात करने दो. So don't tell anyone they are wasting their time. Don't put. My job is to make people understand from all angles. You must have gone through an experience where a girl was making you wait, so you're saying leave right now. Don't be so impulsive in making decisions in life. Okay, this also comes with a learning. It also is an experience you need to understand. So try to understand first and foremost, if you're not in a relationship, to expect someone who's going to reply to you like this, and considering you did the same to her, perhaps the person is returning the favor. Okay. No, ma'am. Actually, she started it. Then I did it. अच्छा, so now you are, because वो ego, अभी ego आ गई बीच में कि यार साली मेरे को वेट करा रही, मैं भी उसको वेट कराऊंगा, राइट? वो भी हो जाता है. ma'am, to be honest, ये normal, this is human reaction and human behavior. But having said that, कि आयुष अरे यार just wasting your parents money कहाँ से आया बाबा पेरेंट्स के पैसों से? You have to understand this कि एक relationship, you are just wasting your time. Leave here, behave like Sigma, use woman for bed only. Hello, धर्मेंद्र साहब, आप काहे ये सब लिख रहे हो? Please don't write all this. I will ban you. Okay, you were talking to me nicely. I don't believe in this bullshit of Sigma alpha nonsense. Be a human being. He's not perfect, she's not perfect. And where does my daughter is also dating, so she's wasting my time, is it? It's natural to, it's a human thing to want connection, to be in a relationship. Not everybody wants it, but if someone is, there's nothing wrong with it. And it, in this interaction with someone, that's how you have, like usko bolte hain, you know, you understand that these are the people you do not want in your life, right? So ये तुम्हें सिखाएगा. ये एक्सपीरियंस, जब आप किसी को टेक्स्ट नहीं करते, कोई आपको टेक्स्ट नहीं करता, आप पहले क्रश करते हो, फिर उनको समझने के बाद आपको रियलाइज होता है कि ओके, दिस पर्सन इज नॉट रियली माय टाइप, एंड शी, दैट्स ओके. यू नो, देयर विल बी टाइम्स समवन विल ब्रेक योर हार्ट. देयर विल बी टाइम्स, यू नो, नो शी इज माय डॉटर, शी इज वेरी मैच्योर. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो भी बच्ची है, वो भी इमेच्योर चीजें करेगी. उल्टा, आई फाउंड हर, वन ऑफ माय बॉयफ्रेंड्स, लाइक सुपर मैच्योर. And sometimes she's so babyish. That is okay. Don't judge people. कौन smart है, कौन mature है. Sometimes it's just a matter कि दो लोग compatible नहीं है. तो House of Cards तुमको ये समझना है कि हाँ, exactly गौरव, मैं उसको ही बोल रही, मुझे बोलने ही नहीं दे रहा. तो House of Cards, first and foremost, if you both have started your ego game so early, okay, you need to be very careful. But having said that, if she is not reading your messages on time, and first and foremost, tell me, उसका delay of messages कितना time लगता है? Ma'am, sometimes in hours and in days. Oh Allah. One or 2 days. And that's why. No, then no, not a good sign. If she's your crush and she knows that, does she know you like her? No, ma'am. I never expressed in the beginning, so I have like stayed in the game. Like I've never expressed to her. Okay, even if you didn't express, थोड़ा बहुत तो signs तुमने भी दिए होगा ना, the way you text, when you're eager to text and eager yes, to ma'am. get, Yes, ma'am. Like I share a reel, something like that. No, sharing a reel is not showing this, but unless it was a romantic reel. No, ma'am. Nothing along those lines. Then maybe I can see two things. Either she doesn't know you're interested in her and she just looks at you like a friend. Okay, so she's like कर लेंगे, ठीक है? या तो second one,
she knows you are into her but she is not into you. So उसने बोला यार I don't have time, or if I lead him on it will be a problem, so इससे ज्यादा मैं ज्यादा lead on नहीं करूंगी. Maybe most probably जैसे अभी recently ये वीडियो बनाने के पहले किसी का मैसेज आया था, तो उन्होंने प्रपोज कर दिया और मैंने उनको ये एक चीज भेजी थी करके बी केयरफुल बिफोर यू प्रपोज. अब वो बोल रहे हैं करके मैंने तो उसके लिए भिंडी की सब्जी बनाई थी और मैंने ऐसा किया था. आई एम लाइक हाउ डिड यू अज्यूम दैट शी डजंट हैव अ बॉयफ्रेंड? गलती किसकी है? उसकी गलती नहीं है कि शी इज इन अ रिलेशनशिप. it's your guys. Yeah, I'm not saying only guys, I'm saying अगर से एक लड़की भी किसी को प्रपोज करती है, किसी के इतना प्यार में सो कॉल्ड तुम लोगों में जो फर्स्ट लव या यो लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग होती है, सोच समझ के करो ना. लाइक I mean, unless you don't mind your heart broken, but then you feel bad also when the person says no. So in today's day and age, you've got to be a little careful. And this sign of few hours and few days, if it's few days, then 101% sure that she's not into it. Hours फिर भी I understand because इंसान पढ़ाई कर रहा है, family है, ये है, वो है. But if someone takes few days to answer your message, that's not a good sign. Okay. And ma'am, the second thing I've observed is that ma'am, any situation, ma'am, if I try to look at it logically, ma'am, I'm able to grasp it. Ma'am, the moment I invest the emotions, ma'am, the thing goes haywire altogether. So I'm like, what's the? एक सेकंड मेरे को पहले इसका. और धर्मेंद्र, शी इज अ गोल्ड डिगर. उस लड़की ने रिप्लाई नहीं किया, वो उसको लीड भी नहीं कर रही, उससे कुछ मांगा नहीं. गोल्ड डिगर क्या होता है यार? जबरदस्ती किसी लड़की को तुम बुरा बुला रहे हो. फॉर ऑल यू नो तुम ये हाउस ऑफ कार्ड्स कौन से इसमें है, उसने भी एक लड़की से ऐसे फालतू की एक्सपेक्टेशन क्यों करना? जस्ट बिकॉज तुमको कोई लड़की पसंद आई, जबरदस्ती है कि वो इंसान तुम्हें रिटर्न में प्यार करे या रिटर्न में लाइक करे? ये कहाँ लिखा है? कोई अनाथ आश्रम खोल के रखा है कि एवरीबडी लव मी, एवरीबडी शुड केयर फॉर मी जस्ट बिकॉज? नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. व्हाट इफ इट वाज योर सिस्टर and one guy is approaching her, she is not interested, she is not texting you back. हर लड़की हर लड़के को रिप्लाई करेगी क्या? क्या लॉजिक है? उल्टा अच्छा है कि उसको लीड ऑन नहीं कर रही हो, उसको बता रही है करके. कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के भी है, और मेरे पास लड़कियां भी आती है कि मैम वो इतना प्यार करता था, लव बॉम्ब किया, और फिर अचानक कोल्ड वाइब. तो तुम सब लड़कों को बुरा बुलाओगे यार? डोंट गो ऑन एक्सट्रीम बिहेवियर. हर इंसान में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है. ऑलवेज यूज योर लॉजिक. कि किसी को एकदम हाइपर होके गंदा बुलाना makes no sense unless they are murderers and terrorists. Otherwise, each one of us has some perfection, some imperfection, some mediocre qualities, some extremely good qualities. We are a mixed bag. So this girl has not even done anything. She's not even said yes for a relationship. Why are you calling her names? बेचारी ने कुछ भी नहीं किया है, तो तुम बिना रीजन उसको गोल्ड डिगर एंड ऑल बोल रहे. में भी तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, इसलिए जब एक इंसान ऐसा इतना नेगेटिवली बोलता है, जरूर तुम्हारे लाइफ में किसी लड़की ने तुमको या तो हार्ट ब्रेक हुआ है तुम्हारा, या तुम्हारे इर्द गिर्द तुमने वही देखा है और तुम्हारे दिमाग में घुस गया है. प्लीज डोंट लिसन टू अदर पीपल. एंड वन एग्जाम्पल, या 3 times, सी 3 times, पर 3 time अगर से आपके साथ हुआ है, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, आर यू श्योर यू आर नॉट डूइंग आल्सो समथिंग रॉन्ग? When some relationship goes wrong, it takes 2 to tango. You cannot say कि ताली जैसे दोनों हाथ से बजती है. Don't tell me that you were the perfect boyfriend or whatever. Maybe you were just not compatible. You just want casual, you don't want casual. That's your take. Okay, so let's leave that. आपका क्वेश्चन बाद में आंसर करूंगी, बट मैं अगर से किसी को रिप्लाई करूं, बीच में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट एक्सट्रीम माइंडसेट है, मेरा माइंडसेट एक्सट्रीम माइंडसेट नहीं है. मैं लड़की का भी एंगल देखती हूँ, मैं इसका भी एंगल देख रही हूँ, क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, हमेशा हम अपना एंगल देखते हैं, सामने वाले को समझने की कोशिश ही नहीं करते. तो मैं उसको दोनों तरफ से समझा रही हूँ. ठीक है, डिस्कशन की बात नहीं है. डिस्कशन आप आपके प्रॉब्लम पे मेरे साथ करोगे. इस बंदे ने आपको नहीं पूछा है. आपको अगर से क्वेश्चन पूछा होता तो फिर आप अलग से डीएम में जाओ. बट ही इज आस्किंग मी, इफ यू हैव a question for me, something has happened in your life, then you can say कि मैम आपने ये बोला, आपने ऐसे कैसे बोला, मुझे ऐसा लगता है. That is a different discussion. But when he is asking me my point of view, and your point of view is obviously, even Gaurav or even ask House of Cards, whatever you've written here,
it's an extreme mindset, and people with extreme mindsets are mostly very unhappy in life. जो बहुत ज्यादा bitter और negative होते हैं, कभी हमेशा तुमको लाइफ में प्रॉब्लम होगी. सो बी केयरफुल. किसी के बारे में इतना नेगेटिव बोलना और सब लड़कियों को अंडर वन अम्ब्रेला देखना. तुम्हारी मॉम भी लड़की है, तुम्हारी बहन भी लड़की है, मेरी बच्ची लड़की है, मैं भी इधर बैठी हूँ, हम सब लड़कियां, अच्छे लोग भी होते हैं इस दुनिया में. जस्ट बिकॉज आपके साथ अच्छा एग्जाम्पल नहीं हुआ है, उसका डजंट मीन कि यू नो किसी और, बाकी सब हम पागल है और सब बाकी सब लड़कियां गंदी है, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है. ओके, हाउस ऑफ कार्ड्स, यू आर सेइंग when you make logical decisions, they're good for you, but when you get a little emotional, it doesn't hold you good, right? So Yes, ma'am. but in what way, like in what decisions are you saying, love or what? Yes, ma'am. Specifically in that department, and sometimes to be in, ma'am, like normal day-to-day life also. Ma'am, when I like consider, like start considering people, ma'am, sometimes they walk all over me. Dekho, are you talking specifically girls or even friends? Huh? House of cards, specifically girls or Yeah, guys? no, ma'am, both, to be honest. ना. तो ये देखो, when you say that people take you for granted, or people you know mistreat you or walk all over you, ये आजकल का जनरेशन का प्रॉब्लम है. ठीक है. कि तुम लोग, एक तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से बहुत ज्यादा होती है, दूसरा तुम लोग छोटी छोटी चीजें में मदद करते हो. उस दिन भी एक डीएम आया था, पीपल यूज मी. ऐसे यूज कैसे किया? मुझे ये बात बताओ, तुम लोग ने क्या अपनी जागीरी उनको दे दी, अपना किडनी लिवर आंखें डोनेट कर दी? तुमने जब वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जब भी उनको चाहिए तुम जाके खड़े हो जाते हो? ऐसा नहीं होता ना. तो एक तो डोंट make it hyper, okay, on the things that you do for people. You put it in your mind, you are looking at yourself, wow, I'm so good, I'm so amazing, this person is walking all over. I mean, now I help people every single day of my life, right? I still don't think that I'm doing anything great. So when you do it for your friends, first and foremost, don't feel that you're overdone something. Second of all, when someone leaves your life, and this is going to happen till you do not understand this basic fact of life. जैसे फॉलोअर सब्सक्राइबर्स अभी के लिए होते हैं, कोई मुझे बाद में याद नहीं करेगा, वैसे ही हमारे दोस्त जो स्कूल कॉलेज में होते हैं, बहुत बहुत कम आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे. तुम अपने मम्मी पापा को ही पूछ लो, वो उनमें से, उनके जो स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स, उनमें से फेसबुक पे आ गए होंगे, क्योंकि तभी फेसबुक नहीं था और अभी है, तो उनमें से कितने लोगों के साथ उनका अभी तक दैट काइंड ऑफ बॉन्ड है? आपको पता चलेगा बहुत कम. जब हमारी फैमिली ही, यू विल सी इंटरनल डिस्कॉर्ड इन, मासी का बेटे के साथ इशू हो गया, कभी बहन भाई का इशू हो गया, माँ बाप में डिवोर्स हो रहा है. सो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. डू नॉट एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम योर फ्रेंड्स, दे कम टू लीव यू. जब कोई जाता है उनको क्लिंग मत करो, उनसे जो भी आप सीख सकते हो वो सीखो. एंड आप बोल रहे हो करके, आप maybe you're slightly sensitive and you're slightly emotional. One, because I don't know how old are you? How old are you? Ma'am, 18, So it's 18, 19. 18, 19. Not just girls, guys are also very emotional, and people assume that guys are like this, like rock solid. हमको कुछ दर्द नहीं, मर्द को दर्द, ये सब bullshit है. आपका brain is going through a transformation. Your brain is developing, your amygdala in the limbic system is developing. You will be more emotional at this age than later on. You will be able to deal with these kind of so-called matlabi friends, in your words. But you have to understand, this is how life is. You will make different friends throughout the journey of your life. Okay. And mostly I have seen, जैसे मेरे हस्बैंड के एक स्कूल कॉलेज फ्रेंड आए थे कल, जब इंडिया से आए थे. सो उन लोग साथ में स्कूल में थे. सो they meet, but they are not like every day in touch and all that stuff. So बहुत rare होता है. If I have to really think in my, I do have some friends from school college, but nobody I can like depend on per se. Okay. So ये बहुत कम होता है कि कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ लोगों के साथ नहीं होता है. So I saw that the friends that I made in the latter half of my life,
that those friends I have stayed with me are going to stay with me longer. The friends that I made later after getting married, after having children. So I feel those are the kind of friends that stay with you. So first, downplay the role that you play in these people's lives. Don't hyper analyze this thing कि मैं कितना ग्रेट हूँ, मैं इनके लिए कितना करते हुए मुझे कुछ नहीं करते, नहीं. आपको समझना है कि ये होगा आपके साथ. दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. आज भी किसी का केस आया था, लेकिन कि उन लोग मेरी तरह क्यों नहीं सोच सकते. आप अभी इधर ही देख लो, आपने एक क्वेश्चन पूछा और ये धर्मेंद्र के साथ कुछ बोलता है, आई एम बेसिंग इट ऑन फैक्ट्स, बट फैक्ट्स बेस्ड इन हिज लाइफ. Okay, this is not generally, it doesn't happen to every person. So there are lots of people who have had amazing relationships and still have amazing relationships. I've been married for 30 years. Okay, all my friends have been married for long, but there are some who have got divorced also. So what he is basing it is on facts on his life, not facts all around the world. So same way with you, ये basic general चीजें समझ जाओ कि तुम आए हो, दोस्ती करोगे इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए, मस्ती के लिए, पढ़ाई साथ में करोगे और फिर तुम लोग सब अपने अपने रास्ते जाने वाले. ठीक है. रही बात तुम्हारे ओवर सेंसिटिव होने की, डीएम करो मुझे, आई विल गिव यू समथिंग टू वर्क ऑन इट. माय वीडियोस नॉट रेडी. हां बोलो. हां Ma'am, actually, I don't like to make it everything public which I'm having with any person. Ma'am, the thing with Dharmendra Kumar is that, ma'am, he's DMing me that I'm a gayish person and whatnot. Like, I don't know why he's doing it, to be honest. गौरव, इसको बैन करो, निकालो. धर्मेंद्र, सॉरी क्यों बोलते हो यार, इडियट. कितने बार बोला है तुम यार, डोंट लिसन. यू सी, ओके, सो दिस इज अनदर लेसन वी ऑल कैन लर्न. ओके, हाउस ऑफ कार्ड्स, you need to understand something that Yes, people ma'am. will say things about you. Okay, do you, I don't know if you're my constant follower. No, ma'am, actually, I've DM'd you once on Insta also, and Okay, you but replied I don't know also. if you've seen me on Zoom before, but I get this person who keeps he cannot hear my voice. Everybody can hear my voice, Harsh, so please check your own this thing. तो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि मैं इतना मदद करने के बाद मैं इतना, I feel that I think expended so much energy, emotional energy and time and effort, and I still get people abusing me. Okay, it's very normal for these people, not for me, because I come from a family where हम लोग ऐसे सब नहीं करते, दूसरों को bully troll नहीं करते. But this is the problem with today's world. So whatever he is saying, he comes from a mindset, obviously he's mentally not all there. So he comes from a mindset where he believes that being sensitive and being taken advantage by a girl and being emotional is part of being gay. Now, first and foremost, there's nothing wrong with being gay. It is each one to their own. चाहे तुम lesbian हो, bisexual हो, gay हो, एक इंसान हो. It doesn't matter आप sensitive हो कि आप कम sensitive हो. As long as नहीं तुम cruel नहीं हो, वो important है. तुम इंसान हो. So don't believe all this bullshit. Even if someone, there was this, I have this case where people keep calling him gay and all. कल भी मैंने एक स्टोरी में लगाया था कि जो लोग आपको कुछ बोलते हैं ना, ये अपने अंदर से उनमें बिटरनेस इतना है कि वो एक इंसान को इंसान की तरह नहीं देख सकते, उनको हर चीज को कंपार्टमेंट में डालना पड़ता है. तो लर्न टू इग्नोर सच थिंग्स एंड दिस इज योर ट्रेनिंग ग्राउंड, इंक्लूडिंग दिस Zoom. Whoever is sitting here today or whoever is watching me on YouTube, आपके साथ जब भी आपको कोई बुली और ट्रोल करे, याद रखना ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, आपको स्ट्रॉन्गर करेगी बाद में के लिए. हाँ, आप बैन कर लो, नई बात करो, लाइक उसको निकाल दिया अभी, राइट, हमने. बट द थिंग इज वी कैनॉट स्टॉप दीज पीपल इन आवर लाइव्स हु कम जबरदस्ती, एंड जबरदस्ती हमको हर्टफुल चीजें बोलेंगे. आफ्टर सम टाइम जस्ट बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर वॉल एंड लाइक से फक ऑफ, इतना टाइम नहीं है. अच्छा, सो हाउस ऑफ कार्ड्स, डिड आई, if you want to DM me and you want to talk more about this, feel free to do so. Okay? Yes, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. And don't listen to anybody, whoever texts you crap, then you give them too much power to believe the shit that they post about you. Yes, ma'am. चूतिए लोग हैं, छोड़ो इनको. हाँ. Okay. 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 हाँ, Harsh, you wanted to ask me something, beta?
सॉरी मैं यूट्यूब तुम लोगों को थोड़ा देर के लिए भूल गई हूँ। मैम एक्चुअली हाँ बोलो बेटा। मैम पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप ये सब मतलब इतना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ये सब चीज़ों के लिए। मतलब आई हैव सीन माई फ्रेंड्स गोइंग टू दिस काइंड ऑफ थेरेपी। मतलब ऐसा भी नहीं बट जाते हैं लोग फॉर डिप्रेशन एंजाइटी और बहुत महंगा होता है मिडिल क्लास के लिए। बट आप ये सब कर रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैम मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ एक्चुअली। मेरा देखा मैंने आपका काफी टाइम से मैं आपका कंटेंट देख रहा हूँ श्वेताब सर के साथ जो ऐसे भी। तो अभी एट प्रेजेंट टाइम मैंने प्रॉब्लम तो मैंने जल्दी सोचा कि अगर इट्स अ फ्री ज़ूम तो लेट्स ज्वाइन एंड थैंक यू सो मच अगेन। तो मैम एक्चुअली आई वाज इन अ रिलेशनशिप फॉर 4.5 years। तो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 19 एंड अभी मैं 23 का हूँ एंड अभी खत्म हुआ है। पर इट्स नॉट लाइक कि नॉर्मल खत्म हुआ। एमिकेबली हमने किया है बट द थिंग इज कि एक दूसरा इंसान है दूसरी साइड जो मतलब मेरे जो एक्स है अभी एट प्रेजेंट उसके लाइफ में आ गया है। एंड 4.5 साल का अगर मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बताऊं कि वाई इट इज अफेक्टिंग मी सो मच इज बिकॉज कि इनिशियली सब अच्छा था बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मैं अननोइंगली जैसे मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप था तो कुछ गलतियां हुई मेरे से। जैसे बर्थडे पे मेरा बर्थडे था 2019 तो उस टाइम पे शी सेंट मी वेरी नाइस गिफ्ट्स फ्रॉम हर ओन। मतलब अपने से उसने किया। वो चंडीगढ़ में थी दिल्ली में था तो लॉन्ग डिस्टेंस था काफी टाइम। तो उसने किया मैंने उस गिफ्ट्स को आउटराइट आई जस्ट सेड कि मैं घर पे नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे घर पे दिक्कत हो जाएगी। बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स थे। तो उस टाइम मेरा दिमाग ये चला नहीं कि मैं उसको पहले तो एक बार थैंक यू तो कर दूं। वो मैं उस टाइम पे वो भी नहीं बोला। आई वाज जस्ट मैं अपने ही जोन में चला गया कि यार ये मैंने तुझे मना किया था यू शुड नॉट हैव डन दिस। तो वहां से क्या हुआ कि एक पिवट मोमेंट आ गया कि शी पहले उससे पहले तक शी वाज वेरी लविंग टुवर्ड्स मी। उसके बाद धीरे धीरे दैट गॉट डिग्रेडेड। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने गलती करी। तो फिर मैंने कोशिश करी कि ठीक है ठीक से चलाएंगे बहुत कुछ किया। एंड फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि चिल्लम चिल्ली हो गई। चिल्लम चिल्ली शुरुआत हो गई बहुत सारी। मैं नहीं पहले बोलता था फिर उधर से आने लग गया फिर मेरा भी शुरू हो गया। एंड फिर 2021 मार्च में क्या हुआ कि uh, उसने सडनली किसी और के साथ वैसे हो गई रिलेशनशिप में चली मेरे रहते हुए में भी। तो मैं उस टाइम बहुत रोया बहुत। वही है कि बेगिंग पे आ जाते हो आप। बहुत रोया बहुत चिल्लाया। मैंने बेग किया 1 महीना वो सब वो वापस आ गई। बट मैं अपनी इज्जत पूरी तरह से आप कह सकते हो कि गवा दी उस मोमेंट पे क्योंकि बेग करने पे यही होता है। क्योंकि मैं झेल नहीं पा रहा था वो 1 महीना मैं बहुत ही डार्क प्लेस में चला गया था बहुत ज्यादा। मैं कुछ काम नहीं किया। मैं ऐसे पढ़ता हूँ यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा हूँ। मैंने कुछ उस टाइम पे फोकस ही नहीं किया। एकदम सारा मेरा फोकस हिल गया पूरी तरह से। तो वो 1 महीना फिर तब मैंने बस एक ही प्रॉमिस किया था कि आई वोंट लेट माई सेल्फ गो टू दिस डार्क प्लेस अगेन नो मैटर व्हाट हैपेंस। अभी क्या हुआ कि आफ्टर दैट फिर से चीजें पूरी तरह ठीक नहीं हुई। वैसे ही चलते 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 भी फिर से क्या हुआ कि मेरे यूपीएससी का प्रीलिम्स था अभी 5 जून को। तो आई जस्ट टोल्ड हर कि लेट मी फोकस फॉर 1 मंथ। ये लास्ट 1 मंथ आई कैन नॉट गिव यू दैट मच प्रायोरिटी फॉर नाउ जस्ट फॉर नाउ। कि आगे अगर रहना है साथ में तो भैया काम भी तो जरूरी है। तो क्योंकि शी इज डूइंग फाइन और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी लाइफ में सब कर रही है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर कि वो कर रही है। वो बहुत टाइम से कर रही है। वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है। यूनिवर्सिटी टॉपर भी है वो अपनी। तो इस 1 मंथ में क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि शी वॉज अलोन इन हर हाउस फॉर लाइक 4 days 11 मई से 14 मई। एंड शी जस्ट वॉन्टेड कि तू एक बार आ जा मिलने क्योंकि कोई भी नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि यार देखो हम मिलेंगे बहुत टाइम लग जाएगा मुझे पढ़ना है। तो मैंने मना कर दिया आउटराइट आउटराइट इन द सेंस मतलब पोलाइटली बट मना कर दिया। और हुआ क्या कि इस बीच में मेरे कुछ फ्रेंड्स आ गए जो डिफेंस में है। उनसे मुझे मिलना ही पड़ गया क्योंकि वो फिर कब आएंगे पता नहीं भी आ सकते ऐसा भी है। तो उससे क्या हुआ शी थॉट कि मैं प्रायोरिटी नहीं दी उसको मैंने। एंड उस बीच में क्या हुआ फिर से लड़ाई हुआ। मैंने कहा कि ठीक है यही होगा तुझे यही करना है तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो अब तू तेरी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा इस तरह की बात मैंने गुस्से गुस्से में कह दी। एंड उसके बाद क्या हुआ सडनली एक दूसरा लड़का मिल गया और फिर जिस दिन मेरा फिल्म्स था मेरे फिल्म्स भी खराब गया पहली बात तो। एंड शी ऑल्सो ब्रोक अप विद मी। और वो अभी मैं फिर भी कहा कि चलो बड़ा संभाला मैंने अपने आप को कि ठीक है कोई बात नहीं ये वो। बट मैं अभी तक ठीक था। अचानक से क्या हुआ कि मेरे दोस्तों ने मुझे एक फोटो भेज दी जो मतलब उसने अपने आईडी पे डाली। एंड मैं कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया उससे बिकॉज मैं बस देख ही नहीं पाया पता नहीं क्यों मैं अपने बबल में था कि मैं ठीक हूँ। मैं अपने बबल में ठीक हूँ। जैसे ही देखा मैं शैटर्ड हो गया।
तो अभी 4 दिन से मैं बहुत हैंडल कर रहा हूँ अपने आप को। आपकी बहुत सारी वीडियोस देख ली है मैं श्वेताब सर की बहुत सारी वीडियो देखी है, पुरानी भी नई भी। बट हो क्या रहा है कि आई नो कि आई नीड टू फोकस ऑन माई लाइफ, इतना मेरे को क्लियर है कि आई कैन नॉट डू दैट अगेन, जो कि मैं द डार्क प्लेस में चले जाऊं। बट द थिंग इज कि वो मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वो बीच में आता है, आंसू आते हैं चले जाते हैं, आंसू आते चले जाते हैं, एंड शिटी फीलिंग जो बार बार रह रही है, अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं। मतलब नहीं कहना चाहिए, बट कैसे समझाऊं आपको कि वो हम लड़कों को, एक जो मेल ईगो से रिलेटेड एक ख्याल आता है ना कि मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मैं इतना वल्नरेबल रहा, और अब वो कोई और उसका फायदा उठाएगा, इस तरह की चीजें। तो आई एम नॉट प्राउड ऑफ दीज थॉट्स, बट दीज कम ऑटोमेटिकली। मैं रोक भी नहीं पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा उसको। मैं जहां जितना रोकता हूँ वो और बढ़ता है। ये तो क्लियर है कि जितना रोकता हूँ और बढ़ता है। तो आई जस्ट वांटेड कि मैं, आप मेरे को अगर गाइड कर पाए कि क्या करना चाहिए एट प्रेजेंट, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि शिटी फीलिंग जल्दी से जाए। आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन माई लाइफ। 8 अगस्त को मेरा एग्जाम है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, बट बीच बीच में जो हो जाता है बार बार रोना वोना, मैं वो हैंडल नहीं कर पा रहा। तो सॉरी इतना लंबा हो गया। नहीं, that's okay. It's good to get it out of your system. हाँ, तुमने बोला मेरे वीडियोस देखे, कौन सा वाला देखा? हार्ट ब्रेक वाला देखा? हार्ट ब्रेक वाला वो 4 घंटे का है मेरे ख्याल से 4 लाइव घंटा स्ट्रीम है। नहीं देखना, उसमें से सिर्फ 2 घंटा देखना है। अच्छा, वो देखा नहीं है मैंने। वो देखना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, You want to get out of this, you need to understand what is happening to you. Okay? यस, First and foremost, we cannot fix something when we do not know the emotions that are there behind it. यस। When did you just break up? How much time has it been? टेक्निकली यू कैन से 5 जून से, बट बीच बीच में बातचीत होती रहती थी, ये वो इस तरह की चीजें। और अभी बट बात कर रहे हो? मैंने तो फिर 7 जुलाई को जब फोटो देखी तो मैंने प्रण ही ले लिया कि अब कभी नहीं करूंगा। इस तरह का हो गया है, बट आई नो कि नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट से आ रहा है, तो मुझे वैसा नहीं करना है। 1 मिनट। सो पहले 5 जून को तुम लोगों ने बात ब्रेकअप कर लिया था, राइट? यस, यस, फिर अभी 7 जुलाई को तुमने फोटो देखी, ठीक है? यस, Now let me ask you a question. She has just started dating according to you, right? यस। Before this, before her dating, do you think she is completely out of like love with you? नो। Do you want to try one more time? मैम शी इज नॉट आउट ऑफ लव, बट इट्स जस्ट दैट कि वो पता नहीं, उसने मुझे बोला कि नहीं चल रहा, बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैं तो करना चाहता हूँ, बट सामने वाला। She doesn't want to try anymore. यस, So then she's not, ना? Then तुमने गलत आंसर किया. That means Yes. she doesn't want to. She's already outgrown the relationship. जब एक इंसान ट्राई नहीं करना चाहता, ठीक है, यस, तो मतलब ऑलरेडी वो तुमसे काफी and it's that's the reason, one of the reasons I want you to watch this ego thing that you have. You're making that other person a competition with you. It's not हाँ actually. मैम, इस तरह के थॉट्स आते हैं ना कि शी वेंट विद हर, लेट्स से, तो विद हिम, तो हम कम है। इस तरह के मुझे पता है कि हम कम नहीं है, बट द रीजंस टू फाइंड कि हम क्यों कम नहीं है, वो थोड़ा सा इस मोमेंट ऑफ टाइम में हार्ड हो जाता है। Okay, so you need to watch the session. Actually, Yes. you DM me. I'll tell you why. Because there are some audios I want you, the hypnosis audios, which will help you to get better and to cry less. Okay. So, but there is no miracle cure. You will have to I know. go through this pain. You will cry a little bit. You will cry a lot. But you have to understand, in the long run, this ये आज नहीं तो कल होना है. तुम आज उसको डेट करते हुए देख रहे हो, एक दिन वो तुम्हें डेट करते हुए देखेगी किसी और को, ठीक है? दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. इट टेक्स अ लिटिल. द प्रॉब्लम विद अस ह्यूमन बीइंग्स, हमको हर चीज का क्विक फिक्स चाहिए. हमको दर्द फील नहीं करना, हमको ये अनईजीनेस फील नहीं करना. बट growth comes with a price tag, a very heavy price we have to pay. We'll Yes. feel discomfort, we'll feel uneasy, we will cry, we'll tear up, हमको memories आएंगे. और generally during this time, which I have explained in the session also, that we fantasize that what could have been. You see, हम सारा गलत भूल जाते हो. आप भूल गए. See, जब आपने, let me tell you something, okay? Yes. Even though you used studies as the reason to not give her enough time, okay? There are two things which could have happened. One, you actually felt कि यार
you know, दिक्कत होती है. subconsciously, okay, subconsciously, I'm not saying maybe you didn't realize the impact it will happen on your relationship, but subconsciously, when someone wants to take out time, they do, okay. They are tired. You took out time for your friend, so her point is very valid here. Yes. Something this is, and all of you all, I want you all to understand something. This is very important. Most of us make this mistake in our relationship. We think ये person हमारे life में हमेशा रहेगा. नहीं, ऐसा Yes. नहीं है. You have to nurture the relationship every single day. एक आध दिन हो गया कोई बात नहीं, 2 दिन, बट अगर से तुम बार बार एक इंसान को दिखा रहे हो कि तुम उसके बिना रह सकते हो और उसका प्रेजेंस तुम इग्नोर कर रहे हो. इट्स लाइक एक प्लांट लो, उसमें तुम पानी है, सनलाइट है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर वो तुम डिप्राइव करने लग जाते हो, पानी नहीं डालते हो. इमेजिन एक प्लांट है, इस तरफ से तुम डाल रहे हो, उस तरफ से वो डाल रहे, वो डालती जा रही है, पर इस तरफ का पानी इस तरफ नहीं आ सकता. जो Yes. वो इस तरफ उसको नर्चर कर रहे हैं, तुम्हारे भी नर्चरिंग की जरूरत है. अब क्या हो रहा है कि वो प्लांट मर गया, तो जब तुम पानी कम डालने लगते हो, वो सामने वाला समझ जाता है, तो वो भी धीरे धीरे पानी उस तरफ से भी कम हो जाता है. अब दोनों तरफ से, तुमको पता है प्लांट में क्या होता है, जब ट्रीज में दूसरी जगह से भी वो नरिशमेंट ले लेते हैं टू सर्वाइव, दे ट्राई एवरीथिंग. सो इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, इनिशियली जब ये वाला तुमने पानी नहीं डाला, तो ये डालती गई, वो रिलेशनशिप फिर भी मुरझा नहीं रहा था. अब उसने भी डालना बंद कर दिया, तो जब Yes. दोनों तरफ से, तो खत्म हो गया रिलेशनशिप. अब जब खत्म हो जाता है, उसके बाद तुम पानी डालो, पूरा ओशन उसमें डालो, you cannot do anything about, because the person has moved away from trying to nurture something which they should have done together. A relationship needs two people to make it last. So ये जो तुम लोग सब ये सब excuses देते हो ना, हमारे पास टाइम नहीं है, ये सबसे ज्यादा तुम बॉयज का, और मैंने कुछ लड़कियों को भी देखा है जो करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है. I fucking beg to differ. In 24 hours, and all of y'all who want to get into a relationship and have not, or are in relationship and are doing this shit, whether it's a girl or a guy, I'm telling you both, you like that person, if you said yes and committed yourself into a relationship, unless there are a lot of other things which you don't like in a relationship, but time and communication should not be compromised. Yes, exam आया है, yes, आपके लाइफ में आप काम कर रहे हो, पूरा दिन आप काम कर रहे हो, बट यू आर ट्राइंग टू टेल मी आपके पास 24 घंटे में 30 मिनट या 1 घंटा वो उस इंसान के लिए नहीं, आप लोगों ने रिलेशनशिप में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास बाकी सब चीज करने का वक्त है. 24 घंटे में to take out 30 minutes or 60 minutes, if you cannot do it, then please do not be in a relationship, because relationships do not survive without time, do not survive without effort, do not survive without communication. You both need to stay connected. और मैं ये बहुत बार बोल चुकी हूँ, पर इनके और जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं, अंडरस्टैंड, जब हम पहले बार रिलेशनशिप में जाते हैं, हम क्या करते हैं, जब हमारी लड़ाई होती है, तो हम फर्स्ट नाइट रह नहीं सकते, एक दूसरे को, कोई सॉरी बोल रहा है, कोई मना रहा है, कोई फोन पे फोन किया जा रहा है, ठीक है, एक वो होता है. फिर कुछ महीनों में ऐसा होता है कि छोड़ो ना यार, सो जाते, देखा जाएगा, कल देखा जाएगा. एक दिन चला जाता है, चलो ठीक है, तुमने फिर या तो तुमने पोलाइटली एक दूसरे से बोला, यार लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स नॉट टॉक फॉर वन डे, वी आर टू एजिटेटेड, वी आर सेइंग द रॉन्ग थिंग्स, वी ब्रेकअप करते हैं, यू आर गुड फॉर नथिंग, गाली गलौच हो रही है, व्हाटएवर हो रहा है. बट अगर से वो खिंचता चला जाता है, when you tug too long and too hard at a rubber band, even that snaps. So this is what happens in a relationship. When you tug that argument and you pull it and stretch it so fucking far that for 1 week and 2 weeks you people stop talking to each other. Then because you miss each other, क्योंकि addiction sort of हो जाती है, right? That hit you get Yes. with your partner. Then you want that hit, so you come back together. Then again you fight, then again you go for, then, और ये मैंने सेशन में भी समझा है, ये जो ऊपर नीचे कर्व जाता रहता है, फिर फाइनली वो वन, या तो सामने वाला, या तो तुम, या तो दोनों साथ में बेजार हो जाते हो. तो वो सबको, अभी तुमने, आई डोंट नो इफ दिस इज योर रियल नेम, एम आई सपोज्ड टू टेक इट? Yes, yes. Because when I talk naturally आता है, but anyway, so you need to be very careful. This lesson that you're learning, make sure in the next
relationship, if and whenever you are, okay, Yes. make sure that you don't make shitty excuses. Your हाँ ये partner is गलती smart yes. enough, okay? It's not just about, yeah, when she gave you gifts, you have to, and yes, let's see, खुद ब खुद तो हम लेसन सीखते हैं, पर हम दूसरों से भी लेसन सीखते हैं. जब आपको कोई प्यार से कुछ देता है ना, ठीक है, अगर से आप रख नहीं सकते, पेरेंट्स को पता चलेगा ना, एटलीस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक देम फॉर बीइंग थॉटफुल. Yes. बाकी टाइम तुम लोग रोते रहते हो, हमारे बारे में कोई सोचता नहीं, हमको लड़की नहीं मिलती, हमको कोई प्यार नहीं करता. फिर जब कोई करता है तो तुम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते, ग्रांटेड ले लेते हो. डोंट टेक, लड़के ने लड़की को, या गेज हो, लेस्बियन हो, जो भी, लड़का लड़की, जो भी जेंडर से तुम आइडेंटिफाई करते हो, नॉन बाइनरी, बाइनरी, इट डजंट मैटर. मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ. ह्यूमन बींग्स ने एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए. अभी रही बात हर्ष की, तो आप पहले तो वो सेशन देखो, पहले तो डीएम करो, तो आई कैन गिव यू, आई कैन जस्ट ईमेल यू द एंटायर थिंग दैट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, बट ठीक है. you will go through highs and lows. Tell yourself 1 hour at a time or half an hour at a time. If you managed half an hour, जैसे मैं और एक बार, this is your withdrawal symptom, okay? You need to understand. I'm sorry YouTube people, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे 2 मिनट इनका आंसर करने के बाद मैं आंसर करती हूँ. So please be patient. One day you will look back and say कि यार मैं कितना ड्रामा कर रहा था इतने बात पे. पर ये इमोशनल स्टेट है. इस इमोशनल स्टेट के आगे जब जाओगे, इनिशियली सबको तकलीफ होती है. आप कोई नए नहीं हो, आप you are as human as the rest of us, okay? We all cry, we all feel sad, and you are more upset not with what the fuck you did and how to learn from it. You're more irritated because someone else is dating your ex, okay? So that is very normal and it happens, but then No, you'll ma'am, be I'm also very upset because I know कि I did the mistakes. मुझे समझ आता था, मैं उसको कोशिश भी करता था रेक्टिफाई करने की. मुझे पता है कि काफी गलती करी है मैंने. उसने अपने से काफी चांस दिया, बट मैं आई डोंट नो, मैं नहीं कर पाया वो चीज. तो मैं okay, अपने then you're अपने just not compatible. Sometimes मैं वही तो बोल रही हूँ, कहीं शायद तुम subconsciously ये सोच रहे थे कि you know, in your back of your mind, maybe not deliberately, but you knew that not everything is compatible in this relationship. So it's not just about your time. You have to understand there were a lot of elements which you have not seen, and perhaps you don't want to see, and you don't want to face the truth that maybe this was not the compatible partner that you wanted, and therefore hence you could be doing things to sabotage the relationship. And next relationship when you go, there also you learn lessons about yourself. सामने वाला relationship में वहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी. हर relationship में ऐसा होता है, ठीक है? Yes. Don't worry, you will be fine. Trust me. Just a matter of time. थोड़ा time. Thank you. Okay. Okay, thank you. Yes. DM you. हाँ, sure. Yes, Rohit, बोलिए. I have unmuted you. आपको hand raise किया आपने. If you want to, I want to see your face before I start the chat, because I am not letting anyone text here anymore. Rohit, if you have raised your hand, please talk to me so that I know that you are a real human. I'm so sorry. YouTube, पहले YouTube, एक मिनट, कहाँ थे हम लोग? My God, भाई भगवान, मुझे माफ करना. मैं एक मिनट, कहाँ थी? हाँ, सिंगल चाइल्ड वाली वीडियो आएगी यार. पहले इतने सारे वीडियोस हैं, आएगी. मेरे से बात कर लो सिंगल चाइल्ड के बारे में. वॉच Kathy and the agent. Okay, I don't know. Okay. Hello, ma'am. I hope you're doing well. Actually, my question is stupid, but can you please give me some tips on how I can convince my parents for a solo trip? Text me, Rishabh. I have this nice resource which might just help you. DM me on Insta and send the snapshot, so I'll give you something. देखो if those tricks work. Okay. नहीं मैम, पता नहीं क्यों जब भी क्लाउडी वेदर होता है मेरा उस दिन मूड ऑफ रहता है, पता है, और किसी के साथ होता है. हाँ, इवन आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ रेन्स. रेन्स लाइक बॉदर मी, लाइक आई फील लाइक इतना अंधेरा, ग्लूमी. So I like it when it's a bit sunny and all. So it's normal, but then we should not ruin our day depending on weather. तो फिर तो गए ना. रोज अगर से weather ठीक नहीं रहेगा तो हम लोग है खुश नहीं रहेंगे. I know Rohit, you have raised your hand. Unmute yourself ना बाबा, if you have a question. मैंने unmute करने की कैपेसिटी सबको दे दी है. यहाँ पे कैपेसिटी नहीं, क्या बोलते हैं उसको? क्या? What am I looking at? Anyway, forget it. I'm too tired to come up with a word.
We are really proud of your story. As much as we know you're a good example, and we appreciate you sharing your shortcomings to inspire us. Proud of you. Thank you. So sweet, theoretical hub. Ma'am, setup tour. काय का setup tour? कुछ नहीं है यहाँ. Like literally पानी है. ये desktop है, वो भी बेचना है. And मेरा चश्मा है. If that helps. चश्मे का टूर चाहिए. मेरा चश्मा है. मेरा दूसरा फोन है. मेरा actual फोन है. और ये मेरा कार वाला माउस है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मेरे एयरपॉड्स पड़े हुए हैं. मेरा लिपस्टिक पड़ा हुआ है. ये फैन यहाँ है. टिश्यू बॉक्स है. कुछ नहीं. सेटअप टूर का सेटअप टूर. हाउ मेनी स्क्रीन्स यू यूज? या एक ही स्क्रीन है. डेस्कटॉप यूज कर रही थी. और यहाँ पे मैं जनरली बैठती नहीं हूँ. मेरा जो नया iPad है ना, उस पे मैं. अरे रोहित यार, तुमको चैट करनी है अगर से. इफ यू आर द सेम पर्सन, आई तुमको चैट पे लिखने लगता. ठीक है, हम देखते हैं तुम कौन हो. चलो चैट करो. चलो ऑन किया मैंने तुम लोग के लिए चैट. क्या होएगा? वर्स्ट केस तुझे बैन कर दूंगी. और प्लीज बच्चा लोग जो इधर अच्छे वाले हमारे बच्चे हैं, कोई गाली वाली कर दे, कुछ भी करे, इग्नोर करो. कुछ लोगों को और कुछ नहीं आता लाइफ में दूसरों को तंग करने के अलावा. लीव देम. दे आर नॉट मेंट टू बी. दे आर अनहैप्पी विद देमसेल्व्स एंड दे डू द रॉन्ग थिंग्स. या तो जब कोई बहुत दुखी होता है और खुद के लाइफ में कुछ जॉय नहीं होता, तो उनको दूसरों का जॉय लेकर उनको लगता है उनको जॉय मिलेगा. मतलब उनको दुख देके जॉय मिलेगा. ऐसा नहीं होता. हाँ पीयूष, हाय. मेरा वीडियो पिन नहीं है. ऑफ कोर्स पिन्ड है. व्हाट आर यू सेइंग? मैंने पिन किया है. रिमूव पिन लिखा हुआ है यहाँ पे. I have pinned myself. What are you saying? There is no other way. See, remove. अच्छा, spotlight for everyone. I'm spotlighting myself. Okay, ठीक है. See if this works. Thank you. Okay. Hello Piyush. Hello और रोहित. अभी अच्छा अभी ठीक है ना. अभी मैं स्पॉटलाइट हूँ. हमें तो वैसे भी स्पॉटलाइट में रहने की आदत पड़ गई है. Anyway, that was a very bad joke. But yeah, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ऐसे लाइटर मोमेंट्स लाइट के साथ, जो रिंग लाइट के साथ करनी पड़ती है. अच्छा हम कहाँ थे? हाँ, somebody was proud of me. They wanted to set up tour. ये भी okay ma'am. I'm 18 years old. I have dreamed to study masters, work and live in European countries, but I've self-taught that will I be able to achieve the goal because I'm broke. हम भी मिडिल क्लास से थे, उससे भी लोअर क्लास से. देखो लोन लेके भी जा सकते हो आप. ठीक है, सब लोग आजकल वही करते हैं. तो जाओ. तुम्हें कैसे पता चलेगा इधर क्या कोई कोई स्पेशल. तुमको सिर्फ पढ़ाई करना अच्छा होना चाहिए. ठीक है, फिर जाओ. और फिर लोग जर्मनी भी जा रहे हैं. मैंने तो सुना है जर्मनी इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ चार्ज. है ना, किसी ने लिखा था ना. और मैंने उस दिन भी किसी कोई रील देखी थी. तो या जाओ यार. व्हाई यू थिंक लाइक दैट कि जस्ट गो एंजॉय. और नहीं होगा तो क्या, अपना कंट्री जिंदाबाद, वापस आ जाना. ठीक है. हाँ देखो किसी ने लिखा यस इट्स फॉर मास्टर्स इट्स फ्री. जाओ. गो टू जर्मनी इफ यू कैन नॉट अफोर्ड कनाडा एंड ऑल ऑफ दैट. गो एंड स्टडी. अरे जब तुम बाहर जाते हो, जिनसे हो सकता है, मैं ये नहीं कहती करके सब लोग जाओ. आई एम नॉट पुटिंग लाइक मेकिंग पीपल फील बैड who don't travel. Like if you people remember my podcast with on ADHD, and she said she's never been out of Connecticut or wherever she was staying, not even to New York and Vegas or anything in their own country. लोग US में भी ऐसा होता है. तुमको मालूम है मैं जब भी US गई हूँ, people are like wow you travel so much. I'm like हाँ, I'm going to Houston. For them even traveling inside the United States of America is like a big deal. Okay, so बहुत लोग ट्रैवल नहीं करते, पर ट्रैवल करने से बहुत कुछ सीखते हैं यार. द एक्सपोजर यू गेट विद डिफरेंट कल्चर्स एंड कितना कुछ हार्श रियलिटीज पता चलते हैं. लोग जब हमारे साथ रेसिस्ट होते हैं, जब हमको खाने में तकलीफ होती है, इस सबसे इतना कुछ सीखते हैं ना. और इतना हम ज़्यादा पेशेंट होते हैं. हम कुछ काफ़ी कुछ सीखते हैं लाइफ में. ओह अच्छा, यू डू. वेयर there is no chat question. Chat was not active theoretical hub at that time. That's why. Please post your question again. Okay, somebody. हाँ मिला. हाँ मिला.
Okay, ma'am, a mutual friend of mine has chosen to stay in casual relationships after one heartbreak after a guy ghosted her completely. So that means it's a girl. Okay. Now, in the past 3 months, 3 guys have used her for nude calls, sex, kisses, and other sexual favors. All have left her. What do you think about the situation? Is she being used according to you? No, she is not being used according to me. She wants to do what she's doing. And not just she, the guys are also doing the same thing. And many guys also get into casual relationships. तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना तो मारो. अगर किसी लोगों को मारना नहीं लगता, किसी लोगों को लगता है ठीक है यार कैजुअल रिलेशनशिप में आओ, और वो खुद कर रही है, लुक्स लाइक उसका खुद को she wants to do it. So who are we to give gyan? करते रहो casual relationships, but be careful. It comes with a heavy price tag. One, it tells you that you're good enough only for bed and sex, and not to be a proper girlfriend or a relationship. Second, the danger of STDs and all of that, right? And third, you are going to obviously later on you're going to understand, and maybe this is her phase. Even if somebody broke her heart, that's no reason to give up on your desires to be in a good relationship. But having said that, this must be her phase, and she's कभी कभी और कुछ तुमको मालूम है कुछ साइट्स भी प्रमोट करते हैं. They actually want they say that कि to get over one relationship get into another one. कुछ लोग करते हैं, उनका रिबाउंड होता है. तो अपने अपने तरीके होते हैं. हार्ट ब्रेक ऐसी चीज होती है ना, सब लोग बहुत अलग अलग तरीके से डील करते हैं. तो लेट हर डील द वे शी इज. होपफुली व्हेन शी इज learned her lesson in a way that you'll still feel bad, like when, unless she's happy with this, maybe this is what she'll be happy with. Who knows? I don't know her at all, so how can I even. और किसी को जज मत करो whether she's being used or not. She wants this. She's doing exactly what she wants, and you have to set your boundaries. You can't blame the other person कि वो इंसान मेरे को यूज कर रहा है, पर तुम भी तो उस इंसान को यूज कर रहे हो by doing all this, and तुम ही तो उनको वेलकम कर रहे हो. If you do not filter the chaos that comes into your life, and then how can you complain about it? It doesn't work like that. So yeah, she'll have to take care of her own heart and body also, and be very careful. I hope she doesn't get into a wrong relationship or some guy who brings his friends and all that, and कोई गलत इंसान हो, rape भी, gang rape भी हो सकता है, तो be very careful. I mean, I don't know. One needs to be careful. It's not just girls, but guys also need to be a little careful. क्या अपनी जिंदगी की वाट ना लगा दो. मैम, और लोगों को एंटर करने देना या नहीं? हाँ, करने दो, चलो ठीक है. मैम आपके वीडियो पे नहीं हो गई, हो गया. हेलो पीयूष. हाय रोहित. पूछो रोहित, तुमको कुछ पूछना था. यस थॉमस. रेंट और अनदर थिंग्स आर और एक हर्ष एंटरिंग द रूम. दो हर्ष है हमारे पास. ऑब्वियसली वो दूसरा वाला आ गया, मतलब. ओके, रेंट and other necessary things are too expensive. It's almost अच्छा. Okay, I didn't know that. अच्छा, so this person who asked abroad वाला, तुम्हारे को फिर भी रेंट देना है, कॉलेज वाले पैसा हो जाए. ठीक है, so be careful. She becomes sad when a guy leaves. Of course she becomes sad after the guy leaves. तुम तो उसको तुमको क्यों इतनी चुल मची है without dating, without getting to know the person in first time पे ही तुम. If you're going to become that person, you will be known as that person कि यार she's not really into a date to get to know the person. She feels sad. Looks like she's not handling her stress well at all. She's doing all the wrong things. Tell her to take a break from dating. Tell her to not be so easy if she doesn't want to be. I mean, it's none of my place. I don't want to judge anyone. She thinks the romantic relationships are futile, but she's exactly. How can you not? That's what I just said. So, एक जगह पे you're feeling bad when you give sexual favors and the guy leaves, okay? But then you're feeling this thing too when they leave in a casual relationship. मतलब तुमको क्या चाहिए क्या? अगर से relationship में जाओगे, it is normal to go through heartache. If she is going to keep getting scared of hurting, then it's better not to get into relationships. And
looks like she's extra sensitive and this thing, but she's using all the wrong, doing the wrong things, which it might come to. And I have even made a video. लड़के प्रेग्नेंट नहीं होते पर लड़कियां होती है, ठीक है? तो बी केयरफुल यार, क्या कर रहे हो? एक वन, आई एम नॉट सेइंग अबॉर्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सपोज आप कर भी रहे हो, आपके बॉडी पे कितना इम्पैक्ट होता है? या तो इफ यू गो थ्रू द प्रेगनेंसी, देयर वाज दिस केस देयर this person DM'd me and they said maybe I'll go, I will keep the baby, but it's not fair on the child also. What if you're not financially well off? What if, why does the child have to live without the parent? Of course आजकल single parenting भी होती है, but थोड़ा सोच समझ के ये रिलेशन, ये जो ये डिसीजन, बहुत, parenting is a huge responsibility, so please tell her to be careful. And ये casual relationships, how do you know who you're sleeping with? That person could be sleeping with 1,000 other people. I don't know. I do not understand this at all. This thing. Sorry, I'm going to be little थोड़ा graphic में बात करूंगी, क्योंकि जो लोग ये करते हैं थोड़ा अक्ल लगाओ, किसका मुंह किसमें और किसका क्या किसमें. Can you imagine what if they are sleeping with people who have STD and all the other kind of skin infections? Or what are you all doing? I mean, दिल छोड़ो, बॉडी को भी तुम वाट लगाने वाले हो. एक ही तो हमको जान मिली है, क्यों? Why would you do that? Why are you so afraid of feeling hurt? In romantic relationships फिर भी समझ में आता है if you get sexual, but what is this casual relationship? And if you remember, there was this podcast when I did with Shweta, we both had discussed this. It leaves you empty, hollow from inside. You're jumping from one place to the other, trying to, find solace in the wrong places. So please tell your friend to handle a stress better. This is not going to be good for her later. Ma'am, I had a dream to study in good college, but due to some situations, I have to study in local college and sometimes feel very bad. अरे मैं भी तो लोनावला से आई थी यार. गौरव, क्या बोल रहे हो यार? इसमें गलत क्या है? और क्या तुम लोग ऐसा मत सोचो करके बाद में हम दूसरे कॉलेज में, ये टेम्पररी है जो भी है. मैंने बाद में पढ़ाई, बाद में जब मैं आई वाज 35 या समथिंग, आई वेंट टू सिंगापुर टू स्टडी. यू कैन आल्सो डू दैट यार. अभी के लिए कर लो. और कोई कॉलेज बुरा, ठीक है, कुछ कॉलेजेस में बेटर फैकल्टी होती है पढ़ा लिखाने का उनका. नो, आई विल नॉट डिसएग्री विद दैट. दैट वुड बी स्टूपिड ऑफ मी टू प्रिटेंड कि बट कभी कभी जिंदगी में जो फेज में हम होते हैं ना, उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. दिस इज सपोज टू बी पार्ट ऑफ योर जर्नी. डोंट रन अवे फ्रॉम इट, गौरव. इट्स ओके, एम्ब्रेस इट, एम्ब्रेस द लर्निंग, एम्ब्रेस दिस कॉलेज. दिल खोल के पढ़ाई करो, ध्यान लगा के पढ़ाई करो. और जस्ट बिकॉज पैसा नहीं है, डोंट इक्वेट education to paisa. I come from Lonavala, and I tell you that teacher, if you people remember the story of Sir Chakravarti and Sophia teacher and Rebecca teacher, हम लोग free education लेते थे. I come from a school where there was girls education was free, and that left such an impact on me, and look at what I am today. So don't dismiss छोटा टाउन, छोटा कॉलेज, छोटा नो नेम वाला. ऐसा कुछ नहीं होता. हमको जब हम में कुछ बात होती है ना, वो चिंगारी रखो, एक दिन वो फायर बनेगी. बट ऐसे नहीं बनेगी कंप्लेन करके, बैड फील करके, अरे दूसरे के पास क्या. कभी नहीं करते. तुम दूसरे गुड कॉलेज में भी जाते, फिर तुम उधर देखते, अरे मुझे अब्रॉड जाना था पढ़ने को, फिर कनाडा जाते, फिर बोलते नहीं मेरे को यूएस वाला कॉलेज मिलता तो कितना बेटर. कभी नहीं खत्म होता ये खिटपिट. डोंट डू दैट. फोकस. नाउ यू गॉट इन ना, अभी दिल लगा के पढ़ाई करो. This is not the full stop in your life. There is more. बाद में तुम कुछ कर लेना लाइफ में, कहीं और पढ़ना है, तुम और भी डिग्रीज हासिल कर सकते हो. एक बार कमाने लग जाते हो. मेरे भाई लोग ने पढ़ाई और काम साथ में किया था, ठीक है. My husband started working so early in life, so there is a lot you can do in life. Don't underestimate your power, and don't think this is your only chapter. बहुत chapters आने हैं. This is just part of it. Okay. Yeah, theoretical hub, leave her alone, let her learn her own lessons. We cannot teach. Some people are just impossible to teach. And इतनी भी चुल क्या मची है हर टाइम एक इंसान को रिलेशनशिप में. पहले अपने आप को सॉर्ट आउट करो एज अ सिंगल पर्सन.
So first sort out yourself as a human being, who you are, what you want, and then go into relationships. Okay. वॉइस इज लो. मेरे को तो ठीक से सुनाई, तुम लोग को ठीक से सुनाई दे रहा है बाय द वे? यस. ओके. सो आई थिंक इट इज जस्ट दैट. मैंने जिन्होंने भी कंप्लेन किया मेरे वॉइस के बारे में, प्लीज थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज करो. आई एम द गाय हु इज टू ट्रोल यू सिंस. वाओ. ओके. Okay, so this person, he's not given his real name. So this is what is written. I'm the guy who used to troll you since months, although that's not my real name. I know your real name is Sid, by the way. And I have come to talk and I do know. Okay. So I have come to talk and apologize to everyone. I promise it will never happen again. I just did it for fun by watching Zoom prank video on YouTube, and now I regret it. I hope you mean it. And I got a little emotional because तुम मुझे तंग करते हो, मैं फिर भी झेल लेती हूँ. But and like I said, I have not come from a family where we troll, we bully. We come from very humble beginnings और हमको कभी किसी के साथ बुरा नहीं सिखाया. So जब तुम करते थे ना, मुझे बहुत तकलीफ होती थी initial, but तुमने मुझे strong भी किया, to be very honest. So thank you for that. I remember reacting the first time. It bothered me so much. I spoke to my friends, I spoke to this one, I spoke to that one, and I was like, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हम इतने, like how can there be so much disparity here? I'm not saying I'm a saint or I'm God. No, I'm saying one hand I'm trying to do so much good. Okay, I have so much to help you guys, girls, guys, whatever, and then there is this spectrum of you who's trolling me for no reason. And that, it made me sad for the world, for the planet. But what the fuck are we earthlings doing to our planet? What are we doing to our kind, to the same species? It's so sad, right? कि हम इतने गंदे हो सकते हैं किसी को बिना रीजन. मैंने ऐसे नहीं करके तुम्हें, तुम किसी का खून कर दिया, खराबा कर दिया, फिर तुम किसी के पीछे हाथ धो के, पैर धो के, नहा धो के निकले हो. तो आई अप्रिशिएट योर अपॉलॉजी. बट मुझे बहुत बुरा लगा था जब तुमने मेरे बच्चों को, मतलब मेरे जो जूम पे अटेंड करते हैं, उनको इतनी गंदी गंदी गालियां दी है. So please don't do it again, and I hope you really actually mean it. I know it would be really, the thing is, I'm one of those like ever optimistic, hoping ki people will be like good and that you'll actually keep your word, because I respect that in a person. So let's see whether you come back and this is just a fake thing or whatever it is. So yeah. So thank you for changing. Thank you for your apology, and I hope you don't do it with anybody. And I'm very proud of you that you finally understood that what you're doing is wrong. Thank you for that. Okay, sorry YouTube family. I have not read my Zoom पे अटक गई. Okay, ma'am, ये वाला मैंने कर दिया था. On Instagram, people love ghosting. It satisfies the ego. पता नहीं Instagram की, okay, Gaurav is asking whoever that person, I want to ask what was the reason you were doing this? What was your problem? He said that he watched a YouTube video of trolling and he learned it from there, Gaurav. So yeah. Anyway, so कहाँ थे हम लोग? हाँ, ghosting तो Insta के यार सब जगह होता है यार, unfortunately. अरे मैम Discord पे भी हाँ कर रही हूँ बाबा, 14 को कर रही हूँ. मैंने once a month decide किया है कि Discord पे तो करूँगी, ठीक है? Pankaj, hi Pankaj, how are you? It is okay to take few months break in 20s where you don't focus on your growth or learning. Few months break. Well, if you're saying that you're taking a drop year or something, but फिर भी पढ़ाई तो करनी पड़ती है. But कर सकते हो if you can afford it. Not everybody can afford it, and if you can live with the consequences. But yeah, you can. But कभी कभी क्या होता है ना, जब हम लोग ब्रेक लेते हैं फिर वापस से वो स्टार्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो मंथ्स थोड़े ज्यादा हो गए. But depends on your personality. Each person is different. So I would say if you think you are one of those people who can manage, and after that you can get back on the track and not get like sidetracked from your goal, then क्यों नहीं.
पर ऐसा क्या हो रहा है कि तुमको फ्यू मंथ्स ब्रेक लेना है, ऐसा कौन सा तुम ये कर रहे हो? तो या ओके मैम, एवरी टाइम आई फील इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स. ओके Harsh, contact me on DM, send me this snapshot, and I'll give you something. There is no one way to fix our insecurities. Always remember, I will have something, you will have something, this one will have something, that one will have something. Okay, all of Yes, us ma'am. have something which will be not so great. Whether it's your looks, whether it's the way you talk, whether it is whatever. Okay. मैं भी जब लोनावला से आई थी, आई हैव टू टेल यू दिस, तो I married a guy who was abroad, like he used to live abroad, and he was 9 years older than me. So when I came into that light, I'm like, लिटरली मुझे गांव वाली बुलाते थे, ठीक है, दे लाइक लोग फॉन्ड्यू खा रहे हैं और मैं बोल रही मुझे दाल चावल चाहिए, लाइक मुझे तो नहीं खाना ये, एंड यू नो आई डिडंट नो हाउ टू ड्रेस अप, आई लुक लाइक क्रैप, एंड so I was feeling like wow, ये लोग मेरे से एक तो I stayed in people's houses when we used to travel with my husband. He used to have very rich family members, and I used to feel, क्योंकि मैंने तो कभी देखा ही नहीं है ना ऐसे घर, ऐसा शहर, and direct Hong Kong और फिर जकार्ता. It was so difficult, and then I met these colleagues के wives, and I used to feel कि मैं अपना एकदम कभी बाल नहीं बनाए, कभी कुछ खास मेरा कभी ड्रेसिंग सेंस नहीं था, as you people know that my mom and my parents separated, so I didn't have like family to say कि गाइड मी. जैसे मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, मुझे किसी ने नहीं किया था, तो मुझे राइट रॉन्ग ड्रेसिंग सेंस, बोलने का सेंस कुछ नहीं था. एंड पीपल यूज्ड टू से लाइक आई ऑलवेज डिडंट हैव अ फिल्टर, वो अलग बात है, बट तभी तो मुझे और भी नहीं आता था कैसे बात करना है. I didn't know how to conduct myself with people. But then, dheere dheere, I worked on myself. So whenever you have something that you're insecure about, you first ask yourself, is it something you can change? Like, I know people जिनको अपनी नाक नहीं पसंद, किसको अपनी हाइट नहीं पसंद, तो ये नाक की फिर भी सर्जरी हो सकती है, ठीक है, एंड आप फिर हाइट का कुछ नहीं कर सकते. तो फर्स्ट see कि is it so bad कि आप you cannot live with yourself, because there are many people who will not be. Look at Ambani for that matter. I always give, this is the best example I think in this world needs, that look at the amount that guy has, forget not just money, even the respect, even look at Ratan Tata for that matter, the amount of respect they have earned. प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की है कि हम सिर्फ वो बॉलीवुड वाले लोगों को देखते हैं और हमको लगता है दिस इज व्हाट वी शुड लुक लाइक. ये जो एड्स के परफेक्ट फिल्टर्स वाले लोग जो होते हैं, हम उन्हीं को देख के लगता है कि ऐसे हम दिखने चाहिए, गोरे चिट्टे, टॉल, गुड लुकिंग, परफेक्ट नोज, परफेक्ट हेयर. दैट इज अ फेक सेंस ऑफ reality. Come out of that, then ask yourself, if it, like I just had a client the other day, and he's how he's 5'8" or something, he told me, I forgot, and he's like super skinny, 40 kg something, and he has some issue with his head, and that is also a problem. So this is the thing कि आप क्या चेंज कर सकते हो, आप क्या नहीं चेंज कर सकते. अगर से चेंज नहीं कर सकते, there is no other way but to tell you, you have to start accepting it. The day you rise in your own eyes, that day all this will not matter. अभी देखो, मेरे से बेटर काउंसलर्स होंगे, मेरे से बेटर लुकिंग होंगे, मेरे से ज्यादा पैसा होगा, मेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, मेरे से ज्यादा बहुत कुछ होगा लोगों के पास, पर मैं देखती ही नहीं हूँ. मैं अपने आप को, मैं सोचती हूँ दिस इज मी एज अ यूनिक पर्सन. देयर इज नो अदर रचना दरियानी. Okay, they might have my same name, but they cannot have my personality, they cannot have my voice, they cannot have my face, they cannot have my heart. So you have to remember that whether it is your IQ, whether it is your EQ, whether whatever you have, first learn to be comfortable with who you are. Work on your self-worth, your value for yourself. We are all valuable in our own way. But problem ये है कि हम हमेशा दूसरों को देख के चाहते हैं कि वो हम बने, पर वो लोग भी किसी और को देखते हैं, फिर वो लोग भी किसी और. कब खत्म होगा यार ये नॉनसेंस. सो तुमको अगर से इनसिक्योरिटी है, फर्स्ट देखो, जैसे कुछ लोग जो ओवरवेट होते हैं, उनको इनसिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि पूरी दुनिया उनको फैट शेम करती है, ठीक है. तो हमको
समझ में आता है कि उनको हमने मजाक नहीं उड़ाया। पर जो लोग वेट बिल्कुल लूज नहीं कर सकते, तो फिर वो जिंदगी भर दुखी रहेंगे, क्योंकि वो दे हैव नॉट कम टू टर्म्स विद कि हे लिसन, आई कैन नॉट फकिंग लूज वेट, but I'm going to love myself and I'm going to dress the way. I have some friends actually. They are overweight, but they wear what they want. They're like, fuck the world, I don't care. मैं कोई अच्छा लगता मैं पहनने वाली, ठीक है? तो वो वाला जो बिंदास एटीट्यूड होता है ना, वो तुम्हें लाना है। अपने इनसिक्योरिटीज पे तुमको कंट्रोल, किसका फोन था, किसको कंट्रोल करना है तुमको? फर्स्ट अपने आप को पूछना है, क्या मैं बहुत ज्यादा पतला हूँ, मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हूँ, कैन आई बिकम फिटर, am I do I not speak so fluently English, then English classes ज्वाइन करना। अगर से बहुत ज्यादा शाय इंट्रोवर्ट हो, लोगों के सामने बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट यू वांट टू वर्क ऑन योर skills, then you join a public speaking class and you practice more. So find out what exactly are you insecure about. You cannot be insecure about the entire you, because then you're too uncomfortable being yourself, and that is not a good thing to do, because no matter what you do, there'll be always somebody in some department who will be better in your eyes. मेरे हिसाब से तो मैं तो ग्रेट हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि तुम लोग ऐसा देखते हो, मैं किसी से अपने आप को कम समझती नहीं हूँ। लाइक आई रिमेम्बर जब इनिशियली मैं श्वेताब, आज मैं किसी क्लाइंट को भी बोल रही थी, जब मैं इनिशियली श्वेताब के चैनल पे आई थी, सब पूरी दुनिया, कुछ लोग तो फॉलो करने लगे इमीडिएटली एंड दे लाइक्ड मी एज अ पर्सन एंड ऑल दैट, बट मोस्ट ऑफ देम वर सो बिजी कंपेयरिंग मी विथ हिम, राइट? ये नहीं देखते कि इंसान अलग है, जेंडर अलग है, जनरेशन अलग है, अपब्रिंगिंग अलग है। मैंने इतनी पढ़ाई कभी लाइफ में की नहीं है, मैं आती हूँ एक विलेज से, बट जो भी मेरी इंटेंशन अच्छी थी, बट सोचो कि दुनिया का काम ही है ये करना। उन लोग सोचते नहीं है तुमको कैसा फील होने वाला, तो तुम क्यों नहीं सोचते? वो क्या सोचते हैं, इतना हम लोग को मैटर करने लगा तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे, ठीक है? इट लाइज विद इन अस, फॉरगेट व्हाट द फकिंग वर्ल्ड सेज, दे हैव नथिंग बेटर टू डू। उनके खुद के बथेरे इनसिक्योरिटीज होते। स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीबॉडी, बी प्राउड ऑफ हु यू आर, ऑफ योर जर्नी, and whatever you can try to fix. Yes, there's nothing wrong, just like we do our hair, we wear better clothes, like that on your personality also you can work on yourself. एक second, मेरी बहन का मैसेज है, I need to see if there's something urgent. Okay, got it? अच्छा, Yes, ma'am. okay, the same person who was saying that he'll never troll me and bully me, and he's written again, your kindness makes me remember of my science teacher from school. You are exactly same like her. That's where I melt down. I hope you forgive me. Yes, I forgive you, and please don't do it again. Not to me, not to anyone. Focus on your life. ठीक है? गौरव is written, आपके जितनी kindness और आपके जैसा heart किसी के पास। Thank you गौरव। अच्छा, just 1 second and let me read this. Ooh. मैं अभी देखो हम लोग कितना लाइफ यू नो ग्रांटेड लेते हैं, एंड मेरी अभी स्कूल फ्रेंड को, हमारा एक स्कूल ग्रुप होता है, उसको अभी ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ, मेरी एज की है, मेरे स्कूल की मॉनिटर, मेरे क्लास की मॉनिटर होती है। इसलिए अपना लाइफ ग्रांटेड मत लो, अपने पेरेंट्स को ग्रांटेड मत लो, अपनी फ्रेंडशिप्स को, अपने हर चीज में थोड़ा you know we eat what the fuck we want, we don't exercise, and it's so just take care of your loved ones, take care of your health. We have one life, use it well, okay? अच्छी चीजों के लिए यूज करना। सॉरी पीपल, एक सेकंड, जस्ट ओके। with 19 diseases, no blood disease like hepatitis. Okay, she might need blood. So our group is discussing that. I'll read it later. अभी तुम्हारे साथ chat कर रही हूँ तो I cannot. Okay. जय श्री राम हर्ष, theoretical जय श्री राम. Okay. ब्रैड के हेल्पलाइन क्या होता है पता नहीं. Very good live teaching session. Thank you Aryan. CA. Om Namah Shivaya. Ram Ram Yuvraj Bhai. I think these sessions are life saving and life changing. Thank you Aryan. Very rare to see school relationships go end up. Yeah, very rare. It's very rare. बहुत कम. मेरे स्कूल में एक बार हुआ था.
मेरी अभी फ्रेंड के साथ, but most of us had breakups, but she married the guy she was with. How did I develop this progressive mindset despite being 50 years old? So it all stems from what you मेरे लिए, I will not say सब लोग करते हैं, because I can see मेरे family में ऐसा सब लोग नहीं, मेरे जैसे नहीं सोचते. Even though similar mindset, similar चीजों से हम सब siblings भी went through that, but I grew because I think मैं पहले से मेरा mindset थोड़ा different था. मैं हमेशा से rebellious थी, and as I think it really helped me getting out of India. It mattered. I used to, and also I think because I married a guy 9 years older than me, मेरे में maturity बहुत जल्दी आ गई थी. And I was only 20 when I got married. So जब शादी, बच्चे और and I told you my also what was one of the reasons is my parents separated when I was young, right? So we experienced, we all siblings experience pain in very various different ways. कुछ लोगों को ज्यादा फर्क पड़ा, कुछ लोगों को कम फर्क पड़ा, पर मेरे में एक सोच वाली जो मैं जो सोचती हूँ ना, लाइक मुझे टाइम लगा. आई विल नॉट से कि आई वाज लाइक दैट एज अ टीनेजर, बट व्हेन आई ग्रू अ लिटिल बिट and then I understood, I said shit man, which I even tell today's children when they come to me, my parents are doing this, I'm like, you know, हमारी गलती होती है, हम उनको सोचते वो इंसान ही नहीं है, वो भगवान है, वो कोई गलती नहीं करते हैं. तो सबसे पहले मुझे मेरे पेरेंट्स को समझना पड़ा, मेरी स्टेप मॉम को, मेरे ओन बायोलॉजिकल मदर को, मेरे डैड को. एंड आई विश आई हैड this Rachna was there at 22. क्योंकि क्या हुआ था कि जब it's not a very nice thing, but I'll just explain to you all कि जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं ना, हम उनको बहुत ग्रांटेड लेते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते क्योंकि हमारे पास वो टाइम बैंडविड्थ ही नहीं होता, और हमारे पास ना यूट्यूब था, ना किसी से बात करते थे, तो ये बुद्धि तो वैसे ही भ्रष्ट थी, राइट? कि you don't have like people to make you understand and see this what I am teaching you all, right? To understand your parents, where they're coming from, where your girlfriend is coming from, and ये जो सोच होती है ये बाद में आती है, राइट? बट अभी तुम लोगों को लकीली तुम लोग यूट्यूबर्स को, अच्छे वालों को फॉलो करते हो, एंड ओके यू नो अच्छे वाले यूट्यूबर्स फॉलो करते हो, इंस्टा पे जो भी आप लोग करते हो, आप लोग कितना कुछ सीख रहे हो, राइट? और हमको वो चांस नहीं मिला था. सो ये देन आफ्टर माय फादर पास्ड अवे, जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे आई थी, बायोलॉजिकल मॉम, स्टेप मॉम, हाफ ब्रदर्स, ये सब, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड उनको देख रहे थे, हमको भी, मुझे भी. आई रिमेम्बर व्हेन मेरे डैड की बॉडी लेकर आए थे, मैं रोई नहीं थी. आई वाज लाइक, my younger brothers, they were only like 4 and 6 years old, and I was like, I cannot cry baba, इनको कौन देखेगा, you know, already सब लोग रो रहे हैं and all that stuff, so I need to be very like put together, which was quite mature for a 22-year-old, कि I have to think like that. But having said that, then जब मैं वापस आई इंडिया से, जकार्ता वापस आई, then I was like, मेरा 1 साल गया रोने में मेरे डैड के पीछे. So वो मुझे बाद में स्ट्राइक हुआ, क्योंकि जब you know you find out that your father had this ailment, that ailment, and वो maturity फिर over the years आई कि oh shit, you know, कि काश जो मैं ऐसे अब बोलती हूँ. एंड so all of you all थोड़ा किधर गया पानी, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? थोड़ी मेच्योरिटी से. हमारे पेरेंट्स दे ट्राई टू डू द बेस्ट दैट दे कैन. आई एम नॉट सेइंग ऑल पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स एक्चुअली शिटी होते हैं, और ऐसे शिटी पेरेंट्स को मैंने कितने बच्चों को देखा है जो इतने दुखी है अपने पेरेंट्स से और कुछ कर नहीं सकते. तो अनफॉर्चुनेटली मैं मदद तो नहीं कर सकती, बट जिनके पेरेंट्स इतने बुरे नहीं हैं और डांट लगा देते हैं, या तुमको याद रखना है उनको बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं लाइफ में. तुम्हारा प्रेशर, खुद के हेल्थ का प्रेशर, काम का प्रेशर, बॉस किट किट कर रहा है, यू नो दे गो थ्रू हेल ऑफ अ लॉट. पैसे कहाँ से आएंगे, जब बीमार होते इतना सारा खर्चा एक टाइम होता है. सो दिस मेजोरिटी जो मुझे आई है ओवर टाइम आई है. एंड यस, बट आई हैव सीन दैट मेरे उम्र के लोग
Okay, they are not so progressive in thought, and I sometimes get like, I'm like, what are you saying? Like, how can you say that? It's so racist, or it's so sexist, or it's so, like, they do not understand the LGBTQ community, or they don't understand what is porn addiction. And I'm like, wow. So that day when I did a porn addiction wala podcast, I had gone out for dinner, and I swear there were people older than me who didn't even know what happens if one is addicted to porn, or that how many people are involved. And then my friend's son was there. He says, and he was younger generation. He's like, he calls me auntie, of course, and he's like, auntie, you're the coolest parent. You know, we cannot talk to our own parents. And सारे मेरे जो बच्चों के friends हैं, they are like, wow, we can talk to you about anything. कुछ उनके बच्चे भी मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए. Of course वो एक रिलेशनशिप का दायरा होता है जो नहीं कर सकते, तो I try not to take very close friends के बच्चे, क्योंकि वो थोड़ा different हो जाता है. But yeah, I think I have forced myself to become this person and to have an open mindset, to understand. And that's why you can be a counselor, because if you are very, तुम्हारा क्लोज माइंड होगा, तुम दूसरों का दर्द, दूसरों की किस सिचुएशन से आते हो, तुम कभी नहीं समझ पाओगे. तो मैं क्रेडिट तो इतना नहीं ले सकती, क्योंकि बहुत सारी चीजें वेंट इनटू मेकिंग this person who's sitting on YouTube and talking. It's practice, it is life ke experiences, it's the people in my life, and it's my own nature who forces me to see it in a different way. Yes, sometimes I'm not the greatest, sometimes even I have a closed mind on certain topics, right? I'm like, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे. वो मेरे फ्रेंड्स के साथ आर्ग्यूमेंट होती है, बट मोस्टली जब तुम लोग के साथ रहते हो, मुझे बहुत अपने आप को सेंटर्ड रख के सोचना पड़ता है, नहीं हर एंगल से बात करो. एंड यस, आई कुड से सर्टेन स्टूपिड थिंग्स, एंड व्हिच इज नेचुरल, इट्स पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन. ओ, बीइंग ह्यूमन मैंने जो पहना है, तो आई लव दिस फ्रेज, बीइंग ह्यूमन. सो ओके, किस क्या नेक्स्ट था? तो आई होप squad, whatever, I answered it. Why did you commit yourself if you're planning UPSC? I don't know who's this question, but okay. Hello, ma'am. What are the unhealthiest habits one can have ruins one mental health in your opinion? Okay. तो ये स्क्रीन छोटा बड़ा क्यों करता है? So एक मिनट, किसी ने कुछ लिखा है. Okay, Harsh. I pray to God. Okay, Gaurav has written, I pray to God that the person who told you undergoes same feeling. नहीं, it's okay. ऐसा क्या, बच्चा है यार, तो रिवेंज और नेगेटिव से कुछ नहीं होगा. वो सॉरी बोल दिया ना उसने. सो आई होप, या मेनी अ टाइम जब उसने मुझे ट्रोल और बुली किया, मेरे लाइक कितनी भी मैं अच्छी हूँ, कितनी भी, जब वो मेरे बच्चों पे नाम लेता था ना, और गौरव तुम थे राइट, मेरे को कोई गाली देता, बच्चे मतलब मेरे एक्चुअल बच्चों के पे भी उसने गंदी गंदी आइडियाज बनाया है कि योर डॉटर स्लीप्स अराउंड, योर सन इज दिस थिंग, योर डॉटर इज अ, तो वो लाइक लिटरली माय हार्ट वाज, एंड आफ्टर द पॉडकास्ट मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा होता था, क्योंकि ठीक है तुम लोग को डीएम में वो पर्सनली गाली दे रहा है, बट to see Zoom IDs made out of your children's names and to call them names. अरे तुम लोग को पता नहीं मेरे बच्चे कितने अच्छे, टचवुड. So दूर दूर तक किसी को हार्म नहीं करते. अभी कल जिनको पता नहीं, इंस्टा पे एक किसी ने, और प्लीज बी केयरफुल, किसी ने अगर से तुम्हें इंस्टा पे डीएम किया या डिस्कॉर्ड पे या यूट्यूब में किसी ने आपको बोला कि दे आर रचना मैम्स रिलेटिव्स, प्लीज मेरे रिलेटिव्स ऐसे नहीं होते जो आपको गाली देंगे, जो आपको तंग करेंगे या समथिंग लाइक दैट. प्लीज अपना दिमाग इस्तेमाल करो. डिस्कॉर्ड पे ये इंसिडेंट हुआ है जहाँ somebody told them that they came, that I sent them to them or whatever, they are my relative. प्लीज, मेरे 2 बच्चे हैं, उनमें बहुत अक्ल है, उन लोग ये सब स्टुपिडिटी नहीं करते हैं, तुमसे भी छोटे हैं, पर हमारे घर में ऐसी अपब्रिंगिंग है ही नहीं कि हम किसी को ट्रोल, बुली या किसी भी तरह से दर्द देने के लिए हमारे बच्चों को हमने बहुत या ऐसा नहीं करके बच्चे हमारे गलती नहीं करते, बट हमने ये सिखाया है कि डोंट डू सच स्टूपिड थिंग्स. ठीक है, तो प्लीज डोंट ट्रस्ट एनी रैंडम पर्सन हु सेज दैट दे आर रिलेटेड टू मी. ओके, हम कहाँ थे? अब ब्रो इंतकाम ले लो.
हाँ सॉरी क्वेश्चन तो कुछ और था, मैंने कहा चली गई. What are the unhealthiest habits one can have ruin one's mental health in your opinion? Okay, unhealthiest habits when it comes to mental health: not exercising, one; not meditating, two; three; not being patient. Because I think most of us all the time, the reason we look for substance abuse and we smoke cigarettes and we like उस दिन एक बच्चा बहुत अपसेट था, तो मैं तो आज से स्मोकिंग स्टार्ट करूंगा, एंड लाइक है ये ऐसे करना है करो, बट सेंस कहाँ? तो थोड़े पेशेंट रहो. अगर से कुछ लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा पेशेंस बहुत जरूरी है. और इट्स वेरी one of the okay, so there are two things, right? One is the positive mindset, one is the negative mindset. अभी ज्यादा पॉजिटिव कौन हो सकता है? मतलब लाइफ में दुख हो रहा था सारा टाइम, यू कैन नॉट से वाओ लाइफ कितना ब्यूटीफुल है, वाओ मैं कितना खुश हूँ, मर रहा है कोई पर तुम खुश हो, नहीं. तो ये नहीं हो सकता. रही बात नेगेटिविटी की, बहुत ज्यादा भी, जैसे एक एक पर्टिकुलर क्लाइंट है, बहुत आई मीन ही इज अंडर डिप्रेशन, बट आई हेल्प्ड हिम विद counselors, I helped him with a psychologist. I said the psychologist gave him a psychiatrist, and just constantly complaining. I'm like, you have to take responsibility for your life, even if you are depressed, okay? And somebody is helping you so much. He's like, लोग मतलब ही ऐसा, मैं तुझे रोज मदद कर रही हूँ, तेरे DMs पे DMs आते हैं, फिर भी I'm there. I said that psychologist helped you, that psychiatrist is helping you with 100 रुपया. I'm like, there's only that much you can. So ये जो constant complaining की जो attitude होती है इंसानों की, वो नहीं करना है. वो mental health के लिए अच्छा नहीं होता. हर चीज को बड़ा चढ़ा के देखना वो अच्छा नहीं होता. हम लोग अपने पेन को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं. हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम बहुत उसको ज्यादा बड़ा चढ़ाते हैं, पर जो हमारे लिए कोई और करता है तो हम उसको मिनिमाइज करते हैं. तो ये जो हैबिट्स है ना, हमको सीखनी है कि, और हम बहुत ज्यादा अपने आप को विक्टिम बनाते हैं, बहुत पिटी करते हैं, मेरी लाइफ कितनी खराब है, मेरी लाइफ इतनी गंदी है. हाँ, कुछ लोगों की सच में बहुत खराब होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ अस, yes, we all will have parental issues, finance issues, छोटा घर, पढ़ाई का चांस अच्छे कॉलेजेस में नहीं होगा, बहुत कुछ होंगे लाइफ में इश्यूज, बट हमको हर चीज को इतना बुरी तरह से नहीं देखना है, नहीं तो हमेशा दुखी रहेंगे. So these are on top of my head, just whatever came to me. I'm just telling you, it's very important to have a solution based attitude. That is very important. Not to always say, अरे प्रॉब्लम है, अरे बाकी क्या अच्छा चल रहा है लाइफ में. बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारा टाइम नायक नहीं करो अपने लोगों को अराउंड यू, और अपने दिमाग को भी इतना, रोज कचरा जैसे घर में साफ करते हो, दिमाग का कचरा साफ किया करो, बेटर होंगे. एंड इट्स अ एवरीडे थिंग, इट इज नॉट वन डे. एवरी सिंगल डे यू हैव टू लर्न टू अंडरस्टैंड एंड रीफ्रेम एंड अंडरस्टैंड कि अच्छा, आई एम डूइंग दिस not so well. It might be just for 1 hour, that's okay. But if you're constantly doing it, if you're constantly complaining and nagging and you have a pessimistic behavior and everything, हर चीज को किट करते हो, लोगों को ताना मारते हो, ये सब चीजें आपके भी मेंटल हेल्थ के लिए नहीं, और दूसरे का तो दिमाग खराब ही हो जाएगा. So yeah, try to, I hope, I must have missed some points, but this is like I cannot go like so much. थोड़ा सोचना भी पड़ता है. Okay, Om written, love you ma'am, कैसे हो आप? I'm good. Om, thank you so much. It's been 17 days without her after breakup. It was so tough in the beginning, but now I'm in good state. I think, I hope you remember my name, Mark Paul. Yes, I sort of remember, not very distinctly. So I'm glad. 17 days, very soon 27 days, and then 37, then 47. धीरे धीरे आगे जाओगे आप, ठीक है? Don't worry. मैम आपके जैसे पर्सनालिटी कैसे बनाए? ओवरनाइट नहीं बनती ये. जैसे पत्थर से मूर्त बनती है, हम भी शेप फॉर्म और इवॉल्व हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे सोच से, हमारे नेवर गिव अप एटीट्यूड से. और सी, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये रचना दरयानी अलग रचना दरयानी, एज एन ये सॉर्टेड वाली रचना दरयानी लग रही है. तो तुमको लगता होगा करके, वाह हम कितने नॉट सॉर्टेड है, मैम कितनी सॉर्टेड. ऐसा नहीं है यार, मेरे भी बुरे दिन आते हैं, मैं भी बहुत स्ट्रेस हो जाती हूँ कुछ. बट यस, बट ओवर टाइम, बिकॉज आई टोल्ड यू, माय डैड वाज द काइंड कि हर बात का स्ट्रेस लेते थे डैड. तो आई हैड टू एक्चुअली अनलर्न ऑल दोज थिंग्स, एंड आई हैड टू टेल माय सेल्फ, ओके ज्यादा टेंशन मत ले,
ज्यादा इतना ये नहीं करना चाहिए, ज्यादा हमने लाइफ में फ्यूचर में नहीं सोचना चाहिए, पास्ट के में नहीं जीना चाहिए, ये अपने आप को मैंने सिखाया, ठीक है। सो इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ ग्रोथ, बट आई डोंट थिंक आई एम लाइक अ परफेक्ट पर्सन एंड डोंट सी मेरी जैसी पर्सनालिटी कैसे बनाओगे, क्योंकि तुम अपनी पर्सनालिटी बी प्राउड ऑफ हू यू आर, यस यू कैन टेक फ्यू थिंग्स कि मेंटल हेल्थ रखने के लिए एक सोच अच्छी होनी चाहिए इंसान की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर से तुम उस पे वर्क करोगे यू विल बी मच हैप्पियर इन लाइफ। एंड यस आई हैव माय बैड डेज, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड ऑन डेज एंड I think I'm not so perfect to be around, but that also I love about myself. I don't look at myself and say कि अरे यार इतनी खराब है, like ठीक है यार, है ना, कुछ चीजें हो जाएंगी ठीक। I'm not always perfect, I'm not always bad, I'm not I love myself as I am. And yes, can I be better? Yes, of course. Do I want to? Yes, why not? But if I'm not also, I'm not very hard on myself. मेरे पास आई थिंक थोड़े ही पॉइंट्स है जिसपे एक्चुअली सोचने बैठूं तो ऐसा कुछ मेन चीज मुझे ध्यान में नहीं आता कि एट 51 व्हाट वुड आई लाइक टू चेंज अबाउट माय सेल्फ। आई थिंक in 1 year what I used to not be able to do is say no to especially the people who DM me in real life। मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, उनका अलग बात है, उनके साथ थोड़ा तो वो होता है, but I was seeing that it was affecting my mental health of constantly replying to DMs, of constantly being available for people. And like, I think whoever is here knows that yesterday was, and that person said, check your DM. And I told that child, I'm busy. And that's what I was not doing at least 6-8 महीने पहले मैं नहीं कर पा रही थी। तो मुझे वो पर्सनालिटी में मेरे लाना था कि how do I switch off? How do I not be so, it's good to be prompt, but not at the risk of losing your mental health and your physical health. I saw myself that I was exhausted. So अब मैं क्या करती हूँ, अभी भी मेरे I think 10-15 DMs पड़े होंगे, पर मैं इतना हाइपर नहीं होती जितना मैं 1 साल पहले होती थी, क्योंकि 1 साल पहले ही तो मैं सोशल मीडिया पे आई थी। तब मैं तो पागलों की तरह, आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आई वेंट ऑन श्वेताब्स चैनल, लिटरली एवरी सिंगल डे 40 to 50 DMs आते थे, अभी नहीं आते इतने। तो आई बिकेम लाइक, कभी लाइफ में इतने DMs नहीं देखे हैं। तो आई हैड दिस एंड आई एम अ वेरी प्रॉम्प्ट एंड पंक्चुअल पर्सन। So it was, oh my God, I drove myself nuts to live up to the expectation of people। अरे मेरे लिए वेट करते हैं, मैं तो है, मैं हूँ क्या हूँ जो मेरे लिए लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, तकलीफ में हो तो मैं मदद जरूर करूंगी। एंड किसी ने अर्जेंट लिखा तो इवन ड्यूरिंग माय हॉलीडेज किसी ने करेक्टली लिखा था, आई थिंक स्टडी सिंह यू रोट कि मैम मस्ट बी बिजी काउंसलिंग। हाँ, मैंने वो भी किया, बट अभी मैं थोड़ा सा आई थिंक दैट थिंग आई हैड टू चेंज अबाउट माय पर्सनालिटी। And also I'm very straightforward, but lately I've been um, not I'm straightforward, yes, but I'm little more careful with people's feelings। Like I have things to say, but I चल छोड़ यार, जाने दे, मेरे बोलने से कौन सा ये। तो I'm a little extra careful। I've learned that इतना ज्यादा भी जरूरी नहीं है, let people be। I have to learn to let it go, even when they ask me for my opinion, I will, in my mind I'm processing how much am I supposed to say, how much। पहले ऐसा, मैं पहले बहुत ज्यादा frank, like बहुत ज्यादा like not to hurt anyone, I will never deliberately hurt anyone। मेरे में वो नेचर में मेरे है ही नहीं, बट फिर भी मुझे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, because people know that कि if they ask me something I'll be very very straight। सो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करते हैं मैं सच बोलूंगी, पर सब लोग पूरा सच सुनना नहीं चाहते ना, तो थोड़ा उसको शुगर कोटेड करना पड़ता है ताकि लोग ज्यादा हर्ट ना हो। सो दैट्स व्हाट आई एम आल्सो लर्निंग। सो या धीरे धीरे तुम भी सीखोगे, ठीक है। एवरी टाइम जब भी ओम भाई का नाम आता है देखता हूँ Zoom वाला खंड याद आ रहा। हाँ, वो वाला बबरे स्टडी सिंह होगा भाई, रात गई बात गई, राइट। अच्छा, हम लोग कहाँ थे? 1 मिनट यार, बच्चे लोग 1 मिनट में मैं बात करने में बिजी हो जाती, फिर मैं भूल जाती हूँ।
हरे कृष्णा मैम यूट्यूब पे ध्यान ध्यान दे लो मैडम, ये जूम वालों को प्रायोरिटी दे रहे हो। अच्छा सॉरी, नहीं नहीं मैं एक मिनट सॉरी, कहाँ थी यार? ओ आई एम सो सॉरी, माय गॉड कितना सारा मैसेजेस कहाँ है, कब आए? मैं तो हाँ अच्छा अभी इधर आई। ओके भाई रात्रि बात हुई, वेरी नाइस स्टडी सिंह भाई, कैन वी टॉक ओवर कॉल? टेलीग्राम पे मैसेज, हाँ ओम का 2 रुपया आया था। ओके मैम मैम 52 माइनर फ्रीक्वेंसी बीट्स काम करती है कि नहीं? मेरे पास, मेरे को पूरा डिटेल नहीं है, पर मैंने आई थिंक आई शेयर्ड ना on this one the new research. Just write to me yaar, I'll have to look for that. There is a particular frequency that works, the new research says, but I cannot remember. मैम शताब के साथ नेक्स्ट, अरे माय गॉड कितने बार सेम क्वेश्चन का फ्लेक्सिंग, नहीं आई एम नॉट फ्लेक्सिंग माय गॉड, व्हाट इज दैट टू फ्लेक्स? कौन सी बड़ी बात है? मैं अपने आप को फ्लेक्स करूं वो बड़ी बात है? ठीक है, फोन तो हमारे सामने पानी कम चाय है। आई होप आई यूज्ड इट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। ओके मैं भी दुखी हूँ, पर इसका मतलब क्या है? मैं भी दुखी हूँ, इसका मतलब क्या? मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, तो तुम दुखी हो? ठीक है अंजुल, हाउ कम यू हैव गैदर्ड सो मच ज्ञान? आई रोम अराउंड, मैंने पूरा बताया हाउ आई गैदर्ड, सो सेम क्वेश्चन ओम आस्क्ड मी, राइट? सो सेम द आंसर अप्लाइज टू यू। मैम जाना पड़ेगा, ओके बेटा कोई बात नहीं। हाय राकेश, नेवर सीन योर नेम बिफोर। And we don't talk about that here. Retract your message. I don't know who you're talking about. Oh, what's your opinion on Sandeep? And nothing. I have no opinion. I am opinionless. Ma'am is away from the controversy. How much azadi is enough in married life? Enough to have me time. Enough to say and not like be into each other's hair. You have your own time with your own friends, she has her own time. uh, that is very important. You can go for vacations with your friends and have your, even go alone, like I don't generally go, but I'm just saying कि कभी कभी इंडिया में मैं जब जाती हूँ तो कोई डिटॉक्स सेंटर या समथिंग, दिस टाइम आई प्लान, 3-4 साल हो गए नहीं गई, तो या आई वुड लाइक टू डू दैट एक्चुअली। सो आई डोंट टेक माई हस्बैंड फॉर दैट, मुझे अपने आप और गेट अवे फ्रॉम एवरीथिंग, सो दैट मी टाइम इज गुड। You can watch your different serials, you can do all those kind of things, but communication honi chahiye, ek dusre ke bare mein care honi chahiye, that's very important। स्पेस तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी इंसान के लिए स्पेस इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो माँ बाप और बच्चों के बीच में हो, लाइक हमारे बच्चे, वी गिव देम इनफ स्पेस। तो एक मिनट या मेरा लिप्स ड्राई हो, और प्लीज बोलो मत कि कैमरा ऑफ करके करो, फिर कैमरा ऑफ करते मैम कहाँ चले गए? तो ओके, यूट्यूब पे ध्यान दो, जूम वालों को एक्स्ट्रा करंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ओके ओम डिफॉल्ट जस्टिस, इट हैपेंस विद मी। अच्छा व्हेन यू गेट ट्रिगर्ड डू मास्टर्स फ्रॉम मी। ओके यू शी फॉरगॉट, नहीं आई डिडंट फॉरगेट अबाउट द यूट्यूब स्ट्रीम बाबा। मैम एक्चुअली आई हैव अ प्रॉब्लम, आई सेट वेरी हाई स्टैंडर्ड, आई अचीव मच मोर देन द मास, बट स्टिल since they were very happy, so I kind of be हाँ, तो तुम्हें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो गई है, और तुमको दूसरों को नीचे दिखाने में, जो इंसान खुश होता है और दूसरों की खुशी से अपना स्केल गेज तुम्हारा ज्यादा हो जाता है, तो समझ जाओ कि तुम में गड़बड़ है, सामने वाले में गड़बड़ नहीं है। तुम अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे हो, तुम दूसरों की वाहवाही, वैलिडेशन और अप्रूवल के लिए कर रहे हो। तुम दूसरों को, जो इंसान सामने वाले को खुश नहीं देख सकता, वो तुम्हारे दिल में bitterness आ गई है, fix that. If you do not fix it, you will always be an unhappy person, because always people will have, no matter what you do, you can be whichever place, and tomorrow you will start working, there will be certain projects you will do better, certain projects somebody else will be doing better than you. Sometimes you will get a raise, sometimes that person will get a raise, and you would say that it's unfair. But every time, if you constantly not be happy for the other person, it says more about you than the other person. So be careful. This trait of jealousy, this trait of always feeling less than others, it has to speak more about your personality, and that means your entire life is revolving around लोग तुम्हें कब ग्रेट समझेंगे, और अगर से सिर्फ तुम उसी से तुम्हें
ये मिलता है वो तो तुमको कोई भी गधा भी बना सकता है। तुमको कुछ जैसे तुम कितने सारे स्टार्स और सेलिब्रिटीज के इंस्टा देख, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट्स डिवॉइड ऑफ वैल्यू। बट तेरा बथेरे लोग लाइक्स एंड कमेंट्स मेरे वीडियो पे नहीं आते, बट चलो ठीक है, मैं तो मदद भी कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि डज इट मीन दैट दे आर डूइंग एनीथिंग ग्रेट? सो डोंट, sometimes you could do a lot. Like many people tell me, how do you run this stream with so few viewers, right? And I'm like happy even with this, because I'm not seeking validation approval from the entire जनता। मैं खुश हूँ इस दो लोगों के साथ बात करते, वो सेम इंसान ही मुझे क्वेश्चन क्यों ना पूछे, कभी कभी गौरव क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी ओम पूछ रहा है, कभी स्टडी सिंह पूछ रहा है, वही 4 लोग होते हैं, बट मैं खुश रहती हूँ, ठीक है। सो खुशी कहाँ से मिल रही है? यहाँ से अंदर से जब से नहीं आ रही है और तुम बाहर से लेने की कोशिश कर रहे हो, बी रेडी कि हमेशा ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि कोई ना कोई आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में बेटर होगा। फिर क्या करोगे? फिर कैसे खुश होगे? सो तुम जितना हासिल कर रहे हो अपने लिए हासिल करो, और अगर से जो भी कर रहे हो, यू जस्ट सेड दैट you have high standards, which is fine. You have high standards, that even I have high standards, but that doesn't mean that I now you call them the mass. Okay, that is where I have a problem. You are saying you're better than the others, so you're here, and the mass and the so-called इकोनॉमी क्लास तुम्हारे हिसाब से वो है और तुम यहाँ है। सोच फिक्स करो, नहीं तो यू विल नॉट बी अ वेरी लाइक पर्सन। पीपल हु आर नॉट ग्राउंडेड एंड नॉट हम्बल, एंड तुम्हें अगर से ह्यूमिलिटी की कमी है, आपको वैसे भी तुम कितना भी अचीव कर लो, रिस्पेक्ट is earned, and you want to earn people's respect, be a good person. Don't look at people's uh, money, looks, and their jobs or their profiles to determine are they worthy of being around you, or are they worthy as people. That's not a good way to look at people and other people. Okay, so अपने आप का पहले तो खुद को फिक्स करो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम तब वैल्यूएबल हो जब तुमने कुछ अचीव कर लिया, राइट? सो दैट व्हाट डज इट से अबाउट यू, that as a human being that's all you're worthy of, and the day you are not, the day you don't have a raise or you don't achieve this so called standard that you have set, that means you're faltu. Are you saying that? That's such a wrong way to look at life. So fix it, fix yourself, don't put people down, and don't think you're better than the others. We're all good in a lot of different ways. हम सब में कुछ अच्छा है, हम सब में कुछ कमी होगी, पर एक इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो, एक अच्छे इंसान बनो, दूसरों की मदद करो अगर से तुमने कुछ अचीव किया है। एंड इफ यू डू नॉट हैव ह्यूमिलिटी, व्हाट इज द पॉइंट? आजकल रतन टाटा को क्यों लोग याद करते हैं? इतना पैसा है, पर कितने लोगों के पास पैसा है, पर जब ह्यूमिलिटी की बात आती है, इंसानियत की बात आती है, उनका नाम सबसे ऊपर आता है। तुमको वैसे बनना है, ठीक है? क्या कर लोगे? किधर लेके जाओगे ये डिग्रीज और ये प्रमोशंस और ये पैसा, जब तुम जाने के बाद तुम्हारे बारे में लोग ये ना कहे कि तुम एक अच्छे इंसान थे, तुमने लोगों की मदद की, तुमने लाइफ में, दिस इज योर लेगेसी दैट यू लीव बिहाइंड। आई एम नॉट वेरी श्योर दैट, at least I don't call you successful then if you have not achieved this. Okay, so Arav, what is sad? I have no clue. Suffering from success, brother. Yeah. Yeah, success. Hi, B Music. Good to see you. Long time no see. Anywho, suffering because of expectation, which I were much more grateful for what I wish I was. Imagine being sad because you are IIT elect and sad because I couldn't make it. Yeah. So you need to work on your self-worth and your ओवर एम्बिशियस, एंड दूसरों को देखते देखते खुद लाइफ ऐसे निकल जाएगी ना, फिर आपको समझ में आएगा आप कितना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैम, संदीप सर इज ट्राइंग टू फाइल अ केस, यस आई रेड दैट ऑन प्रखर एंड नाउ इट्स गेटिंग बोथ, दे शुडंट बी डूइंग बोथ ऑफ देम। छोड़ो ना यार, मैं क्या बोलूं अभी। मैंने, आई डोंट नो संदीप, आई डू नो प्रखर, बट आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड, इट्स ओके। हाय करण संवाल, गुड टू सी यू हियर। हाय सक्षम, hi ma'am, long time no see. Yes, I'm good. I hope you are good too, Saksham. Okay, one second. कहाँ थे? Ma'am, can you talk about hidden prejudices that are hidden deep in my mind? Lately, I've been meditating and I've realized I have some. But you have not told me what you have, so I can reply to it. How do I know? Each human being is different. Can you suggest? Can you tell me what are you?
biased or you got a prejudice about or against, what do you feel, what are you thinking कि तुम किस तरह से सोचते हो, and how wide hidden तो नहीं रहा अभी क्योंकि तुम मेडिटेट करने के बाद भगवान ही जाने तुम्हें क्या, तुमको अचानक क्या दूर दृष्टि आई है, थोड़ा तो बताओ किस बारे में तुम ऐसा फील करते हो. ओके नेक्स्ट. ये भगवान फिर से मेरा 1 मिनट ऑन हो गया, ये घड़ी घड़ी ऑन क्यों हो जाता है. किधर थे हम लोग. मैम व्हाट कैन वन डू इन मी टाइम. अरे सो मच टू डू. व्हाट डू यू मीन व्हाट कैन वन डू इन मी टाइम. You can dance, you can sing, you can you can paint, you can learn sculpture or pottery, you can learn kickboxing, you can listen to music, watch comedy, watch Netflix, write, journaling, or even any kind of writing. Or you can go for a walk, you can go for a trek. You can spend time with family, not really family as in me time. तो see each one's. अभी me time मेरे लिए family भी हुआ. क्यों? क्योंकि जब मैं अभी बाली गई थी, it was my time, alone time था, but फिर भी with family. That is also because I'm away from my work. So some people call it like they feel that I know many of my friends, okay, they feel कि हमको अकेले नहीं रहना, हमको लोगों के हमारे फैमिली के साथ हमारा मी टाइम होना चाहिए. दे डोंट रियलाइज कि मी टाइम मतलब अलोन टाइम भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में ये जनरली लोग सोचते नहीं करके हमको अकेला होना चाहिए. लोग बोले आई वाज स्टूपिड, व्हाट आर यू गोइंग अलोन फॉर अ ट्रिप फॉर. सो पीपल को ये सोलो कॉन्सेप्ट सबको नहीं समझ में आता है. उनके हिसाब से माई टाइम could be spent with my family also, but I look at me time as me time means nobody else. Not nobody else matlab, of course when I went out to Bali there were people around me, and whether in a restaurant or around me, so you can do that. What else can you do? I don't know. Yeah, you can read a book that I think people love, and not all, not me at least. I'm not a book person. See, theek hai. So you can do that. I'm still waiting for an answer from Sujal. Did you write? See, तुमने लिखा है, but are you like sexist, racist? In what way? Are you जैसे anti like other nations? या क्या तुम class based तुमको biases है? So you have to tell me, because I don't know what exactly do you mean कि तुम्हारा meditating के time तुमने क्या किस बात के बारे में biases find out. अच्छा, there's some message. Where is Shwetab? He is not active on YouTube. अरे मुझे क्या पता, श्वेताब की secretary थोड़ी हूँ, मुझे नहीं पता. Wherever someone phone calls or rings the doorbell, I get a panic attack as a remind me of a part 15 years ago. Okay. तो इसके लिए तुम्हें maybe Ahmed Ali, you can contact me. Maybe you need to do EMDR. Okay, I can give you something for doing self EMDR to basically to get out of this trauma mode. And also you'll have to talk to yourself, learn meditation, exercise, and very important to say कि नहीं जरूरी नहीं करके वो creditor ही आपके दर पे आए. ऐसा तुम्हारा, I hope you don't owe unless you owe somebody something, So be careful. Write to me. I'll give you something for your anxiety and your panic attacks, but you'll have to actually work on it. Okay, from stimulating the vagus nerve to doing EFT. It's called emotional freedom technique. So you'll have to do different things to help your stress, so that when it ever doorbell, तुमने already assume करके रखा है, तो इसको couple of चीजें हमको पहले EMDR करना पड़ेगा. तुमको different panic attacks के time क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, तो पहले से तुमको prepare करना है. And then you can, there's another thing I like everyone to do is to rewrite your story. Suppose आपके साथ ही ऐसा हुआ था 15 साल पहले. Let's assume कि आज 15 साल बाद आज किसी ने डोरबेल बजाया. Imagine करो कि दूध वाला था. This is the actual story. I'm just saying कि ऐसा suppose ऐसा कुछ हुआ था कि डोरबेल बजा, you panicked, डोर खोला, दूध वाला था. You डोरबेल बजा, पिज्जा वाला था, तुमने डोर खोला,
and actually वो creditor नहीं था, pizza वाला था. So this is the real life scenario. Now what you do, you take a notebook, you rewrite that story. So what do? You start the same thing. The doorbell rang. Now, instead of saying ki I panicked and I thought it is the creditor, you will write, I was calm. I knew that it was not the creditor. I knew that whatever it is, I could handle. And I took deep breaths. I did maybe the pulse technique, and I went with a positive mindset to the door. Now, this is the first time you're written. Will your brain catch the suggestion? No. इतना जल्दी नहीं होता. इसको आपको बार बार ये स्टोरीज को रीराइट करना पड़ेगा. दिन में जितने सपोज 10 बार घंटी बजी आज, कल तुम उसको सेम स्टोरी को एक बार लिखोगे जो एक्चुअली हुआ था, और फिर रीराइट विद अ पॉजिटिव एंडिंग. सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू आर ओवरराइडिंग द सजेशन दैट यू हैव पुट इन योर ब्रेन कि मुझे पैनिक करना है, मुझे एंजाइटी अटैक होगी, मैं ब्रेथलेस होऊंगा, मुझे मेरे हाथ शेक होंगे, मेरा हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे. तुमने ऑलरेडी अपने माइंड को सजेशन दिया, इसको हमको रीराइट करना है. पर ये रीराइट जब आप रीराइट करते हो, कोई प्रोग्राम को भी रीराइट करते हो, इतना जल्दी नहीं होता, मेहनत लगती है. तो पेशेंस लगेगा, मेहनत लगेगा और डिलिजेंटली करना पड़ेगा. तुम अगर से बोलोगे मैंने 1-2 बार लिखा, मैम इस टेक्निक से कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा. इसको आपको इसका एक सोल्यूशन नहीं है. इसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी. फ्रॉम योर I'll give you some suggestions to watch certain videos. I'll give you hypnosis audios. I will give you the EMDR technique. You will have to start rewriting your daily events of this so that you can learn how to cope with stress. And when ऐसा कुछ होता है, I will give you tips of किसी को 1 किसी को 10 सूट करते हैं. आपको सब ट्राई करना पड़ेगा, आपके पर्सनालिटी के साथ क्या चाहता है. ठीक है? So I hope I've answered the question. If anything else, DM me and contact. ठीक है? मैम इतनी सारी प्रॉब्लम देख के दिमाग खराब नहीं होता? नहीं. अच्छा, कुणाल पाटील ने मराठी में लिखा, रचना दर्यानी तुम्हाला महाराष्ट्रातून नमस्कार. नमस्कार. उसने बोला है महाराष्ट्र से नमस्कार. नमस्कार कुणाल पाटिल. हाय प्रवीण, कैसे हो? गुड टू सी यू हियर. हाय सोमू. नहीं सोनू, अभी पता चला विक्रम के बारे में, तो दैट विल बी माय फर्स्ट मूवी टू वॉच. ओके, आफ्टर दिस. आफ्टर दिस मतलब आफ्टर दिस तो वैसे ही सेशन के बाद जान नहीं होती. ठीक है मैम, किसी वीडियो पर रिएक्शन देने का कोई प्लान नहीं आपका? और क्या आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन को सुनते हो? और मैम यू आर कूल. थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. 1 विनीत पांडे, हेलो. 2 3 नहीं यार, मुझे लगता है करके, एक तो मैं इतनी आई डोंट थिंक आई एम सच अ इंटरेस्टिंग पर्सन और सो क्रिएटिव कि आई कैन I can have like a dialogue with someone. Like I have this like really fun friends, and I think talking with them over about something is more fun than me sitting and dissecting a video. अब रही आजकल रिएक्शन वीडियोस के जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उस चक्कर में मेरे को फंसना ही नहीं है, क्योंकि आई एम क्वाइट आउट ऑफ कंट्रोवर्सी काइंड ऑफ पर्सन. मेरे पास आई डोंट लाइक per se arguments and confrontations, and unless I'm forced into it, I try not to get into all this. And क्या रिएक्शन, मुझको तुम बोलो थॉर का रिएक्शन दो, मुझे फिर भी मूवी का फिर भी, पर रियल लाइफ लोगों पे मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि कोई इंसान एक दिन अच्छा होता है, एक दिन नॉट सो ग्रेट, पर कोई एज पर से कोई बुरा इंसान नहीं है. जितना फिलहाल जो ड्रामा चल रहा है यूट्यूब पे, सब अपने अपने जगह अच्छे हैं, सब अपने अपने जगह फ्लॉड भी है. अब मैं क्या उस पर रिएक्शन, मैं कौन होती हूँ देने वाली? छोड़ो. I just hope everything gets sorted quickly. It's really sad. And हाँ, इस बात से मुझे याद आया, मुझे किसी ने लिखा कि मैम ये कंट्रोवर्सी की वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, ये कंट्रोवर्सी की वजह से हमारा दिमाग खराब हो रहा है, ये कंट्रोवर्सी की वजह से हम इतनी देर यूट्यूब पे बैठे रहते हैं और सबके कमेंट्स पढ़ते रहते हैं. मैम इस पे वीडियो बनाओ. तो ओके, if you think that there is any other way, और किसी ने अगर से आपको ये गलत फहमी में रखा है कि ये फोन आपका, ये हाथ आपके, ये आंख आपकी, ये सब्सक्राइब का बटन आपने दबाया है, ये ऐप को आपने डाउनलोड किया है, सो यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट यू आर डूइंग डेली. कोई ये नहीं कहता कि कंट्रोवर्सी
सबको मसाला अच्छा लगता है, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बट सारा टाइम कर लो 24 आवर्स में डेडिकेटेड टाइम कि आई विल ओनली वॉच इट 1 hour per day or something, and then I will do my rest of my work, and then when tomorrow comes it's still there, right? Generally it's still lying around, it's not there, it's not running away anywhere. So first and foremost, remember that the people you're watching, they are not going to come and save you from the fuck ups that you're going to do this daily by scrolling constantly. And you do know that your brain needs a bigger and bigger hit, that's why you keep doing it, because it gives you that rush. But stop being dependent on this rush, stop being happy with other people's miseries, stop looking for mirch masala outside. अपने लाइफ पे फोकस करो, क्योंकि ये बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले. दे आर गोइंग टू टेल यू, आर यू फकिंग स्टूपिड दैट यू डिडंट नो दैट द फोन इज इन योर हैंड, और इतने घंटे हो गए तुम पागलों की तरह उसको रीड कर रहे. हम भी तो, हमारे भी काम होते हैं, हम तो कर रहे हैं ना, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे कि अरे तुमने ये कंट्रोवर्सी की, गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी. टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेयर योर डे इज हेडेड. कितना टाइम क्या करोगे, पढ़ाई करो, कोई ये नहीं कहता कि इससे दूर रहो, सब बात करे तो हम भी बात करेंगे, राइट? अभी मैं देख रही थी वो जो लीगल वाला नोटिस है, वहां पे किसी ने लिखा यार ये किस वीडियो की बात कर रहे हैं, मीन्स देयर आर पीपल हु स्टिल नॉट अवेयर, तो दे बिकेम अवेयर. ठीक है, अब वो लोग भी जाएंगे, तो चल रहा है ये कि लाइक चक्कर चल रहा है, अभी काफी टाइम तक चलेगा. तो बट थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, ठीक है, जैसे आपको सोना होता है, जैसे आपको खाना होता है, आपको ये सिंपल चीजें लाइफ की समझ में आ जाती है. ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप लोगों ने डिफिकल्ट बना के रखा है, क्योंकि तुमको लगता है कोई आके तुम्हारे लिए बोलेगा आओ बेटा मैं तुम्हारे फोन तुम्हारे हाथ से ले लूं, आओ बेटा मैं तुम्हारे लिए फोन ऑफ कर दूं, तुम्हारे एप्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. खुद को करना पड़ेगा, दिमाग लड़ाओ. जैसे हमारे घर में भी बच्चों को सर्टन टाइमिंग्स होते हैं जो तुम वो कर सकते हैं, सोने के पहले तो उनको अलाउड नहीं है सब करना. तो बी रिस्पॉन्सिबल, स्टॉप एक्टिंग लाइक हेडलेस चिकन्स की कुछ नहीं पता लाइफ में, आपको नहीं पता, हम तो इतने हेल्पलेस है. तुम लोग हेल्पलेस नहीं हो, अपने आप को हेल्प करो, ठीक है. सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था, बट आई हैड टू एड्रेस दिस. सो okay ma'am, I'm preparing for an exam, I like a girl, I want to propose to her, but I think it will impact my studies. Maybe this urges because I'm kind of alone during this preparation, should I approach? First and foremost, Kisan Kumar, hi. Second of all, why are you alone? We have a Discord server where we have study VCs, साथ में बैठ के पढ़ो, अकेले फील नहीं करोगे. तीसरा, तुम सही कह रहे हो, अगर से दो चीजें होंगी, हाँ बोला तब तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ना बोला और भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. अगर से यू आर वन ऑफ दोस गाइज हु कैन नॉट हैंडल समवन सेइंग नो. सो महान आत्मा, स्टडी पे फोकस करो. कितने एग्जाम्स के कितने दिन बचे, 15 दिन 20 दिन, टच में रहो, पूरी तरह कट ऑफ मत करो, स्टे इन टच, होल्ड ऑन योर हॉर्सेस. इफ शी इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन यू, 15 डेज में ऊपर नीचे कुछ खास तो नहीं होगा. मे बी यू कैन गिव अ हिंट इफ यू वांट, इफ यू थिंक, बिकॉज अभी किसी ने कहा ना कि उनका ब्रेकअप हुआ और फिर वो किसी और के पास चली गई. तो अगर से आप लोगों में फ्रेंडशिप, बेसिक फ्रेंडशिप है और आप लोग एक दूसरे को जानते हो, तो उसको कहीं ना कहीं हिंट तो मिला होगा कि यू आर इंटरेस्टेड इन. बट क्या स्टडीज, वो अलग पांडे जी का जो रील्स आता है, इट इज सो फनी. प्लीज गो वॉच दैट, आई थिंक इट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ मोटिवेशन, रियली लव इट. वो शायरी करते हैं, मैंने उनको रिसेंटली फॉलो किया है. अभी तो मेरे पास और भी नहीं आएंगे, संदीप महेश्वरी जी के चैनल पे गए तो इतने दिग्गज लोग उनको बुला रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कभी हाँ बोलेंगे, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं. बट आई रियली लव दिस कंटेंट, स्पेशली ये निब्बा निब्बे बिहेवियर पे जो तुम लोग कर रहे हो, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, गो वॉच इट, आई थिंक इट विल हेल्प यू. Okay ma'am, this question may be weird to ask, why do people consider masturbation normal? Shouldn't that be considered bad since people are objectifying the other person to satisfy themselves? Quite an interesting question, I must say. If there is consent, then if you're masturbating with that person's consent, suppose जो लोग videos बनाते हैं या photos डालते हैं on certain sites, let's talk about those photos. Yeah, if it's your girlfriend and she has given you permission, or if it's your wife, or it's, let's say even a woman also masturbates. So let's say your boyfriend or your husband or whoever these so-called pictures are there, वहाँ पे तो consent already है ना, तो उसमें पाप
पुण्य कहाँ से आया, कंसर्न तो है। अब रही बात सेलिब्रिटीज और मॉडल्स, जो एक्चुअली आई डोंट थिंक ईच वन ऑफ देम इज लाइक थिंकिंग कि यार ये मेरे को देख के हिलाने वाले हैं, राइट? तो उनके मन में तो गंद नहीं होता, बट सामने वाले के हो सकता है कि वो उनको सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं। तो इतने लोगों को हम चेंज कैसे करेंगे माइंडसेट? बट हैविंग सेड दैट, इट इज एज लॉन्ग एज किसी को तुमने सेक्सुअली अब्यूज नहीं किया, कहीं टच नहीं किया विदाउट कंसेंट एंड रेप नहीं किया, तो आई गेस इमेजिनेशन में तो बहुत लोग टॉम क्रूज को देख के लड़कियां करती होंगी, ऋतिक रोशन, मुझे और कोई नाम याद नहीं आ रहा, मैंने तो कभी नहीं किया, मेरे को कोई इतना कभी मेरे को सेक्सुअली कभी किसी के लिए ऐसा नहीं था, तो इट्स हार्मलेस आई गेस। बट या प्रॉब्लम तब आती है जब यू नो I see, like, if you people have watched my stream, आजकल नहीं होता, thank God for that. Whenever I've worn something maybe off shoulders or whatever, and there are some guys who are commenting, and it happened even during Shweta's stream where they wrote really dirty sexual comments. Now that is where is fucking wrong. When you talk about a woman and you want to, whatever. So that we should control. पर अपने imagination में सब लोग पता क्या क्या नहीं करते, जब किसी को गुस्सा भी आता है तो इमेजिनेशन में किसी को आप मर्डर भी कर लेते, इमेजिनेशन सच में नहीं करते, तो वो अपना गुस्सा अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते होते, पर वो टेम्परेरी होता है, तो गलत तो नहीं हुआ बट सही भी नहीं हुआ, तो ये उस कैटेगरी में आया कि तुम इमेजिनेशन में तो बहुत कुछ सोच सकते हो और गलत सही दोनों सोचते हैं, हम इंसान है, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर सकते इसको, बिकॉज ह्यूमन माइंड इज सो कॉम्प्लेक्स, or it's such a to masturbate is very natural, because obviously you have sexual desires and you want to get off, whether it's a girl or a guy, we're not talking only about guys, so that's yes, but when you go overboard and go into porn addiction, and recently also I had this case where the person has gone into bestiality, वो जो एनिमल्स के साथ करते हैं, मीन्स उन्होंने दिमाग नहीं लड़ाया। फिर एक केस आया था कि एक लड़की का केस आया कि उसका हस्बैंड बोल रहा है कि ही वांट्स टू स्वैप पार्टनर्स, तो ये सब मुझे लगता है कि किसी को फोर्स करना, किसी का कंसेंट नहीं लेना, किसी को तकलीफ देना, वो गलत है। तुम अगर से सोचते हो, हम बहुत कचरा चीजें भी है, कभी कभी हम जब बहुत नाराज होते हैं, कभी किसी को पेरेंट्स गाली दे रहे हो मन में बच्चों को, तो वो भी तुम फिर कभी कोई दे स्मैक देम दे, वो भी गलत हुआ। सो इन दिस वे आई वुड सजेस्ट कि जस्ट लिमिटेशन में करो, लिमिट्स रखो, किसी को हर्ट नहीं करो, और किसी के बारे में ऐसे गंदे ट्रोलिंग कमेंट्स मत लिखो, जैसे वो मलाइका अरोरा कुछ पहन के किसी पार्टी में भी गंदे गंदे कमेंट्स लिखते हैं, मतलब लोग सोचते भी नहीं कि जिस किसी ने कोई कपड़ा पहना, ड्रेस इज नॉट अ यस, राइट, दैट इज। मेरे को और एक कमेंट आया था, मुझे अभी रियलाइज हो करके, या तो वो डिलीट हुआ या मैंने रिप्लाई नहीं किया इसी बात पे कि व्हाट टू डू अगर से हमारे गांव वाले या हमारे इर्द गिर्द के आंटीज विमेन के बारे में ऐसा बात करते हैं, एंड इट्स वेरी सैड व्हेन आई सी men, तो ठीक है, like they do it and we are trying to correct that shit mindset of many men, but अभी औरतों को भी करेक्ट करो, वो भी propagate करते हो this kind of shit कि just because a woman is wearing a particular outfit it means that she's either a slut or she's loose in character. It's so bad, like, और वो इंसान ने लिखा था कि अब्रॉड में it's so normal, like कपड़े से क्या लेना देना, इंसान कुछ भी पहने, तुम्हारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी सोच अच्छी होनी चाहिए। सो या ओके, आई होप आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन इन व्हाट वे। जयदीप is saying thank you so much ma'am for answering, you actually misunderstood me a little using mask, but I got the answer. Okay, that's okay. Misunderstandings are part of life. I don't know you well and I will take what is given to me. I could be wrong, and if I'm wrong about it, sorry, but that's how life is. People will misunderstand us, people will add 2 plus 2 and make it 22. Sometimes it will happen if they don't know you much. So what you do is you take what you can,
understand what you can, leave the rest. And yeah, next time be a little more, get some more clarity when you write a sentence. Many times ऐसे छोटे छोटे sentences में question पूछते हैं तो अपना भी थोड़ा सोच हमको लगानी पड़ती है, right? कि मे भी ऐसा, मे भी वैसा, not necessary कि it's I'm right all the time. Okay. Okay, next guy, ma'am, because it's nature. Yeah, it is, it is. Yeah. Ma'am, they're too dark and I feel shameful to even admit them. If you want example, here is a tame one. Fat people are losers and fat and because of it. Huh. So this is what he writes, okay? And so this is to do with self-worth, you know. Fat people are losers. कहाँ से आया? क्योंकि हमको बचपन से, आप मूवीज में भी देखो, फैट लोगों को फैट शेम तो करते हैं, पर उनको कभी कोई हीरो टाइप नहीं दिखाता, कभी कभी उनको ये नहीं दिखाते थे सेविंग द डे, और एवरीबडी इज मेकिंग फन ऑफ समवन चश्मिश और फैट और शॉर्ट और यू नो. सो ये हमारी सोसाइटी की सोच है जिसने हमारे मन को, हमारे दिमाग को खराब कर दिया है. पर इसका मतलब नहीं कि वी कंटिन्यू द पाथ. आप अगर से आपका साइज, आप ओपरा विनफ्री को देख लो, ठीक है, आप डैनी डिविटो को देख लो, इतने सारे ओवरवेट जो लोग होते हैं, क्या वो अच्छे नहीं होते? वो भी तो इंसान है. थोड़ा एक्स्ट्रा फैट, ओके, लेट्स लीव द फैक्ट दैट इट्स नॉट हेल्दी, लेट्स लुक एट इट एज जस्ट अ पर्सन. एंड इफ यू आर ओवरवेट, वन, जब तक तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुमको ऐसा लगेगा कि दूसरे लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको लूजर बुला रहे हैं, क्योंकि आपकी खुद की माइंडसेट ऐसी है. आपने बचपन से ये सीखा है कि मोटा होना, अरे पर कितने सारे मोटे लोग अचीव करके बैठे हैं, ठीक है. आई डोंट थिंक अंबानी जी इज द फिटेस्ट ऑफ द लॉट, एंड still people, he's earning money, people are respecting him. Not everybody is cut out to have the Greek body like Ritik. And that is where the society का हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश किया है. तो इसको धीरे धीरे आपको ठीक करना पड़ेगा. आप अगर से इनसिक्योर हो, पहले अपने सेल्फ वर्थ पे वर्क करो. एंड मेरा सेशन सेल्फ वर्थ वाला देखो, जिस दिन आप अपने बारे में, एंड उसमें आई थिंक आई हैव स्पोकन अबाउट people who fat shame and people who are doing this and they do not understand their value. जिस दिन तुम अपनी वैल्यू समझने लग जाओगे, तुम सामने वाले को भी ऐसे जज नहीं करोगे क्योंकि तुम जिस तरह जज कर रहे हो. And it's, as long as it's a constant struggle, you see. Even आप when you go to the US, like जब हम लोग वो इमिग्रेशन में भी जाते हैं, तो इमीडिएटली अगर से तुम इंडिया से हो या तुम यू नो, उनको लगता है तुम इधर पाकिस्तान से हो या समथिंग. There are people who are racist also. Even in London I've experienced, even in UK, sorry, in Hong Kong I've experienced racism. That's also dark and like we should not be doing it. People still do it. The thing is we need to work on ourselves. We need to, एक टाइम पे लोग होमोफोबिक होते थे, एक टाइम पे नहीं, सॉरी, अभी भी काफी लोग होमोफोबिक है, तो उस पे भी हमको वर्क करना है. दिस इज लाइक अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, process to getting to know yourself, to work on yourself and say ki nahi, I will not do it. I'm going to make a deliberate attempt to change my way of thinking and not to put people in this kind of, you know, pigeonholing कि अच्छा ये इंसान मतलब ऐसा है, तो मोटे हैं तो लूजर्स हैं, शॉर्ट है तो लाइफ में कुछ नहीं अचीव करेंगे, फालतू क्या कैसे दिखते हैं. तो वो हमको, अगर से कोई डार्क है तो उनके बारे में उनको बुरा बोलना, ये सब हमको धीरे धीरे अपने में फिक्स करना है. हमको पूरी जिंदगी हम ये सीखते आए और हम इसको स्टॉप करना है. लाइक हमारे घर में भी हम बहुत अगर से माय डॉटर इज शॉर्ट एंड माय सन इज वेरी टॉल, हमारे, क्योंकि वो पहले से आया हुआ है कि बीइंग शॉर्ट इज समथिंग रॉन्ग विद यू. तो वो सारा टाइम मेरी बेटी के दिमाग में मुझे डालना पड़ता है, और सारा टाइम ऑपोजिट डालना पड़ता है मेरे बेटे के दिमाग में कि डोंट फकिंग टेक क्रेडिट फॉर द हाइट यू हैव, दैट इज जस्ट नेचर, राइट. सो ये क्योंकि हमने दुनिया में ऐसा देखा है तो हम ये सीखते हैं और हम उसको, हम चेन नहीं ब्रेक करते. तो आई एम ट्राइंग टू ब्रेक द चेन इन माय ओन हाउस, राइट, whether it is to do with color, whether it's to do with height, whether it is ridiculing people for their size. So हमारे घर में अगर से my son had gained a lot of weight, so my daughter was making fun because he makes fun of her height. So they're both very young. So I teach them. I said, no,
no using words derogatorily. There's nothing wrong in being fat. There's nothing wrong in being short. Yes, it is important to be fit. That is different. So even when I told my son, because he had gained a lot of weight and he's got a very broad build like my brother. So I had to tell him, "Kirki, remember, you're going to, I'm sending you to the gym or for tennis." I sat him down. I said, "You have to understand, why are you losing the weight?" I said, "Because as you grow older, all this is going to come back and bite you. You'll get high BP, तुमको arthritis होगा, diabetes होगा." I said, अभी से तुम्हें सीखना है to be fit. Yes, you can eat junk food. Yes, you can eat this. Like yesterday, we went for Thor and he had fish and chips. I said, "See, this is the fried food you eaten for the day. You didn't exercise yesterday. आज संडे है, कल संडे था, मैं आज बोला तो ऐसा तुमने 2 दिन से नहीं किया." ऐसा tomorrow you have to make up for the exercise. You have to make sure कि you exercise. What you do, I don't give a fuck. When we came back home and I had another dinner to go to, I said, "Go walk up and down." I said, "But you will not walk up and down in the house." कुछ नहीं, हमारा घर 3 bedroom का है, इतना बस एक लंबा सा एरिया जहाँ ऐसे रेक्टेंगल. ऐसा डजंट मैटर, जिम बंद हो गया है या जिम नहीं जाना आज, थोड़ा वॉकिंग करो क्योंकि तुमने. सो मैं उसको सिखा रही हूँ कि फिट होना जरूरी है. तुम जो भी साइज के है डजंट मैटर, जब तक तुम फिट हो. तो ये माइंडसेट का जो चेंज आना है ना सुजल, वो तुम्हें लाना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है. ये ऑटोमेटिक ओवरनाइट नहीं होता. ठीक है. Vishal Prasad, okay, I've got a similar question, sorry, but it is again quite related. I think I set very high goals for the day, then although I think it's quite achievable, but I'm never, then set little, see, look, लगता है तुम अपनी वर्थ सिर्फ इसी चीजों में देखते हो. एक इंसान जब एक्सरसाइज करता है या फन टाइम करता है या मूवी पे भी जाता है, वो भी तुम्हारा एक something you do for yourself. So if you know that you are getting into this bad habit of writing way too many things and not achieving it, start writing less, achieve that, and if time is remaining, let's say make 2 lists. एक आज का लिस्ट है जो शॉर्टर होगा, एक कल का लिस्ट होगा जो आप कल के लिए छोड़. लेट्स अज्यूम कि आप जनरली 10 चीजें लिखते हो. ठीक है, आपने यू हैव स्टार्टेड नाउ राइटिंग क्योंकि आप 10 कभी अचीव नहीं कर पाते, आपने 5 लिख दी, पर आपके कल के लिस्ट में 5 पड़ी है. अब जब ये 5 खत्म होता है, पहले पूछो क्या तुमने एक्सरसाइज किया, क्या तुमने मेडिटेट किया, क्या तुमने फैमिली टाइम यूज किया, क्या तुमने मी टाइम है, क्या तुमने म्यूजिक सुना, तुमने कॉमेडी देखा, तुमने मेंटल हेल्थ के लिए अपना क्या किया है. ठीक है, पहले ये फिनिश करो. बाद और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर से टाइम स्पेंड करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ पढ़ना है, जो भी, वो सब होने के बाद अगर से ये चीजें 5 चीजें हो गई, फिर एक चीज वहां से लेकर आके, तो मेरे पास अभी तक दिन के लेट्स से 4 घंटे बचे, लेट्स से ये सब करने के बाद फिर भी तुम्हारे पास वक्त बचे, फिर एक वहां से लेके आके ये फिनिश करो. दैट वे यू विल फील कि ओके, आई अकम्प्लिश दिस, बट आई डिड वन मोर थिंग which I was not supposed to, but I had time, so I did it. Start being more flexible. Don't be so rigid and don't be so hard on yourself, because people who are very harsh on themselves always suffer with low self-worth. All the time criticizing, complaining, whining, these kind of people, no matter what you get in life, you're always unhappy and you need to fix that. And this is, I think you're very young. So this is what, if you learn it now, you'll be very happy later. And देखो कुछ बच्चे आते हैं इतने लेजी, ओके, इतने बड़े प्रोक्रेस्टिनेटर, तुम दूसरे एज पे हो, तो दोनों जगह तुम लोग गलत. कम समवेयर मॉडरेटली सोचो, मॉडरेट पाथ इस्तेमाल करो और बैलेंस करो अपने लाइफ को. ठीक है, आई होप इट हेल्प फॉर व्हाट आई सेड. अच्छा, इधर जूम पे कोई मैसेज आया है. ओके, I don't understand how you're able to forgive him. If I was in your shoe, I will never forgive. It's okay. That is also part of growing up. That's what I've learned. I don't hold on to grudges. It doesn't help. Ma'am, please take care of yourself as एक ही आप हमारे साथ हो. Thank you, Gaurav, of course. I hope every parent help the children like you help everyone. Yeah, अपने बच्चों को ही मदद कर ले. But I'm also not a perfect parent. If you ask my children, they'll have very bad qualities to talk about me. So no parent is perfect, and I don't want to be perfect also. जैसे हूँ मैं हूँ, you know, like I try my level best and I try to be there for my kids as much as possible. Any problem they are having, I try to talk to them. मैं अपना best try करती हूँ. मैं फिर भी बोलती हूँ क्योंकि
there's a lot of room for improvement even for myself, but I'm happy. I am trying whatever I can. Okay, next. So Jadip, I hope you got the answer. When you are aware of it, then why not set realistic? Exactly, Jadip. Okay. It's similar to the last one. I had Deva Parmeshwar. I had very high experience for JE rank 150, but was beyond 100. Not to show anyone or that I'm above anyone, but I couldn't get my dream of what? Sorry, बहुत आगे चला गया यार. किधर गया dream of? यार अभी बस करो क्वेश्चन पूछना. ड्रीम आप get my dream. It's okay. Now deal with it. Ma'am, I failed to get admission in college of my choice. This is Priya. I failed again even after 2 attempts. I'm really feeling hopeless. I feel Priya, I need to talk to you, beta. This is not something I want to deal with on YouTube. DM me this and let's talk about it and let's try to fix this, because if you do not fix this now, you're going to carry the burden for later. ये अभी fix करते हैं क्योंकि आप अभी fail हुई हो and you didn't get admissions in the college you wanted. Okay, and it's okay. We need to work on it, but ये थोड़ा लंबा लेंदी है इसलिए counseling session करते हैं. And you know I don't charge, so don't worry about it. Ma'am, please invite who? Shyam Manav on your YouTube. He is also a hypnotherapist solution. अच्छा, एक मिनट देखें कौन है. श्याम, Shyam का spelling is never even heard of him. Who is he? Shyam Madhavan. Manav. I can see Madhavan. Anyway, let's see Manav करके कोई है क्या? Shyam Manav. Speaking with. Oh, Professor Shyam Madhavan is a social rationalist, writer, and orator. He's famous for being founder and national convener of. If he does Hindi hypnotherapy, I would love it. Why? Because I get a lot of, I do only English and I have a lot of issues with people who speak Hindi and they're like, man, Hindi wala भेजो. मेरी हिंदी इतनी गंदी है कि मैं क्या hypnotherapy audio बनाऊंगी. Okay, ma'am, there is a limit of 200. Why cannot I write in? बेटा सुजल मेरे को privately लिखो because now I'm going to end the session. Okay. I don't know, I messed up used to set it like that. Okay, so Jadip, I hope you got the answer. Nia, hi Nia, hi ma'am, big fan. Thank you. And okay. Oh, this is that same Lakshmikant. Why don't you show your banana to people here? एक काम करो, Zoom पे आओ. I'll put it on. इतना तुमको लड़कियों को हैकल करने का इतना शौक है. आओ, आप हम आपको फेमस करें. आप देखे तो ना कि आप किस चीज के बने. आपको दूसरों का लड़कियों का लेमन मैंगो जो भी देखने का ये है. आइए, आप हमारे Zoom पे आइए. हम आपको स्पॉटलाइट करेंगे और फिर आप सब दिखाना. ठीक है. और अगर से अच्छा होगा आपको दूसरे जगह से मे बी कोई पॉर्न वेबसाइट चला रहा है, आपको ऑफर भी आ सकता है. ठीक है. तो हम जैसे लोग ये सब नहीं करते. आपको करना है, आइए, आपको हम फेमस करते हैं. जब भी आप करना, इट्स ओके. अरे दिव्यांशु, वो क्या बोल रहा है बेटा? थोड़ा दिमाग यूज कर. क्या तुम काहे कहीं भी ये होता है? वो कुछ और बोल रहा है, बता है. ओके, आई एम हाउ टू फोकस ऑन माय क्या, ऑन माय सेल्फ. ओए भगवान, मैम आई हैव, हे भगवान. थैंक यू सो मच Jadip. I realized it. I was being too hard on me, but it's just being fed up my brain. Okay. ओके कुणाल. अरुणाचल में इंटरनेट पहुंच गया है. ओके, हाय आकाश, सुनील. ओके मैम, हाउ टू डील. प्लीज अभी क्वेश्चन बंद करें बच्चे लोग. एक तो मेरा ये स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है. अचानक माउस हैंग हो गया. ओके, अच्छा मैं बहुत ज्यादा आगे चली गई. Ma'am, I have very much trust issues. As I think cities, there are things that there is love which is going faster and even
So it's fun to trust all I find that one day I get cheated and also I don't want any relationship as I heard that if girlfriend is best friend or देखो hi anonymous how are you देखो कोई देखो इससे आप भाग नहीं सकते इससे आप छुप नहीं सकते लोग हमारा दिल तोड़ेंगे हमको सीखना पड़ेगा हमको ग्रो अप करना पड़ेगा जरूरी नहीं जो वेब सीरीज में हो रहा है वो आपके साथ होना जरूरी है जरूरी नहीं करके एक लड़के के साथ हो तो दूसरे लड़के तो लड़के भी तो नहीं होते ना इतने लॉयल नॉट एवरीबडी इज लॉयल वेदर गर्ल और बॉय इट डजंट मैटर बट यू लर्न फ्रॉम इट यू एक्सपीरियंस यू बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव एट द मोमेंट एंड देन बाकी सब पेट पे छोड़ो अगर से ऐसे अगर से हम डरते रहेंगे तो कभी साइकिल चलाना नहीं सीखेंगे कभी दोस्त नहीं बनाएंगे कभी कुछ नया स्किल नहीं ट्राई करेंगे हर चीज से डर के जी कर क्या फायदा बट मे बी इफ यू आर नॉट इमोशनली रेडी इट्स ओके इट्स नो बिग डील इफ यू डोंट बाद में अरेंज मैरिज कर लेना अगर से चाहिए ठीक है सो सुमित अप्रिशिएटेड मैम माय प्लेजर inferiority complex watch my self-worth session harsh and I think you've written to me so I'll send it to you on email okay ma'am I've written about Suyash okay ma'am today Sandeep Maheshwari did collab with other okay I will I do क्या सुयश एक मिनट सुयश कौन सा क्वेश्चन था तेरा एक मिनट लास्ट वाला क्वेश्चन मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा हाँ तो मैंने वही तुम्हें अभी वही तुम्हारा ही क्वेश्चन आंसर किया कि डरते रहोगे डर के आगे जीत है तो कौन सा ऐड था तो दैट इज द ट्रूथ एंड यस पीपल विल हर्ट यू यस पीपल विल यू विल हैव एक तो एक्सपेक्टेशन इतनी मत रखो लोगों से जब हम अपने आप को ही हर्ट करते हैं जब हम अपने आप के साथ कितने बार हम लोग लाइफ में वी लेट डाउन आवरसेल्व्स राइट हाउ मेनी टाइम्स वी लेट डाउन आवरसेल्व्स so why can't the other person let us down that will also come with a teaching it will come with new experiences and it will make you stronger what it won't kill you most of the time it doesn't so don't get over hyper the problem is कि हमको बॉलीवुड और वो सब ने सिखाया है कि प्यार एक बार होता है प्यार जान देने के लिए होता है ऐसा सब नहीं होता ऐसा करना भी नहीं किसी के लिए जान मत देना मैंने कुछ केसेस देखे हैं फेक केसेस वाले जहाँ they go kill themselves I mean fight it out यार don't kill yourself because of some stupid person and like अभी तुम नहीं थे but इसके पहले किसी का लव वाला ब्रेकअप वाला इशू था 3.5 years they were dating it's a process it's don't get so scared of pain yes people will hurt you cheat on you break your heart ऐसे नहीं कि कान जगह टूट गया तो कभी फिक्स नहीं होगा ऐसा नहीं है हाँ वो लेसन्स थोड़े टाइम लगते हैं जब हम हर्ट होते हैं तो हम फिर वापस से टू कम बैक टू आवर ओरिजिनल शेप थोड़ा टाइम लगता है पर हो जाता है ठीक हो जाता है but if you want to not be in a relationship why you're forcing yourself chill enjoy your career enjoy yourself enjoy your life it is not the end of the world not everybody has to be in a relationship but there are some plus points of being in a relationship which people like you can communicate you have someone to support you I mean if it is the right partner I'm not saying I mean और हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कमी होती है हर रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होते हैं इश्यूज होंगे उससे तुम कहाँ भाग सकते हो यार तुम अपने माँ बाप को भी देखो इतने साल से शादीशुदा लोग हैं फिर भी चिटपिट किटपिट करते होंगे लड़ाई झगड़ा नोक झोंक तो चलती उनकी भी चलती होगी दादा दादी की नाना नानी की उनकी भी देखो हर रिलेशनशिप में ह्यूमन जो दो ह्यूमन बीइंग्स कहीं भी होते हैं तो हो ही नहीं सकता कि इशू ना हो ठीक है एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले DM me I want to find out what are your first and foremost what are your things that you feel inferior about because I just spoke about it so I will not repeat and let's get to the bottom of it and try to resolve don't bring Sandy here अगेन UTJ मैंने बहुत बार बोला है मुझे मेरा कोई व्यू नहीं है इस स्कैंडल या इस कंट्रोवर्सी के बारे में whose ideology find better more practical or Shweta I have never followed Sandeep Maheshwari ji I don't know what he talks about so and neither do I didn't watch Shweta before he came on and I am nor have I watched Shweta after that I watched some of his shorter videos and I love the way he talks. I love his mindset. So, but
there is no comparison. Why do you compare two different people? Like what it's like when people used to compare me, or when they compare Raw and Real में Vedant. I find Vedant's content very nice. Actually, I watch Vedant more than anybody else, I think, out of the three of them. And I found him very intelligent. I found what he talks is very interesting. And so हर इंसान का अपना एक टेक होता है, हर इंसान का अपना वैल्यू एडेड होता है. तुम लोग गलती करते हो जब तुम बोलते हो इस, व्हाई कांट बोथ, लाइक आई ऑलवेज से टू स्टेट्स कैन कोएग्जिस्ट. व्हाई कांट यू लाइक बोथ? व्हाई कांट यू say कि okay, I agree with this also and agree with that? Why do I need to pick one over the other? Why? कभी इस पॉइंट में ये इंसान ठीक होगा, कभी इस पॉइंट में ये ठीक होगा, कभी कभी दोनों अपने अपने जगह सही हो सकते हैं. Why does one need to be right and for the other and then the other will be wrong? नहीं, both can be right, both can be wrong. And देखो, लोगों को सुनो और फिर छानो, उससे क्या लेना है, उससे क्या इंफॉर्मेशन लेना, उनके जैसे नहीं बनना है आपको. बहुत बार मैंने देखा है, हमारे डिस्कॉर्ड पे भी ऐसा कभी हुआ है कि somebody is trying to sound so much like Shweta. I'm like, keep your original self. Don't lose your individual traits trying to emulate and mimic someone else. So वो बहुत important है. Don't try to be a copycat. And सबको appreciate करो. जैसे मैं देखती थी थोड़ा बहुत रॉ एंड रियल, पूरा नहीं देखा क्योंकि वो लोग ऐसी टॉपिक्स बात करते थे, मेरे जुक मेरे सर के ऊपर से ज्यादा था, क्योंकि वो एनिमे के बारे में बात कर रहे हैं या कोई सीरियल देखा उसके बारे में. हमने कभी कभी कोई गेम, कभी मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता था. तो फिर मुझे रियलाइज हो करके, और सब लोग, मैं कमेंट्स पढ़ती थी कि वेदांत को बोलते थे अरे ये वेदांत कुछ बात नहीं कर. अरे क्यों क्यों तुम लोग इतना प्रेशर डालते हो दूसरे को दूसरे जैसे? तो फिर क्यों देख रहे हो? 3 लोग क्यों चाहिए? तुम फिर एक ही इंसान को रखो, सबको एक दूसरे का क्लोन बना दो. हाउ बोरिंग लाइफ वुड बी. सो आई थिंक दिस इज वेयर टुडेज जनरेशन constantly picking one over the other. It's okay, both are good. Both क्या, सब लोग अपने अपने जगह अच्छे हैं, और जिसको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो. बट हमेशा सिफ्ट करो, सीव करो, छानो. जो इंफॉर्मेशन, किसी के ब्लाइंड फॉलोअर्स मत हो कि तुमको कोई भी उकसा दे तुम लोग उनको ये करो. नहीं, ऐसा नहीं. कीप योर, देखो मेरे फ्रेंड्स में भी अगर से 2 लोगों में, 2 अच्छे फ्रेंड्स में कुछ ऊपर नीचे होता है, मैं हमेशा आई ट्राई नॉट टू टेक, एक तो साइड्स नहीं लेनी चाहिए, ट्राई टू बी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट, बट आई डोंट गेट कैरिड अवे विद पीपल. there's so much hidden behind this YouTube channels, okay, in their real lives. So we don't know who's made कि कौन कितने पानी में है और सॉर्ट्स, और कौन क्या असलियत, किसी का हमको नहीं पता. सबका कुछ ना कुछ चल रहा है. और तुम लोग क्या होता है, तुम लोग बहुत ज्यादा कैरिड अवे हो जाते हो. कभी कभी आई रिमेम्बर मुझे आते थे डीएम्स, हम पहले प्रखर को करते थे, फिर हम श्वेता को करते हैं, फिर हम वेदांत को कर रहे हैं. तुम लोग यहाँ वहाँ क्या कर रहे हो? सबसे अच्छी अच्छी चीजें सीखो, और बट पट्टी मत बांधो. आप अपनी डिसीजंस खुद लिया करो, और फालतू की साइड्स मत लो, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल. समटाइम्स स्टे इन द मिडिल, एंड दोनों के क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज होंगे, दोनों में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, वो देखो. मुझे तो वैसे भी कंट्रोवर्सी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, ज्यादा नहीं मतलब बिल्कुल नहीं अच्छी लगती. और ये सब फालतू चीजों पे वार्तालाप करना है सच वेस्ट ऑफ गुड टाइम ऑफ योर लाइफ. और यहाँ पे 11:30 बज रहे हैं. हमारा स्ट्रीम कितने देर से चल रहा है? Okay, Jaydeep is saying, thanks for helping us selflessly. How you? I'm doing well. Thank you. Yes, I'm doing Chakachak, which I hate that song by the way. Okay. Doing stuck with one-sided thing. Now I'll find both-sided. Thanks. My pleasure, Suyash. और हिंदी में लिखा करो बेटा, अगर से इंग्लिश में आप नहीं समझा पाते, मैं हिंदी भी बोलती हूँ. And the greatest enemy in the world is itself you. The phrase is, okay. अभी क्या था मैम? I do get very nervous around someone. It's not very usual. Can you tell me what's going on? If it's not very usual for you, first and foremost, I need to know who are you getting. Oh, thank you, Kapil. That's a last question, please. Last. Okay. First and foremost, you have not told me. Is it a girl? Is it your boss? Is it your teacher? I need to know who are you getting nervous with, because if you're saying it was not usual, that means it's something new. Means this person is either intimidating you. Okay. That's why you're nervous, as in that it could be a boss, it could be a colleague who's like
higher in ranks, or you are a new employee, so they are intimidating and you're nervous, or it's a girl who you're not being able to communicate with. So if it's new, find out what is this new thing, what exactly is it? Is it because your language skills, your communication skills? Is it your personality overall? Is it, कभी कभी लोगों को क्या होता है, अचानक तुम्हारे सामने तुम्हारा नया बॉस या नया कलीग, तुम एक नई जगह जाते हो, वो he is well liked by other people, right? And you have to start from scratch, from fresh. तुम्हें नर्वसनेस होती है करके, यार इस ये मुझे पसंद करेगा, वो मुझे पसंद करेगा कि नहीं, am I'm not feeling at home, it's my first month, whatever. So थोड़ा टाइम लगता है to settle in. You have not given me enough to go on. So तो मैं तो hypothetically पता नहीं अपनी दुनिया में पता नहीं क्या बात कर रही हूँ. So please give me some context next time, ठीक है? And it's see, it's your boss. मुझे लगा था ऐसे ही. हाँ. Why Shweta is not अरे देवा परमेश्वरा, one more Shweta question. Is there something happened? I don't know Siddharth. I don't know. And even if I knew, just let's assume, okay, I knew, it's still unethical for me to discuss it. Do you understand? They have not given me the permission to speak about it. I mean, you have to understand that. I understand कि तुम लोग उसके बारे में केयर करते हो, तुम वरी कर रहे हो, but कुछ चीजें हम लोग को फाइंड आउट नहीं करनी होती. Leave it, let it be. सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर से होना है. सॉरी, मेरे इधर भी चैट है. चैट किधर गया? हाँ. अरे हाँ, पूछो जल्दी जल्दी पूछो. लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? तुम इनवाइट के लिए वेट कर रहे थे? टाइप करो. अनुराग. ओके, मैं कहाँ थी? हाँ, I'm deleting the unwanted number. Don't know how you're reading this comment because I'm the owner of the channel, so I can read the comments. And don't delete it. I mean, you can if you want, but I want to read what is happening on my channel, so it's okay. I don't hide behind anything. I want to know, and yeah, we can block them, remove them later. But it's good to know. It makes you all this. You become. Can we go some other day with it? Yes, sure. You can even DM me. Okay, जिनको मेरा इंस्टा आपको लोगों को पता होना चाहिए, सेम नेम से है. DM me the question, I'll send you. Okay, it's your boss. Sorry, मैं उसका question answer कर रही थी. So obviously you're nervous because देखो bosses इतना वो लेवल पे पहुंच जाते हैं, जहाँ लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे डरते हैं. So nervousness अच्छी बात भी होती है क्योंकि एक it's called eustress when you're like worried ki how you're going to perform and all that. So there is a good part, but when it becomes too much, it's called distress. So whoever this person is, I want you to contact me. I need to understand the situations that you get nervous in, and let's work on that anxiety. Let's try to figure the जब तक तुम्हारी फाउंडेशन तुम स्ट्रांग नहीं करोगे, तुम्हारी नींव स्ट्रांग नहीं होगी, तो तुम्हारी इमारत डगमगाएगी. So अगर से तुमको मुझे समझना है कि एग्जैक्टली क्या बात इस बॉस के बारे में आपको बॉदर करती है, आप उसके सामने कब नर्वस होते हो, एंड इज इट ओवरऑल, इज इट अ स्पेसिफिक टाइम, देन वील हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल दिस. फर्स्ट बेसिक्स जाएंगे, फिर उस पे वर्क करना पड़ता है, ठीक है? तो इतने से यूट्यूब सेशन में ऐसा नहीं हो सकता, कुछ चीजें काउंसलिंग के लिए छोड़नी पड़ती है. तो मुझे डीएम करो, आई कैन गिव यू एन अपॉइंटमेंट टू टॉक अबाउट इट. ठीक है शी, नहीं तो डीएम करो और मैं ऑडियो नोट से करूंगी. आई एम सपोज्ड टू गेट इट. ओके, यू डोंट बंधन झा सेम सेलिब्रेट विद रचना. वेट, आई विल गिव यू माय लिंक व्हाइल आई एम टॉकिंग. एंड मुझे मतलब ही फॉलोअर्स से बहुत अभी तकलीफ होने लग गई है. लोग जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट. जो लोग मुझे फॉलो करते हैं और काम ले लेते हैं, हेल्प कर लेते हैं, और मैं हेल्प भी कर देती हूँ, फिर तुम लोग अनफॉलो करते हो, ना थैंक यू बोलते हो. यार, कोई तुम्हारे बुरे वक्त में जब काम आए ना, उनको थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो. मुझे बहुत गुस्सा आता है आजकल. पहले मैं फिर भी मैं बोलती थी चलो ठीक है, तो तुम लोग ही मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, तुम लोग ही मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करोगे, ये जनरेशन चेंज कैसी होगी?
तुम लोग अगर से अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, there are some people who are like so embarrassed to follow me, but you are not embarrassed to follow porn channels and you know stupid celebrities who don't do fuck all for you all. But मेरे जैसा इंसान जो बिना कुछ एक्सपेक्ट किए प्लीज रिस्पेक्ट तो दिया करो. और एंड द फन, अच्छा अभी मेरा जनरल रैंट. सो अभी एक रिसेंटली एक क्लाइंट का केस आया, ओके, उसको मैंने डीएम में बहुत मदद किया. तो और मेरा आजकल जो भी नया फॉलोअर है, तुम लोगों ने देखा होगा कि जब मेरे को काउंसलिंग के लिए, तो मैं एक पैराग्राफ लिखा है, इफ यू आर सीकिंग काउंसलिंग राइट यस, क्लिक फॉलो, एंड द रीजन टू फॉलो इज लाइक आई want to destigmatize mental health and whatever. So this person knows this, still writes to me. I ignore it. ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है. After I help little bit on voice notes, maybe अक्ल आई ना, अक्ल नहीं आई. ठीक है, फिर वॉइस नोट्स में बोला कि नहीं मुझे लगता है मुझे आपसे बात करनी है. तो ऐसे ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट दे देती हूँ. तो उसने पूछा चार्जेस क्या. अभी चार्जेस के अंदर भी मैं मेरे प्रेडिक्टिव टेक्स्ट होते, क्योंकि ऑब्वियसली कितने लोगों को लिखना पड़ता है रोज, राइट. तो कुछ चीजें मैंने प्रेडिक्टिव टेक्स्ट में ये भी लिखा है कि आई डोंट चार्ज, एटलीस्ट ये साल तो मैं नहीं करूंगी, नेक्स्ट ईयर शायद द वंस हु आर अर्निंग और वर्किंग आई विल. आज बाय द वे सुपर चैट किसी ने नहीं खरीदा, शर्म करो बेशरम लोग. एनीवे सब लोग वेट करते हैं, तुम लोग को पता है कि मैम पूरे क्वेश्चन आंसर करेगी. एनीवे तो मैंने फिर उसको लिखा, मींस मेरा जो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट था कि आई डोंट चार्ज बट आई एक्सपेक्ट माय क्लाइंट्स टू हेल्प समवन पेड फॉरवर्ड. मुझे पैसा या पैसा नहीं, किसी को भी किसी तरह से मदद करो. और सेकंड, डिस्टिग्मेटाइज मेंटल हेल्थ बाय फॉलोइंग मी, व्हाटएवर एक पैरा होता है. किया फॉलो ना. अब मैं सोच रही थी बोलूं कि नहीं बोलूं, और फकेट यार, मेरे पास इतना पेशेंस भी नहीं है. भाड़ में जाए घर से एक ऐसा इंसान जो इतना मदद करने के बाद, उसको अपॉइंटमेंट देने के बाद फिर भी अक्ल नहीं आती. मतलब it's so sad now where this generation is headed. Ki people who help you, who are there for you, who care about you, who genuinely have nothing but like uh, your well-being at heart. And I have to actually tell you all this. It's so sad. You know, that's what. And अभी recently भी और एक किसी ने मुझे जब मैं तुमको बोल रही थी ना कि किसी ने अभिषेक का नंबर मांगा, मैं उसको बोले ऐसे शर्म तो कर, फेवर मांग रहा है, फॉलो तो कर. यू नो, एक तो मांगना नहीं चाहिए, वो भी लिखा मैंने. उसको बोले ना हाय, ना हेलो, ना प्लीज, ना थैंक यू, ना फॉलो, ना कुछ भी. ठीक है. और प्लीज सब लोग एटिकेट, नेवर आस्क वन यूट्यूबर, वन फ्रेंड, वन स्टूडेंट, वन एनीबडी फॉर anybody's number. And people who give other people's number without their consent, it is wrong. If somebody has trusted you with the number, never ever give their number without asking this person, hey listen, मेरा ये friend तुम्हें contact करना चाहता है, या ये इंसान तुम्हें contact करना चाहता है, should I give your number? Even in friendship, okay, even if it's a colleague. अगर से आपका कलीग, सपोज आपको पता है कि एक पर्टिकुलर डॉक्टर आपको पता है, ठीक है, वो डॉक्टर जनरली क्लिनिक के थ्रू काम करते हैं और तुम्हारे पर्सनल कांटेक्ट में, क्योंकि वो पर्सनल तुम्हारे डॉक्टर है, राइट. तो किसी फ्रेंड ने तुम्हें मांग लिया, तो तुम सीधा डॉक्टर का नंबर पर्सनल वाला नहीं दे सकते. तुमको डॉक्टर को भी पूछना है कि डॉक्टर मे आई गिव योर नंबर, दिस पर्सन वांट्स टू कांटेक्ट, और लेट देम कांटेक्ट टू द क्लिनिक. रही बात यूट्यूब की, इंस्टा की, किसी भी सेलिब्रिटी यूट्यूबर हो जो भी मेरे पॉडकास्ट पे आते हैं या किसी और के पॉडकास्ट पे आते हैं, आपको उनको टच करना है या उनकी इंटरव्यू लेनी है. जैसे मेरे को कितने बार श्वेता का नंबर लोग मांगते हैं, प्रखर का मांगते हैं, अभिषेक का मांगते हैं, वो कौन है याद नहीं आ रहा, वो फिटनेस के लिए जो अक्षय जी का मांगते हैं. तो कितने लोगों का नंबर, आई ऑल आउट ऑफ योर फकिंग माइंड. डोंट यू नो बेसिक एटिकेट that it is wrong. अभी जिनके साथ मेरा पॉडकास्ट होने वाला है संडे को, जो फिटनेस, उन्होंने भी कहा कि प्लीज डोंट गिव माय नंबर. आई सेड, देन आई सेड नो, आई सेड इवन आई एम लाइक दैट. आई सेड आई एम गिविंग यू माय नंबर, सो आई होप आई डोंट हैव टू, like we tell each other. And I showed it to him. I said this is how I treat anybody asking me for a number, because I wanted to put this thing up on Insta to tell people, learn, never ask anybody for anybody's number. And don't give anybody's number without their consent.
कोई अगर से तुम्हें ट्रस्ट करता है, स्पेशली अगर से तुम ऐसे बिजनेस वाले इसमें हो या कोलैबोरेट कर रहे हो, मेरे पास मेहर का नंबर है या सिड वॉरियर का नंबर है या जिसका भी नंबर है, मैं किसी को किसी का नंबर नहीं देती. दैट इज बेसिक नॉर्मल एटिकेट. ओके, सो आई होप यू ऑल विल लर्न फ्रॉम इट. पता नहीं मैं कौन से टॉपिक पे थी, मैं कहाँ चली गई, बट ठीक है. आर यू गाइज इनटू स्पिरिचुअलिटी? विच गाइज? मी? ओ ना, नॉर्थ स्टार, हाउ स्वीट. बट क्वेश्चन तो पूछ नॉर्थ स्टार. आई फील सो बैड. डोंट पे फॉर इट प्लीज प्लीज. नॉर्थ स्टार ने कोई क्वेश्चन पूछा है कि नहीं यार? आई फील सो बैड यार. प्लीज डोंट पे. फिर श्वेता भाई आप, अरे अब भी तो श्वेता कब बोला यार? क्यों नहीं? Non-stop, please don't pay if you're not asked a question, please. I don't like it. I was just kidding. I will help you out even without the money. मुझे बहुत बुरा लगता है. So I'm not really into Insta and stuff, but yeah, in Bandhan, if you want to work on yourself, yes, you really will get Insta or Facebook. I cannot Discord. I can, but Discord पे voice note नहीं जाती. That is the problem. Rocking Facts. Thanks, ma'am, for your hard work. Thank you, Rocking Facts. Yeah, thank you, Sumit. Yes, it's really long. एंड वरुण मैम आप क्लिप्स डालो लाइव सेशन. हाँ, मैं अपनी टीम को बोल रही थी यार, यार प्लीज कोई वीडियो एडिटिंग में हो, फ्री में मदद कर सकते हो, आओ. लास्ट टाइम किसी ने बोला मदद करेंगे पर उन्होंने किया नहीं, तो ज्वाइन आवर टीम इफ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम. सॉरी आई कांट पे यू, बट या आई नीड पीपल टू ट्रिम एंड पोस्ट द इम्पोर्टेंट पार्ट्स, बट everybody is so busy and you know I don't earn any money. कहाँ से टीम हायर करूँ? So अब क्या करेगा नंबर लेके? किसको नंबर दे रहे हो बाबा? नहीं नहीं, यही कर. सब जैसे कर रहे हैं, क्या ही प्राइवेसी ले रहे हैं. ओके, आयु स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करते. मैम क्या हाल है? मैं आई एम गुड मोहन. मैम वुड लव समडे अ वेबिनार अबाउट स्पिरिचुअलिटी. मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्यादा पता नहीं मैम. मेरा हिंदी में क्वेश्चन था थोड़ा ऊपर. कोई भगवान. सुयश, मैंने तो आंसर किया था ना तुम्हारा क्वेश्चन. एंड नॉट सर, थैंक यू फॉर द थिंग बट यू हैव नॉट इवन आस्क्ड मी अ क्वेश्चन. और ये तेयुंग कॉर्नर कितने मैसेजेस ट्रैक किया आपने? और कौन इतने तुम लोग क्या कर रहे हो यार? मुझे कंफ्यूज कर रहे हो. हाँ, तो मैंने सुयश तुम्हारा आंसर कर दिया था भाई. कृपा अब क्वेश्चन पूछना बंद करें. यस, थैंक यू. मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया था रिलेशनशिप के बारे में. ट्रस्ट इज नॉट इजीली अचीव्ड एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट एंड बी रेडी फॉर फिर सेल हो यार. इट्स ओके. नहीं तो अपने लाइफ पार्टनर को कैसे मिलोगे? टाइम लगता है. ठीक है. अच्छा, अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं. 11:15 बज रहे हैं. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. मुझे लगा इम्प्रॉम्प्टू करूंगी, कोई आएगा ही नहीं, बट आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि हमने आई थिंक ऑलमोस्ट 4 घंटे खींचा है इसको. ओके मैम, पीछे एक बोर्ड लगा लो और लिख दो डोंट आस्क श्वेता. हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे. थैंक यू हर्ष. थैंक यू. किक बॉक्सिंग बंद कर दी है मैंने फिलहाल, क्योंकि मैंने पूरा 1 महीना जिम नहीं गया था. तो किक बॉक्सिंग तो दूर. आज मैंने फर्स्ट डे जिम किया, सो आई एम लिटिल टायर्ड बट आई एम ओके. एंड आई टुक, मेरा नेक दुख रहा था तो मैंने दवाई ली थी आज ये करने के पहले. To love someone is not easy, to trust someone, yeah, exactly, but it comes with his I love you too ma'am, you are very sweet. Thank you Suyash. Thank you Varun. I don't know who is this who not star. Thank you. I'm feeling so guilty. I've not even asked a question and you paid for it, so it's okay. Thank you so much. If I can help you, DM me. Okay, take care. Love you. And मिलते हैं संडे को. ठीक है, अगर आप किक बॉक्सिंग करती तो क्या कह सकती. कोई ज्यादा बोल रहा था. हाँ, मैं तो अभी भी हाथ पैर तोड़ सकती हूँ, पर आई एम नॉट अ वायलेंट पर्सन बाय पर से बाय नेचर. हाँ, अगर से बहुत ज्यादा मेरे से स्ट्रॉन्ग है तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बट आई एम जनरली नॉट वेरी, आई डोंट हर्ट एनीवन फिजिकली. हिमांशु, गुड नाइट. थैंक यू सुजल. थैंक यू वरुण. बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और संडे को जिम के क्वेश्चंस रेडी रखना, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस. आई नो कि किसी ने मुझे क्वेश्चन ऑलरेडी, मैं माता कृपा. ओके, सो किसी ने क्वेश्चन ये पूछा था कि उनको वेट गेन करना है और वो बहुत थिन है, तो वो तो क्वेश्चन मैं पूछ लूंगी. बट पर्सनल कोई क्वेश्चन है हेल्थ रिलेटेड, गेट रेडी. संडे को मिलते हैं मितेन के साथ एंड आई विल पोस्ट द क्रिएटिव सूट. DM you on Insta with details. I can't mention. Yeah, sure. Don't need to mention details. Yes, I will reply to you, but give me time because already 10-15 DMs पड़े हुए हैं.
and I will take some time because I taken 1 week break. अभी तक मैं उस सारे आंसर कर रही हूँ. I will get to you all soon. ठीक है? मैं हर इंसान को रिप्लाई करती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट करूंगी. माय प्लेजर गौरव. ओके बाबा, गुड नाइट बच्चा लोग, अपना ध्यान रखना, और कोई इशू है तो हम तो है ही, साथ में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? अरे देवा परमेश्वरा, शानवी सोलंकी, मेरे जाने का टाइम आ गया. मेरा बच्चा नेक्स्ट वाले सेशन में आंसर करने का, या तो ये डीएम करो एंड आई विल रिप्लाई टू यू. ठीक है? आई एम सॉरी, आई गॉट टू गो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बीन हियर फॉर ऑलमोस्ट 4 hours. And contact me, I'll give you some resources. I have something really nice. It is work for someone else also. Okay, Shanvi, DM me on Insta and I've posted. Gaurav, just pin that one ना, या तो बाद में डाल देना, पिन कर देना चैट में मेरा इंस्टा का. ठीक है? गुड नाइट, बाय गाइस, सी यू ऑल, एंडिंग द स्ट्रीम, बाय. कैन कांटेक्ट मी, आई गिव यू. देखो मेरा फिर से एंड कैसे करना है. ओके सॉरी, मैं इतने बार स्ट्रीम करने के बाद अभी भी पूछती हूँ उसको एंड कैसे करना. अच्छा, अब मैं पक्का एंड करूँ. ठीक है? ओके.